Good morning. Namaste everyone. Hare Krishna. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Good morning. Chaliye. Good morning. Okay, now everyone make your back straight. Lift your chest up. Roll your shoulder blades back and relax. Elbows towards your body. Palms up towards the ceiling. Align your head, neck, and spine in a straight line. Once you are comfortable, gently close your eyes. Slowly bring your awareness towards your breath. Check your alignment. Don't lean forward or don't lean back. Don't overarch your back or don't round your upper back. The spine neutral. Now no more physical changes. Bring your awareness fully towards your breath. Now lift your left hand up. Rest your left hand on your belly. Right hand on your chest. Start your deep yogic breathing. With each inhale, full belly out, but don't arch your back. So spine neutral, expand your ribcage, expand your belly. And with each exhale, relax your ribcage, draw your belly in towards the spine. Slow inhale, slow, deep, long, controlled exhale. 5 more breaths. Feel the expansion around your navel. Feel the expansion in front of your chest, sides of your chest, and the back of your chest. Last 3 rounds. Very slow inhale, slow exhale. बिल्कुल धीमा गहरा लंबा श्वास लीजिए. With each inhale, feel the expansion. With each exhale, relax your ribcage, draw your belly in towards the spine. Last 2 rounds. Last round. After your full exhalation, eyes still closed, left hand on your lap, right hand back on your lap. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long, controlled exhale. Left hand in Ajnana Mudra. So your index finger and thumb will make a circle, rest 3 fingers straight. Right hand in a Vishnu Mudra. First 2 fingers close. Open your thumb, ring and your little finger. Close your right nostril very gently with your thumb. First, fully exhale from the left nostril. Now inhale from the left, exhale from the left. So only left-sided nostril breathing.
बिल्कुल धीमा गहरा लंबा श्वास लीजिए, उतने ही धीमे गहरे लंबे श्वास को जाने दीजिए. फ्रॉम द सेम लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए, धीमे श्वास को जाने दीजिए. नो साउंड ड्यूरिंग inhale and exhale. Few more rounds, 5 more rounds. Very slow inhale, slow, deep, long, controlled exhale. Effortless breathing. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long exhale. After your full exhalation, close your left nostril with your ring finger. Remove the thumb. Inhale from the right nostril. Exhale from the right. सीधे से श्वास लेंगे और सीधे से श्वास को जाने देंगे. Try to inhale very slowly from the right and long, deep, controlled exhale from the right. 5 more breaths. Very slow. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए. आपको भी आपके श्वास लेने की आवाज नहीं आनी चाहिए. इतना धीमा, गहरा और लंबा श्वास लीजिए. Very slow inhale, slow, deep, long, controlled exhale. With each inhale, count in your mind. Try to inhale for 4, 5, 6, 8, as much as you can. Very slow. Last 2 rounds. Inhale from the right. Exhale from the right. Last round. Inhale from the right. Exhale from the right. Now, slowly switch to alternate nostril breathing. तो अभी हमने क्या किया था, आंखें बंद रखेंगे. लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया. Now slowly switch to alternate nostril breathing. तो अभी आप लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए. बिल्कुल धीमा. Inhale from left nostril, exhale from right. If you feel little discomfort with your right hand, you just support your right elbow with your left hand, but don't round your back. Very controlled inhale, controlled exhale. With each inhale, say I'm not a body. And with each exhale, say I'm not even a mind. Again, with each inhale, say I'm not a body. With exhale, say I'm not even a mind. Inhale, I'm not a body. Excuse me. Exhale, I'm not even a mind. With inhale, say I'm not a body. With exhale, say I'm not even a mind. Very slow inhale, slow exhale.
Now just add on breath retention. So inhale from the left, close both the nostrils. Hold as much as you can. Don't force. And once you feel a little exhausted, just exhale from the second nostril. Again, inhale from the second. Close both the nostrils. Hold your breath and exhale from the first. So inhale, hold your breath, exhale. श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, श्वास को जाने दीजिए. Try to make your inhale, hold, exhale equal. If you are inhaling in 4, hold for 4. Try to hold for 4 and then exhale for 4. Or if you are inhaling in 5 or 6, hold 6, exhale 6. So 1:1:1. Slow inhale, slow, deep, long, controlled exhale. And if you are comfortable, hold your breath after your inhalation. And then exhale. 5 more rounds with hold, with breath retention. If your mind wanders here and there, bring it back to your breath. And with each inhale, say, I'm not a body. Hold your breath, say, I'm a pure soul. And with exhale, I'm not even a mind. Again, with inhale, say, I'm not a body. Hold your breath. Remember, you are a pure soul. And with exhale, say, I'm not even a mind. Last 3 rounds. Slow, deep, long inhale. Slow, deep, long exhale. Slow, deep, long inhale. Hold your breath. And then exhale. Last round. Once you fully exhale from your left nostril, then relax. Release your Gyan Mudra, release your Vishnu Mudra, and hands on your lap. Now, fully exhale from the left and then relax. Eyes still closed. आंखें बंद रखेंगे. Rest your right hand on your belly. And everyone bring your awareness towards your navel. So rest your right hand on the belly. Full awareness towards your navel. With inhale, just chant the sound A or A. Only A sound. 3 rounds. Inhale, श्वास लीजिए. Not full Om, only the A sound or the sound. फिर से श्वास भरिए and feel the reverberation around your navel. One more round. Again, inhale, धीमा गहरा लंबा श्वास लीजिए and start. Utter the sound A or A. Now lift your hand from your belly. So rest your right hand this time on your chest at your heart center.
Bring your awareness totally towards your heart center, totally towards your chest. This time, utter the sound U or the O. All together, inhale, श्वास लीजिए. Again, inhale, second round. Now one more round. Full awareness towards your heart center. श्वास लीजिए, inhale and do your chest. Now lift your hand from your chest and rest your 4 fingers in front of your throat and gently place your fingers. And this time, bring your awareness totally towards your throat or at the back of your throat. And this time, feel the reverberation at the back of your throat. Now we chant the humming sound 3 times. श्वास लीजिए. One more round. Now last round. Again, humming sound and feel the reverberation at the back of your throat. Relax right hand on your lap. Eyes still closed. आंखें नहीं खोलना. Now both hand in Agyana Mudra. Chest up, spine neutral. Now we chant 3 rounds of Om. So join all the 3 sounds together. A, U, M or A, O, and make a Om chant. 3 rounds. So let's get ready. On that note, chest up, shoulder relaxed, both hand Jnana Mudra. And when you utter the sound A, feel the reverberation at your navel. Once you utter the sound O, feel the reverberation at your chest. And lastly, humming sound, feel the reverberation at your throat. धीमा गहरा लंबा श्वास लीजिए. One more. Inhale. Utter all the 3 sounds together. Last round. Slow inhale. Now relax.
Just feel the reverberation at your navel, at your heart center, and at the back of your throat. Now you can rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your arms. Gently, first make a leaf with your palm, and you can chant with me or after me. Karage Vasate Lakshmi. Kar Madhya Saraswati. Kar Mule Tu Govinda. Prabhate Kar Darshanam. Gently open your eyes with a smile. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Nagan ji. Thank you, Ashwini ji. Thank you, Supriya ji. Thank you, Mahim ji. Thank you, Uday ji. Thank you, Prasad. Thank you, madam. so Good much. morning. Thank you, Hare Krishna. Thank you. Thank you, Dr. Neha. Thank Hare you. Krishna, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. Good morning, gentlemen. Good morning, Mansingh sir, Nagendra sir, Mahendra sir, Mashwar sir. Good Uday morning. sir. Good Good morning, very morning. good Good morning. morning. Good morning. Namaskar, sirs. Arun sir, good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Virender sir, Bipin sir, Sanjay sir. Everyone is taking the time to come on camera. Jai Singh sir, good morning. Good morning, Good morning. Soumya. Good morning. Good morning. Good morning. Rajesh sir, good morning. Very nice background. Aaj. Thank you. Yes, good one. Good one. Good one. नॉर्थ ईस्ट का है ये जिया लाइट चलेगी तेरे यहाँ? ये नो लाइट कल रात से ही नहीं है। हाँ वो मैं देख रहा हूँ कैंडल लाइट हो रहा तेरा। अरे अभी बहुत चला गया, पुराना तूफान चला गया। इट इज रियली हॉरिफाइंग यार, डर लग रहा है, क्या बताऊं। नहीं वो निकल गया, तूफान निकल गया कि अभी चल रहा है? नहीं बहुत बुरी तरह से भाई। चला हुआ, पीक पे है भाई अभी। और बीओपी साइड में? बीओपी साइड में अभी तक सेफ है यार, एवरीथिंग इज सेफ, लेकिन तांडव तो चल ही रहा है ना। But net is okay. It's very good. Yes, बोल रहे Singh हैं sir. सर Stay safe. Sir, if you have issues with net and connectivity, no worries. Please हम लोग को inform किए. We understand. I'm sure it's very difficult, and I'm still salute to you that you're still joining amidst difficult circumstances. यार भाई, हाँ इट्स रियली यार भाई गुड मॉर्निंग। इट्स रियली हॉरिफाइंग। और बाहर में तो इतना डर लग रहा है मुझे देख करके, आई एम नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ माय हाउस, इतनी बुरी हालत है। तो जी यार भाई, जी सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द कंसर्न। मेरे कॉम्प्लेक्स में ही 5 गिर गए हैं पेड़ अभी तक, बड़े बड़े। हाँ मैं देख रहा हूँ इसमें एक हाँ, पेड़ तो इसमें आपने उसमें देख फोटो रहा था शेयर किया है। एक तो बिल्डिंग के ऊपर भी गिरा है, ये तो मैंने बाहर रखा हुआ दिखाया है, एक बिल्डिंग पे गिर गया है, अरे बट बाप रे। एवरीथिंग इज सेफ। God, sir, stay safe, sir. थैंक यू Take And care यार। yes, sir, take care. And please, if you like I mentioned, reiterate, अगर problem हो तो please drop out. No worries, sir, on that. We will help you out. No worries on that. And good morning, everyone. With your permission. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आज हमारा first session, our introductory session is a guest session on leadership in times of crisis, the role of psychological preparedness. To facilitate the session, I'm very glad to introduce our faculty for the same, Dr. Swati Mukherjee. Good morning, ma'am. Dr. Swati is a scientist E at Defense Institute of Psychological Research, DIPR, which is part of DRDO in the Ministry of Defense, Delhi. She specializes in the area of positive mental health practices, resilience building, and proactive psychological preparedness. And ma'am has more than 15 years, in fact, of work experience in, working with the Indian Armed Forces in the area of mental health and soldier selection. So good morning, Dr. Swati. Good morning. Very good morning to all of you, to all the officers. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. So, Morning madam, good morning. good morning, sir. Should we begin right away, or you would want a 2 minutes break?
Let's break. 2 minutes only. 2 minutes only then, sir. Just 2 minutes. Get up and stretch and then come back. हो रहा है वो डोमेस्टिक अपने जो मतलब रीजन्स हैं उसके कारण हो रहा है। वीआरएस इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर में बहुत लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हैं, भारत सरकार का एक बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ। सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन दूसरे भी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे स्टडीज में आप बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यहाँ इसलिए है कि एक सोल्जर जो है आज भर्ती हुआ 20 साल 22 साल तक घर पे यही बोलता रहता है मैं कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल हूँ। आज जितने कमांडेंट यहाँ पे बैठे हैं सबके आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, सबके बाल ग्रे हो रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नहीं है? और जो हमारे पास जो स्टडीज आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स ही गलत है, हम उसको फज कर रहे हैं। हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है मैम। हाँ सर, एब्सोल्युटली हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। और अगर हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नहीं है, या अगर कोई सुइसाइड का इंसिडेंस हुआ है या फ्रेट्रिसाइड का इंसिडेंस हुआ है, वो उस इंडिविजुअल का इशू था, तो हम एब्सोल्युटली गलत हैं। कोई भी इंसिडेंस जब होता है उसके पीछे कोई एक सिंगुलर रीजन नहीं होता, एक बैकग्राउंड बिल्टअप होता है जिसमें इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। कई सारे लोग उस डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, पर कोई एक ही होता है जो ड्रास्टिक स्टेप लेता है, क्योंकि वो वहां ब्रेक डाउन कर जाता है। I think the study of the Dr. Swati Mukherjee is related and very much relevant to in the context of the army. While BSF is the working and their mental satisfaction and psychological conditions and preparedness are quite different nowadays. As my earlier my friend Mr. Sujit has said, it is still persisting and one of the biggest psychological problem and harping to the troops nowadays, including all ranks. It is not the only officers, all ranks. This problem is still existing, and that problem required the attention of all sections of the society, even scientists and intellectuals and political executives too, and the bureaucrats also. So I think that one of the study, I will request you to, why don't launch one study and project on the BSF and their psychological problems and administrative problems like that. मैम आपको एक क्योंकि आप स्टडी से रिलेटेड है इसलिए एक बड़ा हम्बल सा सजेशन है आपके लिए। Am I audible मैम? हाँ सर, हाँ सर, yes sir, बोलिए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर अभी जितने भी स्टडीज हुए हैं, सारे स्टडीज को अगर आप देखें तो सारे स्टडीज में कहीं भी आपको एक जगह भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसीज। नोवेयर इट इज कमिंग आउट। फ्रेंड्स बाकी लोग म्यूट कर ले अपने आप को। Everywhere a picture is being painted that this individual, he committed suicide. This fratricide incident happened because the individual, he was himself tormented. He was having some personal front problems. Exactly, sir. That is what I was submitting, sir. That this is how we simplify difficult situations. Any negative incidents. Simplification. Yes, it is distorting of facts, isn't it? Sir, distorting by simplification एक complex situation है जिसके लिए there are many people to be blamed, including the organization, but जो सबसे कमजोर है, to be blamed, just take the responsibility on one individual. जो सबसे कमजोर होता है ना सर, उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वी प्रिफर नॉट टू कमेंट अपॉन दैट। In all the studies that we have done, BSF
has not written to us. We have not conducted this study for the BSF, but for Indian Army, we have conducted extensive studies on these issues spanning over a period of almost 10 years. And we have highlighted organizational issues, policy related issues, family related issues, what the organization can do to change its policies to be more supportive, and also how individual psychological health can be improved. So these are different levels जहां पर हर जगह इंटरवेंशन की जरूरत है सर. एक इंडिविजुअल को काउंसल करने से, एक इंडिविजुअल को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते. जब सर्कमस्टांसेस happy to know that somewhere something is happening, but Yes, at least sir. in BSF so far no such Sir. studies have been carried out. सुजीत सर प्लीज सर, मैम को थोड़ा कवर करने दो, Sure. है ना. हम मैम के सुनने के लिए बैठे हैं, अपनी बात तो हम करते रहते हैं. प्लीज मैम, प्लीज थोड़ा सा. जी, थोड़ा सा हम टॉपिक कवर करते हैं, then we will discuss again, sir. Right? So can we have the next slide, please? So हम बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस की, और जैसा कि अभी तक whatever we have been able to bring out of this discussion, I hope you'll agree that being prepared mentally is as important as being prepared physically or militarily. And three basic components of preparing yourself for any crisis, for any difficult situation, is awareness, anticipation, and readiness. So three components of being prepared for anything. कल आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, you need to be aware that somebody is coming, who that person is, whether आपके बॉस आपके कमांडेंट विजिट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड विजिट कर रहा है, या फैमिली मेंबर विजिट कर रहा है. You have to anticipate what all is going to happen when this visitor comes, and you have to be ready. अगर आपका फ्रेंड आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट होगी, आपका बॉस आ रहा है, आपका कमांडेंट आ रहा है, आपके आईजी साहब आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन द अवेयरनेस एंड एंटिसिपेशन. अगर बॉस आपके साथ फ्रेंडली है, आप डिफरेंट चीजें एंटिसिपेट करेंगे. अगर बॉस के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आप डिफरेंट चीजें एंटिसिपेट करेंगे. एंड बेस्ड ऑन दिस एंटिसिपेशन यू विल बी रेडी टू फेस द सिचुएशन. सो वी डू इट एवरी डे, वी डू इट ऑल द टाइम. Similar thing is required for preparing ourselves for facing difficult situations, crisis situations in the organizational setup also. We prepare ourselves materially, we prepare ourselves militarily, लेकिन हम अपने आप को मानसिक रूप से उतना तैयार नहीं करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते. It is not in our conscious awareness. Next slide, please. Next, can I have the next slide, please? हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं इसके ऊपर? So most of the time we feel that military preparedness तो है. We are tough soldiers. हमारी ट्रेनिंग तगड़ी है, हमारे इक्विपमेंट सही है, हमारा ट्रूप्स जो है वो डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, हम टीम वर्क करते हैं, and that is enough. So why talk about psychology? Why is a psychologist who doesn't have any military experience talking to us about how do we deal with our troops? तो ज्यादातर समय culturally we have this resistance against anything psychological. तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें लगता है हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, हम पागलपन की बात कर रहे हैं. तो एक इनहेरेंट स्टिग्मा है साइकोलॉजी के साथ एसोसिएटेड, जो हमें ब्लॉक करता है किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल इनपुट से. क्या ऐसा है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? जस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड सी, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर देते हैं. हम सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तो उसको पड़ती है जो मेंटली सिक है, मेंटली कमजोर है, जो टफ है, करेजियस है, ऑफिसर्स हैं, उनको क्या जरूरत है? वी आर केपेबल पीपल. So what happens? There is lots of information in the environment जो कि आपको psychologically help कर सकती है. All of us feel vulnerable at one point or the other. If we are open to seeking help, if we are open to taking this psychological input, it
aids into military preparedness also. Next slide, please. So this is what I was talking. अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम साइकोलॉजी में पहले यहाँ इंटरवेंशन की बात करते थे, ब्रेकडाउन की बात करते थे कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत सिर्फ उसको है जो ब्रेकडाउन कर गया, फंक्शन नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन में चला गया, उठ नहीं पा रहा है, या उसके एग्रेशन के इश्यूज इतने हैं that every day he's fighting with the colleagues. I'm going on previous slide. Yeah. You mentioned isn't military training enough? So Yeah. my question is that are you suggesting some inputs during basic training or what? Sir, it would be wonderful if there are certain psychological inputs during basic training. That would be a wonderful thing to start right at the beginning. Because but I feel either there should be psychological tests, like in army they are conducting psychological tests before recruitment. If that is not there, then the best place is during basic training only. Absolutely, sir. Where the bent of mind of a person changes from civilian to soldier. Absolutely. Absolutely, sir. And there they have time also and scope also of Yes. incorporating this. Yes, sir. Yes, sir. So we suggest that if this can be incorporated during basic training and then reinforced from time to time, certain refresher courses or certain self-help tools can be developed जो उसके लिए एक reinforcer का काम करते हैं. Once this basic mindset is instilled, it can be reinforced throughout the service whenever the organization deems fit. So psychology. मैम आपको नहीं लगता कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है जो फिजिकल एस्पेक्ट में कराई जा रही है, that cater for the mental robustness of the persons also? Yes, it does. Say, I can quote an example to enhance the esprit de corps in a group of or a batch of combined punishment is a part of that. Yes. So those psychological aspects and psychological robustness in a mind is part of the military training. Absolutely, sir. Absolutely, sir. That those are integrated on those basic parts. That's why when we joined the academy as a fresh graduate from the market, and when we came out of the academy, we are different persons. Absolutely. When we go back to our universities with our old friends, there is a sea change in our personality. Yes, sir. Mentally, yes, sir. Also, it is not physical. Yes, sir. Yes, sir. Agreed. Totally agreed. I am only talking about augmenting that training, providing enhancement to that training. Military training is already focusing on mental robustness. What I am saying that psychology as a discipline has some knowledge which can be of help to military training. I am not saying that military training doesn't train the soldier to be mentally robust. It already does. But it can be made better with the help of little input from psychology. That is only my submission. So what I was talking about the previous thought process in the field. जो ये कहता था कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत उसको ही है जो कमजोर है, जो ब्रेक डाउन कर गया, डिप्रेशन में चला गया, जिसके रोज झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में नहीं बन रही है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, या फिर जो हमेशा डिस्ट्रेस में रहता है, who's not able to function, who's not able to perform up to the mark, उसको चाहिए. Now we are moving कि rather than providing intervention, बीमारी हो जाने के बाद इलाज करने की बजाय साइकोलॉजी के टूल किट में कुछ ऐसे टूल किट्स हैं जो ये दो ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि इनका ब्रेकडाउन हो ही ना. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. दैट इज द मॉडल now psychology works upon, and that is the positive or efficiency based approach. So what we are saying, all of us are prone to being stressed at some point or the other. Somebody is more stress prone, somebody is less stress prone, but all of us undergo different levels of stress at different points of time in our life. And these are the different reactions to stress. And if we look at the organizational support system,
Is there any support system for us? I am feeling stressed because of n number of reasons now. Is there any support system in my organization where I can turn to? There is none. There's nobody there. So I am talking about providing a support system here. And here, where the soldier is already working fine, doesn't have any stress issues or has very minimal stress issues, which he is able to cope up. Stress feel होता है, लेकिन वो सुबह तक ठीक हो जाता है. लेकिन कितने दिनों तक? अगर repeatedly वो stress के cycle में जाता रहेगा, gradually he will deteriorate to this yellow region. Again, a few of these people who are vulnerable to stress will further go down to distress and dysfunction, और उसमें से minuscule a fraction will break down. So if we build some support system here, the population moving to these two levels gets reduced. The population moving from the green zone to red zone becomes minimal. इसका फायदा ये है कि यहाँ जो ब्रेकडाउन में है, ब्रेकडाउन में हमें अगर सपोर्ट देना है तो हमें एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए, हमें ट्रेन्ड लोग चाहिए, साइकियाट्रिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए. लेकिन अगर हमें येलो एंड ग्रीन रीजन में सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है तो दिस कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द ऑफिसर्स देमसेल्व्स, the leaders themselves. If they become aware कि ये सोल्जर ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, आपके पास अपना वो प्रॉब्लम लेकर आ रहा है. हर सोल्जर आपके पास प्रॉब्लम लेकर नहीं आता. जो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनमें से मेजॉरिटी के प्रॉब्लम्स आप जब समझाइश देते हैं या सोल्यूशन देते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. उसमें से एक फ्रैक्शन होता है जो सारी समझाइश के बावजूद उस प्रॉब्लम में फंसा रहता है, अपनी परेशानी बताता रहता है या परेशान रहता है, रिपीटेडली सिक रिपोर्ट करता है, इंजरीज होती हैं, हेडेक्स रिपोर्ट करता है, बार बार छुट्टी जाना चाहता है. व्हाट आर दीज? एंड देयर आर मेनी मोर सिम्टम्स. सो दीज आर एक्चुअली रिएक्शंस टू स्ट्रेस. इस बीच में एक सेक्शन ये भी होता है कि जो कुछ भी ब्रॉट आउट नहीं करता है, अपने अंदर में ही जो लगा रहता है, और देखा जाता है कि जो फैटल जो भी होता है ये इन्हीं सेक्शन की वजह से होता है कि इन्हीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रीम स्टेप ले लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. सो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? जी जी, उनको ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे सर जो बिहेवियरल मार्कर्स हैं. आपने अभी जो गिनवाए, एक सेक्शन वैसा भी होता है जो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है. सो अ पर्सन हु इज रिमेनिंग अलूफ, हु इज नॉट मिंगलिंग विद द बडीज, जो एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहा है, जो फ्री टाइम में भी, एंटरटेनमेंट वाले टाइम में भी किनारे बैठा हुआ है, ही इज नॉट एंजॉयिंग लाइफ, या जिसके बार बार झगड़े हो रहे हैं, इरिटेबल हो रहा है, एस्केलेट कर रहा है चीजों को, किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, या अपना डिफिकल्टीज उसने शेयर करना बंद कर दिया, घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में बात नहीं कर रहा है, या बार बार ये बात कर रहा है कि मेरे बाद मेरी फैमिली के लिए मैंने क्या करके रखा है, फैमिली कैसे, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, टॉकिंग अबाउट डेथ एंड डाइंग, प्लानिंग फॉर what will happen after my death. All these are indicators. So hopelessness and helplessness, these are two indicators which indicate of a probable self-harm behavior. मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी. हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पे लगभग दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं. मान लो सुबह 6 बजे गए, 12 बजे वापस आए, और उन्होंने 12 से लेके शाम के 6 बजे तक अपना मेंटेनेंस किया, 6 बजे फिर ड्यूटी पे चले गए. बिल्कुल. 6 बजे गए, रात के 12 बजे फिर वापस आए. सोते समय आते तो है नहीं कि 12:30 1 बजे पहुंचेंगे, थोड़ा पाँव धोएंगे, 3 बजे सोएंगे, 6 बजे फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे. ये जो चक्रवर्ती व्याज की तरह हमारे जवानों की ड्यूटी है, इसमें आपकी साइकोलॉजी उनको क्या समझाना चाहेगी, क्या मोटिवेशन लेना चाहेगी कि उनका मोरल हाई रहे? उनका मोरल हाई रखने के लिए सर एक एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि ड्यूटी वो जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ चॉइस कर रहे हैं. और इसको कौन ला सकता है? इसको लीडर ला सकता है बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट इन द यूनिट. अगर
जो लीडर है वो प्रेशर्ड फील करता है, इफ ही फील्स कि मेरे पास मैन पावर शॉर्टेज है, देयर आर टू मेनी ड्यूटीज, आई एम फीलिंग प्रेशर्ड, आई हैव टू डू दिस आल्सो, आई हैव टू रिपोर्ट देयर आल्सो, मेरे हेड ऑफिस का मुझे ध्यान रखना है, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए. सो इफ द लीडर हिमसेल्फ इज स्ट्रेस्ड, ही विल पास ऑन दिस स्ट्रेस टू द ट्रूप्स, ना चाहते हुए भी. The way he talks to the troops, the way he deals with the situations in the unit, and when this stress is passed on to the troops, this is an added perspective for them कि हमारा लीडर भी परेशान है तो हम तो परेशान होंगे ही. मैडम जी ये जो सारी चीजें हम नहीं करनी है, साइकोलॉजी, हम तो साइकोलॉजी वालों से पूछ रहे हैं, वो क्या मदद कर सकते हैं? सर साइकोलॉजी तो यही है ना, पर्सपेक्टिव चेंज करना. पर्सपेक्टिव चेंज करके एक तो हम सिचुएशन में चेंज लाएं. एक्चुअली एकदम से मैन पावर बढ़ जाए, रोटेशनल ड्यूटीज की जगह एक आदमी 24 घंटे में एक ही बार ड्यूटी पे चढ़े. अगर आपके पास रोटेशनल ड्यूटी के लिए 12 लोग हैं और आपके पास 24 लोग आ जाएं अचानक, तो अपने आप ही स्ट्रेस ईज आउट हो जाएगा. नहीं 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 मैम ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये साइकोलॉजी वाले जो लेक्चरर हैं, जो डॉक्टर है, ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हम उनको मोटिवेशन करें. पर्सपेक्टिव चेंज, मैं तो पर्सपेक्टिव चेंज का हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इसके बारे में. हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं. हम सिर्फ आपको थोड़ा सा एडिशनल इनपुट दे रहे हैं. पर्सपेक्टिव चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि तस्वीर वही दिखाई देती है जो हम देखना चाहते हैं. हम जो देखना चाहते हैं तस्वीर वही दिखाई देती है. कैन आई रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेटर टू प्लीज गो अहेड विद द स्लाइड्स एंड प्ले दैट वीडियो क्लिपिंग. देयर इज अ वीडियो क्लिप ऑन द स्लाइड्स. कैन यू गो टू दैट? या सो सर एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. एक छोटा सा वीडियो है, आई सपोज 2 मिनट का. आप I'll request all of you to please look at the screen, and then we will talk that what is happening here in this video. It's not a very long video, about 1.5 minutes, and Ghanshyam sir then we'll talk on this issue. So Tanvi, can we play it? I'll request all of you to please pay attention. Is the voice No, there's volume no there? voice. There's no voice. Can we play it again? Can we play it again? Please pay attention. एक बार ध्यान दे दीजिए, दोबारा देख लीजिए, because I'll ask you to describe. बताएं हम बात करेंगे कि इसमें हुआ क्या क्या हो रहा है इस तस्वीर में, इस वीडियो में. तन्वी प्लीज प्ले इट अगेन.
Yeah. So can we come back to our conversation? Did you see the video? Yes. So please share. What did you see? क्या हो रहा था? ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया बाद में, इसमें सब सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसने कर दिया सर? अदरवाइज फर्टिसाइड क्रिएट करता। किसने किया सर? किसने कौन था वो? ये कोई सोल्जर ही होगा। राइट, ठीक है। मैडम इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हवलदार है, हवलदार जी, चलिए। हवलदार है जो क्या कर रहा है? बाकी एक महिला कांस्टेबल है। जी, एक महिला कांस्टेबल है और एक हवलदार है। क्या और वो क्या रहा है? उसमें ड्यूटी को लेकर के तनातनी हो रही है। जी, उसमें ड्यूटी में वो गेट पे खड़ा हुआ था, तो उसने बोला नहीं वहां पे जाके खड़ा होना है तुम्हें, बिल्कुल उसमें जाकर के गेट की ड्यूटी करना है। जी, उसने माना नहीं उसकी बात, तो उसको गुस्सा होकर के उसने जो है उसके साथ में झगड़ा हुआ। जी, झगड़े के बाद में वो अंदर घुस गया जी जाकर के। जी, तो बस वो कॉन्फ्लिक्ट चला, कॉन्फ्लिक्ट के बाद में दोनों जो है साथ में हो गए, वो दोनों भाग गए और ये सफर जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया। ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया जी। अब और उसने सारा कहाँ है स्ट्रक्चर मिला नहीं है, तो इसलिए जो है उसने जो वहां पे था उसमें तोड़ फोड़ कर दी उसने सारी की सारी। बिल्कुल उसने तोड़फोड़ कर दी जी। और सर मैडम इसमें लगता हुआ एक इंसिडेंट मैं कोट करना चाहूंगा कि हम भी डिप्लॉय थे, हमारे बगल में दूसरे सिक्योरिटी फोर्स भी डिप्लॉय था जी। तो हमें हियरिंग डिस्टेंस में थे, तो हमने फायरिंग की आवाज सुनी जी, तो चौकन्ना हो गए। नेचुरली ये कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स का ही होगा, पहला इंप्रेशन नहीं होता है, लेकिन फिर जब कंफर्मेशन किए कि बगल के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें फायरिंग हो रही है जी, तो ये फायरिंग जो है शाम को 8-9 बजे से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे होती रही और फिर दिन में 10-11 बजे हेलीकॉप्टर्स आए, फिर 12 बजे करीब वो स्टॉप हो गए। बाद में इंसिडेंट के बारे में पता चला कि एक बंदा था जो काफी अटैच था विथ ऑफिसर्स जी, तो उसको कोई कोर्स में भेजा गया 9 महीने का। तो कोर्स करके जब आता है तो एडजुटेंट के पास वो आके ही छुट्टी का रिपोर्ट करता है, तो उसको बताया जाता है कि आप अपना कंपनी में जाइए, वहां से आपको कंपनी कमांडर छुट्टी देंगे। फिर वो कंपनी में आता है, फिर छुट्टी का रिपोर्ट करता है, तो नेचुरली उसके लेवल पहले सीएचएम को होता है। सीएचएम कहता है कि तू तो अभी आया, अभी ना बर्फ देखा ना कुछ देखा, अब कैसे छुट्टी चला जाएगा, अभी तेरे को तो बर्फ दिखा के ही भेजूंगा। तो फिर वो अपना पॉइंट जो भी है नेक्स्ट फिर बताता है। फिर ऑफिसर को कभी चाय या खाना पीना देने के समय फिर पूछा कि फिर उसको फिर गुस्सा आया तो फिर उसने फर्स्ट जो है इमीडिएट जो ऑफिसर्स पे ही जो है फायर किया जी। और फिर फायर करते रहा और ये बाहर से पता लगाना मुश्किल था अफसर को चोट लगी या नहीं लगी, अफसर का क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट डे फिर उसी को फिर ये करने के लिए फिर कोई हायर अधिकारी फिर हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनको समझा बुझा करके उसको सरेंडर करवाया। तो बाद में ये चीज जब निकल के आई तो पता चला कि उसकी जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस लेवल था वो इतना बढ़ चुका था और उसको हैंडल करने वाला मतलब जिसके पास हैंडल करने का मौका था किसी ने उसको हैंडल नहीं किया, मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसका उस पर स्ट्रेस लेवल है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ अपना उसका स्ट्रेस लेवल जानने के लिए। तो ये आपके जो ये पिक्चर से वो मिलता जुलता है, वो लगभग यही ऐसे डिटो ही है जो आपने दिखाना चाह रही थी। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत वंडरफुल। जी बताएं सर। एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि हम जो समझना चाहते हैं वही समझते हैं, पर मुझे ये लगता है कि जो वो कहना चाहता है उसे वही अपनी बात बताना चाहता है, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं होता।
हम कुछ बहुत सारी चीजों को समझाना चाहते हैं, रूल पोजीशन के हिसाब से कैसे क्या होगा, लेकिन एक आदमी ने जब अपना माइंड फ्रेम बना लिया कि जो उसे कहना है या जो उसे करना है वो वही बताना चाहता है। एग्जैक्टली सर। अब मैं एनीबडी एल्स हु वुड वांट टू डिस्क्राइब कि क्या हो रहा था उस वीडियो में? आप में से कोई और भी शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, लेकिन इसका इस तरह से हो सकता है कि somebody is having mental peace with himself, आराम से कमरे में बंद में रह रहा है, and subsequently he started thinking about others जो उसके कंट्रोल में नहीं है, and then he's chasing them, trying to put into that box, वो कभी आ रहा है जा रहा है करके, but subsequently ultimately वो जो थॉट्स है वो निकल जाते हैं और वो स्टिल उसके पीछे जो जा चुके हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसी के बारे में सोच रहा है, देन ही ब्लो अप हिमसेल्फ, मतलब अपना मेंटल पीस जो है डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ऐसा कुछ मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली। सो आप सबने इस छोटा सा वीडियो था, देयर वर नो फेसेस, देयर वर नो इंडिविजुअल्स, देयर वर नो ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लाइंस, बट व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ अस gave our stories, all of us, and different stories. मिलती जुलती थी, थीम कुछ मिलता जुलता था, but somebody remembered a previous incidents. Somebody said this, though it is abstract, but this is happening. Somebody gave an elaborate story about a havaldar and 2 soldiers. तो ये हुआ क्या? This is how human mind works. Even where there is no story, we create a story. This is how human mind is hardwired through evolution to develop stories. तो ज्यादातर ये actually this is a part of an experiment which was conducted in early days. 1948 या 49 में ये एक्सपेरिमेंट किया था 2 साइकोलॉजिस्ट्स ने, और ये बड़ा सिंपल एनिमेशन था। उस समय एनिमेशन टेक्निक्स भी नहीं थी, तो उन्होंने कैमरा लगा के और नीचे से लाइट जलाकर पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ किया और कैमरे से उसको कैप्चर किया था। तो इसलिए बड़ा सिंपल एनिमेशन है जिसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस स्टिमुलस को लेकर हुए हैं, ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल ने इसके लिए एक स्टोरी बनाई है। सो द पर्पस ऑफ शोइंग दिस टू यू इज दैट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज। जहां पर कोई स्टोरी नहीं भी है, जहां पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं भी है, हम एक स्टोरी, एक कहानी बना लेते हैं, और जो हम कहानी बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, Tanvi? Yes. Yeah. So I'll also share some more interesting experiments with you. So the stories that we tell ourselves, the slide immediately after the video. Yeah. So the choices that we make, the stories that we choose to tell us, the way we interpret the situations around us. So it is up to us, it is up to me whether I take the situation as stressful and I feel pressured, or if I feel that yes, the situation is stressful, but I can deal with it. So I give a resilient response. So the choices that we make in life, they make what we are. This is exactly what I am saying, as one of the officers was just saying, ki hum, whatever we try to explain to the soldiers, they come with a fixed mindset. Exactly. That is where I'm in absolute agreement with you, that he has made a story for himself, and which story is perhaps based upon victimization, which story is based upon ki sab mere against hai, nobody cares for me, I cannot go to anybody and share my difficulty. The organization does not, organization just wants work from me. Organization does not care if I have some family issues, if I want to go home. If this is the story that he has created for himself, आप उसको कितना भी rule position बताएंगे, आप उसको कितना भी difficulties बताएंगे, it will not reach him.
unless you change that story that he has made for himself. क्योंकि जो उसने story बनाई है उसकी life की reality वही है. अगर उसने अपने आप को बेचारा मान लिया है, who is always at the receiving end, who cannot approach the CHM, he feels that CHM has his own favorites. मेरा तो CHM के साथ में, मैं तो CHM के स्टेट से नहीं हूं, मैं तो CHM के रीजन से नहीं हूं, CHM के तो अपने बंदे हैं, वो मेरी बात तो कभी नहीं सुनेगा. This might be a reality, but this might also get exaggerated if I constantly keep thinking about it. So if I'm already biased about something, I will always interpret the information with that bias. So the story that we write for ourselves, the framework that we give ourselves to interpret our life situation decides how we would react to a certain situation. And talking about preparedness, we are talking about changing this story. Because unless we change the interpretation framework, unless we change how we interpret the things, जो incoming information है, जो square आ रहा है बाहर से, हम अपने mental framework में fit करने के लिए अगर circle की जगह है तो square को छील के हम circle बना के ही interpret करेंगे, अगर हम अपने story को नहीं change करेंगे. Tanvi, next slide please. So what next please? So it is in our hands whether we want to make a resilient response or we want to fall into stress. We cannot deny stress. Stress हमेशा ही रहता है. हम सभी को पता है. It is there is a problem with audio, madam. Yes, sir. Mahendra sir, I think ma'am's audio is fine. I think there might be connectivity issues from your end. No worries, we'll get in touch. Swati ma'am, I would request you that if we can have a short 10-minute break for you and our commandants. Yeah, definitely. Sure. And we can resume from this exercise as well. Yes. Right. Yeah, right. that. So, yeah, so let's take a break. Let us have, yes, a 10-minute break. We can resume back again at, I guess, 11 o'clock. That works, ma'am? Yeah, fine by me. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, sirs. We resume back at 11. Communication. Swati ma'am, we can officially move ahead with the session again. Yeah, sure. So ready to join back, sir? Yes. Everyone. Yeah. So let's try and focus on whatever is the planned activity for the session today, and at the end then we can have all the discussions. So I'll request if we could restrict our discussions to the content. बाकी के जो discussions हैं sir, general discussions we'll keep at the end. We are most welcome to discuss on the topic. Rest we'll discuss at the end. So I have 2-3 small exercises for you. So the first exercise that I want you to think about is all of us know what stress is, when do we feel stressed and things like that. हमारे सबके अपने triggers हैं. तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके अगर आप ये डिस्कस कर सकें, ये बता सकें या अपने पास सोच के रख सकें कि जब आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, when you feel stressed, then what happens actually? So just imagine a situation that you are feeling stressed due to whatever reason. So what all is happening at that time? What happens? मैम थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है. Yes, irritability. First thing is irritability. Right. And second is ऐसा चीजों में interest कम होने लगता है. Absolutely. So you lose interest. Even जो हमारी पसंद की चीजें होती हैं, the things that we like to do, they do not seem so nice when we are stressed. Habits are affected, ma'am. Habits are affected. Yes. Pleasure मिलता है करने का, वो unpleasant type लगती है कि छोड़ो यार. Unpleasant लगती है. Even the pleasurable things become unpleasant. Yes, ma'am. What else? Physically, anything that you feel physically? You start any work and you lose the steam in routine itself. You lose the steam, you lose the energy, lack of energy, lack of focus. Absolutely. आपकी breath बढ़ जाती है.
various BP बढ़ kinds of जाती है sometimes. बीपी बढ़ जाता है, palpitations होते हैं, Loss of appetite. sir, loss of appetite. Somebody might also have excessive appetite, isn't it? If I feel stressed, I tend to eat a lot out of my anxiety. What about sleep? Sleep पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैम. It's a Sleep person. loss. Sleep loss भी होता है सर, है? Yes. किसी का sleep loss होता है, और किसी की disturbed sleep होती है, Yes, disturbed sleep. और किसी की excessive sleep भी होती है. हाँ मैम, अपनी होती है. Isn't it? So sleep disturbances are common when we are stressed. What else, sir? Anything else? What about the digestive system? Stomach? मैम एक चीज और होती है स्ट्रेस में. जी. ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है मैम. Overthinking बढ़ जाती है. So the same point we think again and again, and there are so many fearful outcomes that come to mind. कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, या इतना बुरा, the worst possible outcomes come to mind, different scenarios. Yes. Absolutely. Anything else? What about your feelings? What about your emotions besides irritability? And feelings वही है, you feel good with some things and you lost feeling that happiness in doing the same thing. So there's lack of enjoyment. Is there any sadness? Is there any sadness? Is there any anger? No, ma'am. ऐसा बस irritability होती है उसमें. That's a combination of anger, sadness. Absolutely. Absolutely. You can say. Irritability. Absolutely. So all of us are fairly aware when we are stressed. So when our body shows these symptoms, lack of energy, irritability, lack of interest, all these things, we know that there is something which is stressing us out, isn't it? So it is not so difficult to identify stress. Yes, we are, say for myself, I'm aware when I'm feeling stress. Yes. So the important point here is you are aware what stress makes you feel. Just imagine an individual who is not aware. There are some symptoms. There is, suppose this person has some headache. This person has some stiffness in the shoulders. This person has not been able to sleep for 2 nights, 3 nights. This person is not able to digest food, lost his appetite. And he doesn't understand that all these are symptoms of stress. What would happen to such a person? Would he be able to deal with the root cause? Ma'am, the thumb rule is that until unless you know what is happening to you, you will not keep yourself ready to respond to it, ma'am. Exactly, sir. Thumb rule is that if you are aware of that you are feeling stress, only then you can respond to reduce that stress. And if you don't know what is happening to you or the causes of what is happening to you, you will not be able to respond properly. That's the thumb rule. Right. So awareness is the starting point. I can see all of you are quite aware about stress and how your body reacts, but not everybody is. So a soldier, if he's coming to you, first point to note is he really aware? And how much awareness does he have about his bodily reactions? Can I have the next slide, please, Tanvi? So the second question that I want to ask you, what makes you feel stressed? What are the different scenarios that come to your mind? अगर पिछला कुछ समय याद करें तो किन-किन चीजों को लेकर स्ट्रेस हुआ? आपको पता है? You can identify it? मैम, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनली we are designed to accept behavior of a very disciplined kind of life, man. Right. स्ट्रेस होता है फैमिली की तरफ से, मैम. Absolutely. जो authority we command and we are familiar of the response from the others,
which is generally in very disciplined manner, which you don't expect from your kids, man. Right. मतलब बाप को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं मैम। सर ये तो कहानी घर घर की है। अब मैम this is very much age related now. Say I'm in the age of that when my kids are grow in the middle age, when they have the resistance of certain things, and जब वो बात नहीं मानते हैं ना, तब थोड़ा सा स्ट्रेस उठता है। जी बिल्कुल। और अब वो वाली चीज रही नहीं है जो जैसे हमारे फादर ने हमको डील किया है। जी। तो लगाए कान के नीचे और ठीक हो गया, उनका स्ट्रेस भी खत्म, हमारा स्ट्रेस भी खत्म। जी बिल्कुल। पता नहीं है मैम। बिल्कुल। So more or less all of us know what are our triggers, when do we feel stressed, isn't it so? हमें पता है इंडिविजुअली। किसी हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को फैमिली की वजह से स्ट्रेस है, हो सकता है कुछ एक लोग हों जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ऑफिसर्स ना फील करते हो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेस, हो सकता है सोल्जर फील करता हो कि मेरा सीएचएम मेरी नहीं सुनता, या मुझे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, या मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर है जो मैं नहीं चाहता हूँ, whichever way. So more or less we know what are the things which make us stressed. Can I have the next slide please, Tanvi? आप स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू यूज? मैं बता दूं मैम। हाँ बता दीजिए बिल्कुल सर। मैम मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, ज्यादा स्ट्रेस हुआ गाड़ी निकाली एंड जस्ट हैव अ लॉन्ग ड्राइव, right, so taking a long drive and everything is just calm down. Right. Anybody else sir? हम गुस्सा करके निकाल देते हैं स्ट्रेस को। गुस्सा करके निकाल देते हैं। हम म्यूजिक सुन के कर लेते हैं मैम। गुस्सा करने से स्ट्रेस निकलता नहीं सर, बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। एक बार गुस्सा हो गया ना तो बस खत्म, स्ट्रेस खत्म फिर। हाँ सर, it gets transferred to the other person. Now the other person is feeling stressed. जिसने स्ट्रेस दिया उसी पे गुस्सा हो जाते हैं। I have a cold one glass of water. Cold, having a glass of water. Yes. A glass of water with the liquor. Having a glass of water with the liquor. Absolutely. Absolutely. Advice है मैथिल के लिए। मैथिल। सर हुक्म सर। अगर स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ, इट कैन बी डेंजरस। जो लॉन्ग ड्राइव में निकल जा रहे हो तुम स्ट्रेस में, अगर रिलीज हो गया तो अच्छी बात है, अगर रिलीज नहीं हुआ देन तो इट कैन बी डेंजरस। सर एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, what happens to me when I used to drive ना सर, जैसे ही वो रोड अवेयरनेस आती है ना सर और गाने बजते हैं, वो सारा मतलब माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है सर। तिला, जब उसके साथ थार में बैठोगे तब पता चलेगा। So we have, all of us have our own ways of reducing stress, isn't it? Meditation, class जी। अगर ज्यादा इसमें होता है तो शांत रहना ज्यादा ठीक रहता है। शांत रहना ज्यादा ठीक रहता है। So you become quiet, involved in some sports. Cool and calm. Sanjay Kumar sir is saying. I think Swati ma'am got disconnected. Yeah, Somidev, I'm just connecting with her. Sure. Okay, no worries. सोमिदेव, तो आप बता दो कि आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। गेम सर मेरे को जब स्ट्रेस होता है तो मैं तो सर अभी usually I drink coffee, but that is the worst thing that you can do. That increases stress. I've realized. So that I can tell you, my father has a very good technique for stress, which we are trying to counter. Every time he's stressed, if my mother and I, eating up his head, he runs away from his house and he goes to take a cigarette break, which he loves. So आपने last time जब बताया था मेरे को कि let father be, I actually shared that with him and he was very happy. He was happy to know a senior leader from the forces said, हाँ जीने दो. So now he's living his life even more. फोर्सेज में सबसे बढ़िया स्ट्रेस जो बस्टर है, चीप एंड बेस्ट, वो है अपने सीनियर को गाली दे दो।
ट्रूथ्स जो हमको गाली देते हैं, हम अपने सीनियर को गाली देते हैं और उससे रिलीज हो जाता है स्ट्रेस कि हमने अपनी बात बोल दी, चाहे उसको नहीं बोली, उसने सुना नहीं, बट हमने किसी के साथ शेयर कर दी. Fair enough. Yes, yes. I think that is what Swati ma'am was also saying कि we more अगर बात नहीं हम निकालेंगे तो वो pent up रह ही जाएगा, and that stress builds upon, keeps building. I think the Nagendra sir, you're right that way. You know कि हम निकाल दो और don't let it be inside. Just channelize it somehow, because then it keeps building upon it. I think गिरीश sir ने बहुत प्यार से ऐसे ये समझाया ना, very different way कि मैं तो चलो गुस्सा निकाल देता हूँ एक shot में, and it's gone then. Ashwini sir, what is your exact, what do you do other than the drive? And how long has this been your stress buster? How did you realize that driving is one that reduces stress for you? So I'm passionate about driving. Oh, wow. Okay. Driving is a meditation for me. Right, sir. Right. So when I had a steering on my hands now, and my foot's on pedal. Right. I'm just out of the world. I'm just enjoying that slow movement. The things are passing by, driving on the road. So Wow. that's everything for me. Right. And that's why I cannot live without my personal vehicle. Right. It always remains with me. Right. Driving is so pleasurable for me. I had driven from Silchar to Srinagar solo. Right. Wow. You can understand. Wow. I'm really sorry. My system shut down. So a small stressor for me. I had to cope up. Okay, so we were talking about that all of us have our own strategies to cope up with the stress. है ना सर? तो हमको किन वजहों से स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, और क्या करेंगे हम. जैसे अश्वनी सर ने अभी कहा that he really enjoys long drives. For another person, going on a long drive might itself become a stressor. But if you know that you enjoy it, so it is a stress buster for you. So all of us have our own techniques to reduce stress, isn't it? Absolutely. So far we are going good. Now, जी सर. ये सब में स्ट्रेस का सबसे मेन कारण है अनसर्टेनिटी. राइट. कब जो है, कब आपको अनफोर्सीन अचानक आपको टास्किंग मिल जाए, सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है बीएसएफ में. बिल्कुल सर. कोई मतलब पता नहीं चलेगा कि अभी आप ठीक है, अभी 1 घंटे बाद क्या आदेश मिल जाए आपको. हाँ जी सर, आप कैसे करते हो स्ट्रेस रिलीज सर, अगर ये आ गया तो सर? नहीं, मैं तो जो देखो स्ट्रेस आता है, मैं तो जो है फिकर नाट की गोली ले लेता हूँ, आगे बाद जो है सो जाता हूँ. बस सर, ये सही है सर. Right. So, Tanvi, next slide, please. Can we have the next slide, please? वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैम. जी. सारे लोगों से पूछा जाए कि वो स्ट्रेस रिलीज कैसे करते हैं, तो नए तरीके भी सीखने को मिलेंगे स्ट्रेस रिलीज. बिल्कुल सर. और ये कोई वाली जरूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है मैम. आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी. राइट सर. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरा, उसी से रिलेटेड है कि हमें पता सब है कि स्ट्रेस क्यों हुआ, व्हाट इज द सोर्स, एंड how does my body react, and what do I do to reduce the stress. But does the stress really get reduced? सारा कुछ हमें पता है, फिर भी हमें स्ट्रेस होता है या खत्म हो जाता है? क्या हम मैनेज कर पाते हैं इफेक्टिवली? मैडम, मैं बताना चाह रहा था, मैं अपने स्ट्रेस को दूर करने का रीजन, इट इज सिंपली यूनिक. मैं अपने फेवरेट मूवी लगा के देखना शुरू कर देता हूँ. बिल्कुल. फिनिश करके फिर मैं जो है उसको, फिर मुझे लगता है कि मेरा ऑलमोस्ट 90% स्ट्रेस खत्म हो गया. जी. बाद मैं उसके रीजन को ढूंढता हूँ कि किस वजह से स्ट्रेस मेरे अंदर ये डेवलप हुआ है. हाँ जी, एग्जैक्टली. वॉचिंग ऑफ मूवी 2.5 hours. जी बिल्कुल. So this is what I was coming to, that despite knowing all the ways of managing stress, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, हम प्लेजरेबल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, या हम अपने माइंड को नम करते हैं यूजिंग अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस. All these methods are used by most of the human beings. लेकिन ये सब हमारे लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ होते हैं.
उस समय के लिए स्ट्रेसर से हमारा ध्यान हटा देते हैं. बट if we actually want to deal with the root cause of stress, so the question that we need to ask ourselves is, why am I stressed, rather than asking what is causing stress. क्या चीज है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये ढूंढने की बजाय हम अगर ये पूछें कि why am I feeling stress, so what happens, the focus of the question changes. Most of the time we are looking outside for finding the reason of stress, whereas the actual reason for the stress is inside of us. Isn't it so, sir? Stress कहाँ है, located कहाँ है? मैम आपने एक बात इसके पहले पूछी थी कि क्या जो आप एक्टिविटीज करते हो स्ट्रेस को रिलीव करने की, उससे क्या स्ट्रेस रिलीज होता है? जी. Your first question was that. Yes, yes. In response to that, my response is basically उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, the time being that stress is released, and it happens to me. Yes. I'm not saying from everybody. It happens to me when I go for a long drive and came back, then I am able to respond to the situations which causes me that stress very well. Absolutely. That happens to me, ma'am. Absolutely. Momentarily, I can identify the reason, and I am in a better position to respond to those stresses, or the reasons of those stresses. That happens to me, ma'am. बिल्कुल सर. आप सर थोड़ा सा और मेरी मदद कीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके मुझे बताइए, हम सभी को बताइए कि आपको क्या लगता है, what do you think, why does this happen that after coming back from a long drive you are able to better focus on the issue, think better, and find solutions in a better manner? Why does that happen? Ma'am, let me explain in very personal examples. With personal examples. See, I had some conflict stage with my son. It's a family. And when he do something and he don't respond to my expectations, what I expect from him, एक stress हुआ, उस situation में I am not able to understand कि क्या उसका point of view था, क्या मैं उससे चाहता था. This is a stage जो थोड़ा strain करती है. उसको avoid करने के लिए I just go for or do any activities. Right? Long drive is one of them. ठीक है नहीं? And when I fall back from them, वो momentary जो mental condition होती है, वो subsidize हो जाती है, stress वाली. And फिर उसके बाद मुझे लगता है यार उसने इतनी बात तो सही कही थी. You understand that? उस टाइम पे जब उसने मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ स्ट्रेस में हूँ, तब मुझे नहीं लगता कि उसने क्या बात सही कही थी. लेकिन उस रिलीव के बाद, उस ब्रेक के बाद ना, it is something like taking a break. Right. 40-minute class. To get yourself prepared for another class, for the second session of the class. Exactly. And then I was able to more focus. फिर मुझे उसके आइडिया भी दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये बात कही थी, इतनी बात तो सच था. जी बिल्कुल. बात में जो रेजिस्टेंस कर रहा था वो मेरे इस रिस्पॉन्स की वजह से कर रहा था. जी. एंड देन फिर उसके बाद जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बैठ के सुलह हो जाती है मैम. बिल्कुल सर मैं आपने इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है एक्चुअली प्रोटोटिपिकल स्ट्रेस सिचुएशन को, तो इसको मैं यूज करते हुए थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताती हूँ सिंप्लीफाई करके. सो थ्रू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हमारा ज्यादा समय ह्यूमन बीइंग्स का, होमोसेपियंस का, हमारा मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है ये तो बहुत ही रिसेंट है. हम जब सेटल डाउन हुए एंड वी स्टार्टेड कल्टीवेशन एंड वी मेड फैमिलीज एंड दिस इज वेरी रिसेंट. हाउएवर वी हैव स्पेंट लॉन्गर टाइम लिविंग इन द जंगल्स एंड केव्स एंड हंटिंग एंड गैदरिंग. तो जो हमारा हंटर गैदरर वाला लाइफस्टाइल था, उस समय के जो हमारे हार्ड वायर्ड रेस्पॉन्सेज हैं, हमारा ब्रेन इवॉल्व किया थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस. एंड जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स अ केवमैन वुड हैव फेस्ड. जब हम जंगल में रहते थे और गुफा में रहते थे और रोज शिकार करने निकलते थे, और शेर, चीता, भालू, हाथी के बीच में से we would move and we would not know whether we will come back in the evening alive or not.
बाहर निकलना, लौट के आने की कोई गारंटी नहीं थी। तो हमारा जो सिस्टम है, बॉडी माइंड सिस्टम, हमारा ब्रेन इस तरह से इवॉल्व हुआ जो इमीडिएटली थ्रेट को परसीव करे और थ्रेट को परसीव करके रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी को रेडी करे। Now just imagine what kind of threats were there at that time. Those were actual physical threats which would result in ending of life. शेर अगर आ गया है सामने तो ज्यादा लाइकलीहुड है कि मैं मारा ही जाऊंगा। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ, थ्रू आवर एवोल्यूशन नेचर ऑफ थ्रेट हैज चेंज्ड। आज हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के साथ साथ आपके लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के स्ट्रेस के साथ साथ और भी दूसरे स्ट्रेसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गोली खाने की, गोली चल रही है, एक कम्बैट सिचुएशन के लिए आप हैबिचुएटेड हो सकते हैं, लेकिन रोज जो एक डेली हैसल खड़ा होगा, फैमिली के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, या मेरे ट्रूप्स कौन सी एक अनटूवर्ड गड़बड़ सी सिचुएशन लेके आ जाएंगे, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दुश्मन सामने है, सामने से गोली चल रही है, मुझे भी गोली चलाना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लान करना है। दिस इज स्टिल अ फोकस्ड एंड बेटर सिचुएशन which can be compared to that response जहां पे जो केवमैन था वो या तो लड़ने के लिए तैयार होता था या भाग जाने के लिए। सामने अगर मेरे शेर है तो मैं डिसाइड करता हूं मेरे पास हथियार है, आई एम एबल बॉडीड, आई कैन फाइट, आई कैन किल दिस टाइगर, और आई फील आई डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट अ टाइगर, सो आई विल ट्राई टू रन अवे। सो आइदर आई फाइट और आई टेक अ फ्लाइट। सो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और जो थर्ड रेस्पॉन्स है वो है फ्रीज। जैसे कि आप किसी एनिमल को, चूहे को कॉर्नर कर लीजिए तो चूहा कोने में जाके फ्रीज हो जाता है जब वो रियलाइज करता है कि मैं बच नहीं सकता, ये तो मुझे पकड़ लेंगे या मार डालेंगे। सो फाइट एंड फ्लाइट एंड फ्रीज आर 3 प्रिमिटिव रेस्पॉन्सेस जो आज भी हमारी बॉडी को गियर अप करते हैं किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए। सो व्हेन a stressor is there, when a situation happens which we see as a crisis, जो हमें थ्रेट की तरह लगती है, तो हमारी बॉडी गियर अप होती है एक्शन लेने के लिए। अब बॉडी अभी भी उसी प्रिमिटिव सिस्टम में चल रही है, ब्रेन हमारा उसी तरह से अट्यून्ड है। तो हमारा नर्वस सिस्टम, मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, आपको अगर स्कूल बायोलॉजी भी याद होगी तो sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system, what it does, its role is to charge up the body, to make it ready for action. So if you are feeling like going out and running, if you are feeling like going out and fighting with somebody, if you are feeling angry, this is your sympathetic nervous system working. हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जब हम काम डाउन करते हैं, जब हम मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हमने क्या किया, हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, हमने ब्रेन को सिग्नल दिया एवरीथिंग इज ओके, रिलैक्स। सो व्हेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, वी फील calmed down, we feel that everything is all right, there is no threat around. तो जब हमारी बॉडी प्रिमिटिव वे में गियर्ड अप है, तो आज भी जब वो थ्रेट को परसीव करती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, देयर इज अ थ्रेट, वी नीड टू फाइट। तो व्हाट डज द ब्रेन डू? ब्रेन स्लोज डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट की जरूरत नहीं है, भूख की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? आपके हाथों की और पैरों की। पैरों की जरूरत है लड़ने के लिए, हाथों की जरूरत है फाइट करने के लिए। सो ब्लड फ्लो टू योर एक्सट्रीमिटीज, टू योर हैंड्स एंड लेग्स इंक्रीजेस, यू गेट रेडी टू फाइट, यू फील ऑल चार्ज्ड अप। आपको लगता है ये बकवास कर रहा है, इसको एक घूसा मार दूं मैं, फिर आप खुद को स्टॉप करते हैं कि घूसा मारना अभी सही रिस्पॉन्स नहीं है। जो नहीं रोक पाता वो घूसा मार ही देता है। So this is overactivation of the sympathetic nervous system, which is biologically programmed. And if we are not aware, this animal instinct takes over and results in aggressive actions. And this aggression can be either directed towards the other person or towards oneself. सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, it's better to die, and I jump off.
So this is basically an act of aggression. एंगर मैंने अपने ऊपर निकाला क्योंकि हाइपर एक्टिवेशन था मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ अगर कोई इंटरवेंशन आता है, जैसे पुराने समय में दो लोगों में झगड़ा होता था तो क्या कहा जाता था, लो लो दोनों पानी पियो, उसके बाद बात करेंगे। पानी पीने से क्या दिमाग काम डाउन होता है? नहीं होता है। बट यू टेक अ ब्रेक। While you are drinking water, you are taking a break, and when you eat or drink, जो ब्रेन का मैसेज है, since you are eating, that means there is no threat around. कभी आप किसी स्ट्रे एनिमल को देखिए, डॉग्स, कैट्स जो खुले में रहते हैं, you try to feed them, and if they perceive that there is a threat around, बिल्ली को खाना दीजिए, सामने कुत्ता है, वो बिल्ली कभी खाना नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है there is a threat, I cannot get engrossed in eating. तो इसका रिवर्स भी काम करता है। If we feed ourselves, the message that goes to the brain is, since खाना आ रहा है, इसका मतलब है there is no threat around. अगर पानी आ रहा है, इसका मतलब है there is no threat around, we can eat and drink. So that is why when you drink water, the message that brain gets is everything is okay, calm down. इसीलिए the breathing exercises work. इसीलिए प्राणायाम works. Why? Because when the body is charged up for action, जब हमारा sympathetic nervous system काम कर रहा है, उस समय we are burning more energy. ज्यादा ऑक्सीजन बर्न हो रही है, हमारी सांसें तेज चल रही है, हमारा दिल ज्यादा जोर से धड़क रहा है ब्लड पंप करने के लिए। अगर हम सांसों को स्लो डाउन कर दें, काम डाउन कर दें, डीप ब्रीदिंग करने लगे, ब्रेन को मैसेज जा रहा है, ओके, ब्रीदिंग हैज स्लोड डाउन, एवरीथिंग इज ओके, काम डाउन नाउ। सांसें गहरी आ रही हैं, हल्की अंदर तक हवा जा रही है, तो पैनिक की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स। जो बीच में हमें इंटरवेंशन करना है, ये तो प्रिमिटिवली प्रोग्राम्ड है, प्री प्रोग्राम्ड है, इतने लाखों सालों के हमारे एवोल्यूशन के थ्रू। हमें कहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है? नेचर ऑफ थ्रेट हैज चेंज्ड। जो हमारे पास स्ट्रेसर्स हैं वो इतने सिंपल नहीं है जिनसे हम फिजिकली लड़ सकें या भाग के जान बचाने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस की डिमांड करते हैं, जो स्ट्रेटेजाइजिंग की डिमांड करते हैं। अगर कम्बैट सिचुएशन भी है तो इट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट किलिंग द एनिमी, इट इज अबाउट फाइंडिंग द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, finding when to strike, how to strike, where to strike. All these things require thought. So the cognitive component, if we bring in, अगर हम अपने thought process को change कर पाते हैं, हमारे reactions भी accordingly हम mold कर पाते हैं। Right? I suppose थोड़ा सा ज़्यादा theoretical हो गया, so we can have some comments from you. Nicely directed, बिल्कुल ठीक है। जी। It was very good, ma'am. Basically, the advantage of this course is we are understanding the internal process of things very well. Right, right, Only right. we are basically the executioners. Yes. We know how trust being developed, which we are doing since last 26 years. Yes. यहाँ पे आके लगता है कि वो ट्रस्ट क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, एसेंशियल होता है, थ्योरी क्या है उसकी, ठीक है नहीं? सो हियर वी जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली, बट वी वर यूजिंग ऑल दोस प्रैक्टिसेस विदाउट नोइंग कि इसका सिस्टम क्या है। Exactly. You said our response, ठीक है नहीं? That sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system engagement. I don't know about both of these. These are new words to me. But actually we were engaging them. Exactly. And we were engaging them very well. Right. So what happens when we know the mechanism behind something that we have always been doing? Our faith in those practices increases. We do it with more conviction, and we are also open to sharing this with the people who might not be doing these things. So as leaders, and this is my request to you, is
in whatever forum, if you share your practices with your men, that works the best. एक external इंसान, हम अगर आके एक civilian, psychologist or whoever comes to a unit और ज्ञान देने की कोशिश करें, उसको बहुत रेजिस्टेंस फेस करना होता है. आपके लेवल पर उस रेजिस्टेंस से स्टिल डील किया जा सकता है, बट सोल्जर्स के लेवल पर वो रेजिस्टेंस हमारे लिए इतना ज्यादा है कि वी ऑलवेज से दैट इफ वी वांट टू टीच समथिंग टू द ट्रूप्स, इट इज देयर ऑफिसर्स हु कैन डू इट बेस्ट, बिकॉज दे नो द रियल कंडीशंस, दे नो हाउ देयर सोल्जर्स आर फेयरिंग. हम सिर्फ assumption पे बात करते हैं. So we prefer that it goes with you. एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ रोड एक्सीडेंट का. जी. दिल्ली के बिजी रोड पे my car was stuck with somebody else's car, and the situation arises like that. He opened his door, came with very angry gestures and all. वो आया and आने के बाद सामने खड़ा हो गया, ठीक है नहीं, and he was of my age, a little younger to me, ठीक है नहीं. उसके होठों से पता लगता था सिगरेट पीता है ये. ठीक है नहीं, मतलब इट इज जस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मैंने अपने आराम से गाड़ी किनारे खड़ी की, दरवाजा खोला, और वो बहुत गुस्सा हो गया था, तो मैंने सिगरेट निकाली. मैंने यार सिगरेट पी लेते पहले, उसके बाद बात करेंगे गाड़ी में क्या डैमेज हुआ. जो आगे खड़े हो गए थे ना उस चीज को देखने के लिए कि अब इन दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है नहीं, और वो जो गुस्से में आ रहा था, जैसे ही मैंने सिगरेट निकाली और उसको दिखाई, वी जस्ट स्मोक ए सिगरेट, उसके बाद डिसाइड हुआ यार ज्यादा नहीं हुआ, मैं अपने इंश्योरेंस में करा लूंगा. हो गया. तो वो सिचुएशन जो बिल्कुल गाली गलौज और उस पे हो जानी थी ना, वो सारे लोगों को मजा नहीं आया, बगल वाले लोगों को. तो आपने उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करा दिया सिगरेट पिला के. अब मुझे आज पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज किया मैंने उसका. Exactly. That was just a spontaneous response from me. Yes. So now you can use such tactics more often. अब मैं किसी को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इस कठिन वर्ड के साथ एक्सप्लेन करूंगा. Right. चलिए आगे चलते हैं. Just briefly what I wanted to further share कि जब हम पूछते हैं कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है, तो हम अंडरलाइंग रीजन को एड्रेस करते हैं. तो फोकस needs to change from outside to inside. Stress is not somewhere outside. Stress is within me. Once I accept this, then I ask the right question. Why am I stressed? Rather than bahar kya hai? What is there outside which is making me feel stressed? So there's nobody else who can make you feel stressed. It is your own interpretation. It is your own way. So why? Most of the time क्या होता है? दो अंडरलाइंग रीजंस हैं जो हमें स्ट्रेस्ड फील कराते हैं. बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स में भी बच्चों की बात कर रहे हैं. अश्विनी सर ने भी शेयर किया हाउ वी डील विद आवर चिल्ड्रन एंड द एडोलेसेंट चिल्ड्रन एंड थिंग्स लाइक दैट. आई एम श्योर even I face such issues. Everybody, all the parents face such things. So most of the time the underlying reason that हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी अंडरलाइंग नीड है to control others' behavior. We want things to happen our way. मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा इस पैरामीटर पे परफॉर्म करे. मैं चाहती हूं कि वो मैथमेटिक्स लेके पढ़े. There are certain way I want my child to behave. There is a certain way I want him to dress. There is a certain way I have a picture of my child which does not match with the real child. I want to change him. I want to control him to become like my ideal child. So I am trying to control. Whereas मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, या कोई भी सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता. हम एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं. बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए. मैं गर्मी की वजह से स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ. बट कैन आई रियली कंट्रोल द गर्मी? आई विश टू कंट्रोल, पर कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ. मैं अननेसेसरी स्ट्रेस फेस कर रहा हूँ. rather than doing that, most of us accept कि हम क्लाइमेट को नहीं चेंज कर सकते. सो वी एक्सेप्ट. सिमिलरली हमारे लिमिटेशंस हैं अदर पर्सन को कंट्रोल करने के. आप मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं
आप gradual changes ला सकते हैं, but you cannot control. So the moment we try to analyze why am I stressed, and we find this is my need to control others, this is my need to control the situation, or this is my need to control myself, तब भी मुझे stress होता है. मेरा natural response है to shout back. If somebody is getting angry on me, I want to shout back. If I'm trying to control myself too much, नहीं react नहीं करना है, नहीं react नहीं करना है, I'll become stressed. This will remain within me. और जब वो अंदर रह जाएगा, stress basically आपको क्या कर रहा है? आपको energy दे रहा है react करने की. आप react नहीं कर रहे हैं. वो energy आपके अंदर pent up है. वो कहाँ जाएगी energy? कहीं तो निकलेगी. यहाँ नहीं निकली, कहीं घर में जाके निकल जाएगी, बच्चे पर निकल जाएगी, रोड पर किसी के साथ निकल जाएगी, अपने से किसी कमजोर इंसान के साथ निकल जाएगी, अपनी हायरार्की में जो नीचे है उस पर निकल जाएगी, या कहीं भी नहीं निकल पाएगी तो किसी सामान पर निकल जाएगी जो पटक दिया जाएगा, डोर बैंगिंग हो जाएगी. So that energy has to be released somewhere. Stress is giving you energy. So how do you release that energy? Where does that go? So you have to find channels. So engaging in sports, that is a good way of releasing the energy given to you by stress. Going for a long run, that is a good way of releasing that energy. Engaging, doing any physical activity. So if you are stressed, आप rigorous physical activity करते हैं, energy release होती है, आप लौट कर आते हैं, you are better able to focus on the task. क्या हुआ? वो एनर्जी रिलीज हुई, एक टाइम गैप आया, आपका एक्टिवेशन रिड्यूस हुआ और रिलैक्सेशन के मैसेजेस गए ब्रेन को, ब्रेन वापस मल्टीपल पर्सपेक्टिव सोच पा रहा है, नैरो डाउन नहीं रहा, विजन आपका ओपन अप हो गया, आपको सॉल्यूशंस दिखने लगे. राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. The other reason we feel stressed is the need for approval. हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, जो हम कर रहे हैं उसके लिए शाबाशी मिले, अप्रूवल मिले, वर्बली, नॉन वर्बली, एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली. और जब हमें वो अप्रूवल नहीं मिलता, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, तुमने एक बार बोला भी नहीं कि सब्जी अच्छी बनी. I dressed up so nicely, my husband did not appreciate me. He did not even look at me once. He did not approve of it. मैंने इतनी मेहनत करके यूनिट का इंस्पेक्शन था, सारा काम किया, बट एक भी कमेंडेशन नहीं मिला. So this becomes a cause of stress. So in most of the situations, these two underlying causes are there. And अगर हम ये पकड़ पाए कि वो क्या है जिसके लिए हम अप्रूवल चाह रहे हैं, why am I seeking approval? Why am I trying to control? We will be able to address the root cause. And most interestingly, stress कब होता है? एक बच्चे का एग्जाम्पल ही फिर से हम लेते हैं. My child is not behaving appropriately. बड़ा indisciplined हो गया है, बात नहीं सुनता है, late night लौट कर आता है. This is one situation. The other situation is the child who lives across. सामने वाले घर में जो रहता है, बड़ा देर से घर लौटता है, देखो रोज आवाजें आती हैं, रोज डांट खाता है, सुनता नहीं है माँ बाप की. दोनों सिचुएशन में मेरे लिए स्ट्रेस का रीजन कौन सा है? मैम अपने वाला है. अपने वाला? हाँ. क्यों सर? Why is it so? दोनों ही बच्चे हैं. तो से अपने वाले से I had expectations and I had the responsibility. Yes. I had the expectations from him that he should behave the way I planned for him, that will be good for him. Exactly. Yes, that. Exactly. और दूसरी वाली बात ये है कि जो मेरी responsibility है कि I should be able to make him something in his life. Right. That's my responsibility. Right. And in my case, both things are not fulfilling up. Absolutely. That's the cause of stress for me with respect to my child. Yes. And my responsibility is not that much for that other kid. Exactly, sir. Exactly. That much of a stress. Exactly. So stress. Attachment. G. The attachment to the child.
Stress happens where we are invested. Yes. अपने बच्चे में हम invested हैं, अपनी यूनिट में हम invested हैं. There is a part of myself which is invested in my child. There is a part of me which I have invested in my unit, in my task. So there is something valuable at stake. If my child is not growing up properly, myself, a part of myself is being destroyed or is threatened or it is at stake. तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो वो हमें बता रहा है कि ढूंढो तुम्हारे लिए क्या वैल्यूएबल है जो खराब हो रहा है. There is something valuable which is being destroyed. What is that? Save that. So most of the time हम क्या करते हैं, हम पेरिफेरी पे रह जाते हैं. बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे की पिटाई कर दो, बच्चे को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में ले आओ, बच्चा पढ़ाई करने लगेगा. आपने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि फाइनली बच्चे का आपसे ही डिस्टेंसिंग हो गई. वैल्यूएबल क्या था? बच्चा. पढ़ा, आपने क्या किया? फोकस पेरिफेरी पे. उसको आपने पढ़ाई तो खूब करवा दी, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, आईआईटी में चला गया, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया. सो रिकॉग्नाइज व्हाट इज वैल्यूएबल एक्चुअली. Focus on that, where you are invested. आप अपने यूनिट में डिसिप्लिन लाने के लिए extremely strict हो गए. Again, this is just an example which might not correspond to the real situation. I'm just taking it as an example. आप extremely strict हो गए, यूनिट एकदम ठीक ठाक हो गई, but you did not address the problematic areas. आपने suppress कर दिए problematic areas. तो long term में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में वो डिसिप्लिन सस्टेन नहीं करेगा. सो स्ट्रेस, व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड, इट इज एक्चुअली अ सिग्नल फॉर अस टू गो टू द कोर. एक्चुअली क्या हो रहा है और उसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं. मैडम एक सिचुएशन है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली घर की तरफ से मुझे ज्यादा हुआ नहीं है. प्रॉब्लम एरिया इज मेरा अंडर कमांड के साथ में. I'm just giving you a situation. लास्ट कल शाम की है, एक कांस्टेबल मेरे पास में आया है, वो हैबिचुअल ड्रिंकर टाइप है, ड्रिंक करता है, एक दो पनिशमेंट भी मिल चुका है और उसको जो है क्रोनिक क्या बोलते हैं एक्वायर्ड अल्कोहलिक सिंड्रोम, कुछ ऐसा डिपेंडेंसी सिंड्रोम टाइप भी है उसको. तो मैं उसको पर्सनली मैंने जब बात किया उससे, तो ही रिवील्ड समथिंग. अब इसका मैं आपसे सॉल्यूशन देखता हूँ फ्रॉम ए साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ही इज मैरिड टू 10 years, 10 साल हो गए उसकी शादी को. ही इज नॉट हैविंग एनी किड्स. तो वो बोलता है कि जब उसने शादी की तो उसकी वाइफ वाज बीएससी कर रही थी वो. तो उसके बाद में उसने बोला मुझे भी पढ़ना है. उसके बाद में उसने बीएससी कंप्लीट की, फिर उसने बोला मुझे एमएससी भी करनी है. फिर उसने एमएससी की है एंड द लास्ट 10 years उसने पीएचडी कर दी. और इन बिटवीन वो जो है वो अपने जो मदर के साथ में रहते हैं. शी डजंट वांट टू कम टू हर इन लॉज हाउस. अब ये 10 साल से ये वेट कर रहा है, साथ में रहे. उसने कोशिश भी की कि मेरे पास में आ जाओ, यहाँ पे 4-5 महीने साथ रह लेते हैं हेडक्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे पीस लोकेशन है, बाद में मौका नहीं मिलेगा. बट तो एक एक्सक्यूज और दूसरा एक्सक्यूज दे करके वो कॉन्स्टेंटली उसको जो है आ नहीं रही है उसके पास में. अब वो 10 साल निकल चुके हैं. इन बिटवीन उसको समहाउ स्ट्रेस आया होगा कि अब मैं क्या करूं, मैंने शादी भी की है, माइट हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी. अब उसका एज भी एक टाइम आ गया है. तो अब वो बोलता है कि अब वो वाइफ की जॉब लग गई है, उसको किसी से पता चल रहा है, अब वो शी डोंट वांट टू लिव विद हिम. अब ये एक सिचुएशन आ रही है और ये इस तरह की सिचुएशन और मिलती जुलती सिचुएशन अंडर कमांड के साथ में बहुत है. अब इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं उसको, अगर आपके सामने आता? जी सर, मेरे 2 अप्रोचेस होंगे इस तरह की सिचुएशंस में. पहला, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच, कि अगर फैमिली को साथ में लाया जा सकता है, इफ वी कैन काउंसल द फैमिली इन अ कपल काउंसलिंग सिचुएशन, जहां पर हम वाइफ का पर्सपेक्टिव भी सुने कि वाकई क्या इश्यूज हैं, वाकई वो साथ में रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है. तो ये एक कपल काउंसलिंग का सिचुएशन. दिस इज प्रॉब्लम फोकस्ड सॉल्यूशन. सेकंड, जो आपने नरेट किया उस इंसिडेंट्स में ऐसा लगता है कि वाइफ
विलिंग नहीं है साथ में रहने के लिए, तो यहाँ पर हमें इमोशन फोकस्ड कोपिंग सिखानी पड़ेगी अपने सोल्जर को, क्योंकि वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन को पकड़े हुए है जिसके फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम एविडेंस देखें, कोई एक इंडिविजुअल जो पिछले 10 साल में साथ में रहने के लिए राजी नहीं हुआ, वो अब राजी हो जाएगा, और अगर साथ में रहेगी भी तो वो कितना एमिकेबल होगा, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। अब हमें अपने सोल्जर की अगर बात करें तो वो अपना इमोशन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन अप दैट एक्सपेक्टेंसी कि मैंने शादी की थी और उससे मैं ये अचीव करना चाहता था, जो कि फुलफिल नहीं हुआ। मैं अभी भी कोशिश करूंगा उसको फुलफिल करने की किसी तरह से। तो ये अनरियलिस्टिक है, इस चीज का रियलाइजेशन हमें उसमें लाना पड़ेगा और उसको मूव अहेड करना सिखाना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि एक मैरिज के अलावा भी, या इस लड़की से, इस इंडिविजुअल से शादी के अलावा भी लाइफ में देयर आर अदर थिंग्स विच आर वैल्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं उसके लिए वैल्यूएबल, उसके लिए कोई प्रोफेशनल एस्पिरेशन हो सकता है वैल्यूएबल। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल की लाइफ सिचुएशन पे। सो दीज आर द टू अप्रोचेस व्हिच वी हैव टू टेक डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स ऑफ द केस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो कितना रीजनेबल, कितना रैशनल हो सकता है। अब सिंस दिस पर्सन, एज यू सेड, is an alcoholic and is already, I hope he is undergoing treatment for alcoholism, तो प्राइमरी गोल यहाँ पर हो जाता है उसको अल्कोहलिज्म में से बाहर निकालना, क्योंकि अनलेस वो अल्कोहलिज्म से बाहर आए, वो रैशनल लेवल पर, रीजनेबल लेवल पर बातचीत करने की हालत में नहीं रहेगा। जहां पर भी स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा, वो अल्कोहल कंजम्पशन में जाएगा, जिससे कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती जाएगी और मेंटली तो वो बैलेंस, रियलिस्टिक सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाएगा। सो दिस इज हाउ वी कंसेप्चुअलाइज इट। नहीं मैडम, जैसे आप जो बता रहे हैं, कल शाम को मैंने 2 काम तो किए। एक तो ही बिलोंग्स टू केरला का है, और मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि उसको शायद उसके पेरेंट्स, इन लॉज कोई भी है, उसको हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती है। तो आई हैव डिटेल्ड, एक ऐसा ही सब इंस्पेक्टर था हमारा, उसको मैंने बोला फ्रॉम केरला, मैंने कहा आप एक बार उनके पेरेंट्स से, इसके इन लॉज से और वाइफ से, इन सभी से बात करके देखो, क्योंकि मैं जो कुछ वो बोल रहा है ऑन द फेस वैल्यू, मैं हो सकता है कि कोई और इश्यूज भी हो, कि घर जाके हो सकता है पिटाई विटाई करता हो, शराब ज्यादा पीता हो, ऐसा कुछ उसको शक वगैरह भी हो वाइफ को, उस चीज को रूल आउट करने के लिए। दूसरा मैंने उसको ये सजेस्ट, जो आप बता रहे हैं, दूसरा मैंने उसको, हालांकि मैं एप्रीहेंशन तो था, लेकिन मैंने कहा अगर वो 10 साल से तुझे इग्नोर कर रही है तो इट्स बेटर यू गेट डाइवोर्स, तुम्हें जरूरत क्या है कॉन्टिन्यूअस रिलेशन को बनाने की। तो ये 2 तो चीजें मैंने बोली हैं, लेकिन समाउ होता क्या है कि हमारा कई चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे लोकेशन में आपने बोला 10 साल से वो नहीं रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी लोकेशन में रह। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्योंकि बल्क ऑफ द फोर्स हमारी बॉर्डर पे डिप्लॉय रहती है, मतलब हमारे पास में अगर 1200 आदमी हैं तो 100 या 150 लोग हैं जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, बाकी सब बॉर्डर में रहेंगे, एंड थ्रू 30-35 साल तक वो यही काम करेंगे। तो कभी मौका मिलेगा तो उनको हेडक्वार्टर में टेम्परेरी अटैच किया जाएगा, और अगर कोई रहता है, फैमिली इश्यूज है, तो हम उनको परमिशन दे करके एडिशनल अटैचमेंट के तौर पे रखते हैं। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारा। तो ये लिमिटेशन जो है, अगर मैं बोलता हूँ डाइवोर्स दे दे, उसके पास मन में हो सकता है ये आ जाए कि डाइवोर्स दूंगा, दूसरी भी ऐसे करेगी, फिर वो तो बोलेंगे कि सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल देंगे। और जो अल्कोहल वाला भी जो सिस्टम है, वो क्योंकि हालांकि उसको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का मेडिकल कैटेगरी दे रखा है, लेकिन पिछले किसी केस में मैंने उसकी ये बात डिटेल में सुनी नहीं थी, तो मैंने उसको 7 दिन का क्वार्टर गार्ड या रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया, और पिछले 7 दिन में जब तक वो क्वार्टर गार्ड में रहा तो उसने कोई अल्कोहल का ना तो डिमांड किया, ना उसके कुछ अनइजीनेस ना आई, ना उसके कोई बीमारी हुई, ना वोमिट को सेंसेशन आया, जहाँ विड्रॉल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। तो दैट मींस ऐसा उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है नहीं, अदरवाइज उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस एरिया में रहता, क्योंकि स्ट्रेस में भी था और उसको मिल भी नहीं रही है अल्कोहल। तो वो चीजें तो मेरे को नहीं लग रहा डिपेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जब बाय फोर्स रह सकता है, दैट मींस बॉडी नहीं मान रहे। बॉडी तो ठीक है,
वो माइंडसेट की स्ट्रेस की वजह से वो लेने की कोशिश करता है, लेके उसको दूर बताने की कोशिश करता है। दूसरा मैंने उसको तीसरी चीज ये बताई है कि जैसे मान लो अगर आपके कान में दर्द होता है तो आप पैर में पट्टी नहीं लगाओगे, आप कान में ही पट्टी लगाओगे अगर आपके जहाँ पे इलनेस है। नाउ अगर फैमिली का डिस्प्यूट है तो अल्कोहल इज नॉट ए ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पे झगड़ा वहां हो रहा है, सॉल्यूशन उधर रिक्वायरमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के बात ये आ जाती है कि जो आपने बोला, जो मैं कर ही रहा हूँ और आपने भी वही सजेस्ट किया, इसके बाद में क्या होगा? मान लो वो लड़की बोलती नहीं मुझे तो इसके साथ में भी नहीं रहना है, अब वो उसके पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि नहीं, हमने अगर हमारी सोसाइटी का एक सिस्टम है कि वो वहां पे आके उसके पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करेगी, अब वो नहीं कर रही है तो उसमें क्या होता है कि हमें बोलना, थ्योरेटिकली बोलना आसान होता है कि नहीं कोई बात नहीं, वहां भी रहेगी तो कोई बात नहीं, बट ये एक सिचुएशन में तो आता है कि जहां उसको प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे उसको समझाया जाए? व्हाट शुड बी माय? सर आपको उसको थोड़ा सा रैशनल लेवल पे लाना पड़ेगा। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है बट टाइम्स आर चेंजिंग। पहले तो इतनी फ्रीडम थी नहीं लड़कियों के पास भी, आज ये फ्रीडम है और इसको कब आप कर नहीं सकते। आप डिवोर्स लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन आप मत दीजिए सर, उन्हें खुद उस डिसीजन तक पहुंचने दीजिए कि क्या बेहतर होगा, because it is for the family to decide. What is for you to do is to provide this individual with a rational coping system. अभी वो अल्कोहल कंजम्पशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको टेम्पररी रिलीफ मिलता है अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा आप या किसी को उसके साथ बिठा सके, जो आपने जो मलयालम बोलने वाला दूसरा आपने जो बुलाया है उसको बिठा के उससे ये कन्वर्सेशन करने के लिए बोल सके कि आप पहुंच कहाँ रहे हो, दारू पीते रहोगे, आप ये उम्मीद करते रहोगे कि वो आएगी और वो नहीं आएगी, वेयर डज इट लीड टू, व्हाट इज द सॉल्यूशन? इट डजंट गो एनीवेयर। जहां ये उसको रियलाइजेशन आ जाएगा कि ये तो बंद गली है, इसका एंड कहीं नहीं है, उसको मोटिवेट कीजिए, सॉल्यूशन फिर बताइए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या प्रिफर करोगे कि ऐसे ही चलता रहे या तुम अलग हो जाओ और अपनी लाइफ में कुछ और सोचो। तो मुझे लगता है दिस इज हाउ इट शुड वर्क सर। बाकी इंडिविजुअल से बात किए बिना एक रेडीमेड सॉल्यूशन, बट जनरली दिस इज द फ्रेमवर्क विद इन विच वी रिकमेंड that the conversation should go on, right sir? So sir thoda sa hum we should proceed with what we were talking about, and should we take a break again? Is a break needed? Tanvi? A little break now. Yes, yes ma'am, we should take a break. It's almost time. We usually take it at 12, so le lete hain. Let's have a 10 minutes break now. Yeah. We'll meet at 12:10. We can meet at 12:10. Yeah. Right. If you don't express, we will come under stress. नहीं सर, स्ट्रेस में मत आइए, हम तो बातचीत ही कर रहे हैं। Can we go further? Yeah, this slide number 23. Does your stress affect your health? Ma'am, you want me to display all slides at once, or you want the specific? No, just choose the slide number 23. Okay. Then we'll go further. Okay. Yeah, and there are 2 studies also. We'll skip some slides. There's less time. So yeah, so there is again a question. Just go back. Yeah. So what is your belief? आपका belief system क्या है कि स्ट्रेस होता है, हम सबको स्ट्रेस होता है? Yes, this slide number 23. Does your stress affect your health? Yeah. So there's a question on the slide. All of us feel stressed some time or the other. A simple question there. What do you believe? Does your stress affect your health? Yes or no? Okay. It depends upon the level of Yes. If stress is Sir, let's keep the answer. Let's keep the answer with you. आप अपना आंसर अपने पास रखिए। मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज, कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So another related question. Last 1 साल में आप
आपको क्या लगता है आपने कितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया? लॉट्स ऑफ स्ट्रेस या मॉडरेट या रिलेटिवली लिटिल या ऑलमोस्ट नो स्ट्रेस एट ऑल? Whatever your answer is, just keep it with you. Let's not discuss it. Yeah. So there are 4 options for last 1 year. How much stress आपके ओपिनियन में, आपको क्या लगता है आप कितना स्ट्रेस में रहे? बहुत सारा स्ट्रेस, मॉडरेट, रिलेटिवली लिटिल और ऑलमोस्ट नो स्ट्रेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड उन्हीं पिछले 12 महीनों के दौरान, ड्यूरिंग दोज वेरी 12 months, what do you believe how much impact your stress had on your health? Yeah, a lot of impact, some impact, hardly any impact, or no impact at all. So there are 2 related questions. पिछले 1 साल में आपको क्या लगता है आप कितना स्ट्रेस रहे, और पिछले 1 साल में इस स्ट्रेस ने आपके हेल्थ को कितना इम्पैक्ट किया. Okay, so all of you please keep your answers with yourself. So next slide please. Next please. Next please. We can go further. We can go further. We'll just skip these. Yeah. So ये 2 questions that I asked you, these come from a study which was carried out in the US in the year 1998. So what they did, they have a system of national health interview survey where they get data from large population about their health parameters. तो ये 2 सोर्स थे और एक उनका नेशनल डेथ इंडेक्स डेटा. तो उनका डेथ इंडेक्स, दैट हाउ मेनी पीपल डाइड एंड फॉर व्हाट रीजन, ये जो डेटा था. तो ये जिन लोगों पर ये डेटा लिया गया था उनसे 2 क्वेश्चन भी पूछे गए, वही 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे कि पिछले 1 साल में आपको कितना स्ट्रेस हुआ और इस स्ट्रेस ने आपके हेल्थ को कितना इम्पैक्ट किया. और फाइंडिंग जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या थी कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहे उन्हीं लोगों की मॉर्टेलिटी, उन्हीं की मृत्यु, उन्हीं की डेथ ज्यादा हुई होगी. पर फाइंडिंग्स ने दिखाया कि ऐसा नहीं था. किनका डेथ रेट ज्यादा था? उन लोगों की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी those who believe that they had moderate amount of stress, but this stress affected their health a lot, right? So experiencing a lot of stress and perceiving that this stress affects your health a lot, this increases the risk of premature death by 43%. This is a statistical finding, concrete data पर based है. तो इसमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट या हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो हमें बोलते हैं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. स्ट्रेस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंट्रोल. स्ट्रेस इज समथिंग विच इज वेरी बैड एंड स्ट्रेस इम्पैक्ट्स यू इन अ वेरी नेगेटिव मैनर. आपको स्ट्रेस होने से हाई बीपी हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होने से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. So you really start believing that if I am stressed, my health will suffer. But what this finding shows कि बीच में mediating factor क्या है? आपका belief system. Stress होता है, stress सभी को होता है, लेकिन ज्यादा impact किसके ऊपर पड़ता है? जो ये believe करता है कि stress की वजह से मेरी health खराब हो रही है. आप अगर stressed हैं लेकिन आप बिलीव करते हैं कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, तो स्ट्रेस का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है. डिफिकल्ट टू बिलीव, a little bit difficult. So we'll discuss 2 more interesting studies. Psychologists कुछ तरीके निकालते रहते हैं क्योंकि इंसान कम ही सच बोलता है. तो साइकोलॉजिस्ट अगर जाके पूछे सीधा क्वेश्चन तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ में आंसर आते हैं, या कई बार हम सही आंसर नहीं भी देते हैं.
तो हमें तरीके निकालने पड़ते हैं जिससे हम ट्रू रेस्पॉन्सेस पता कर सकें कि कोई एक्चुअली क्या बिलीव करता है। तो इसी तरह की 2 स्टडीज मैं आपसे शेयर करती हूँ। तन्वी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So, Nagendra sir, please keep the answers with you and we'll discuss it in the context of the findings. Yeah. So the first study was called the housekeeping study, health benefits of exercise. ये study हुई University of Columbia में. There is a psychologist by the name of Dr. Alia Crum. So she conducted this experiment. उनके पास भी कुछ ऐसे सोर्सेस थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट हेल्थ पर नेगेटिव होता है और हमारा बिलीफ सिस्टम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट शी डिड, शी थॉट कि हम लोगों से जाकर पूछते हैं ना कि आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि एक्चुअली क्या हुआ। तो इस स्टडी में उन्होंने क्या किया, हाउसकीपिंग स्टडी में दे सिलेक्टेड 7 होटल्स और उन 7 होटल्स के हाउसकीपिंग स्टाफ को उन्होंने अपनी स्टडी में एनरोल किया। इन हाउसकीपिंग स्टाफ को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप ए और ग्रुप बी, और ये दोनों मैच्ड ग्रुप थे। मैच्ड ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने मेल्स थे ए में, बी में भी उतने ही मेल्स थे। ए में जितनी फीमेल्स थी, बी में भी उतनी फीमेल्स थी। लगभग दोनों ग्रुप्स की एवरेज एज एक जैसी थी। उनका बॉडी मास इंडेक्स लगभग बराबर था, जो कि दोनों ग्रुप्स ही ओवरवेट थे, फिजिकली उतना फिट नहीं थे। अब इन्होंने दोनों ग्रुप्स को एक फिजिकल फिटनेस की रेजिम दी कि डाइट आप ये लेंगे, डाइट फिक्स कर दिया, और उसके अलावा और कोई एक्सरसाइजेस नहीं थे, सिर्फ डाइट, हेल्दी डाइट फिक्स कर दिया। जो ग्रुप ए था उसके लोगों को डाइट के अलावा ये ब्रीफिंग दी गई कि वो दिन भर में जो काम करते हैं अपने रूटीन ड्यूटीज के दौरान, हाउसकीपिंग ड्यूटीज ऑफ इन अ बिग होटल, क्लीनिंग एंड वॉशरूम्स की सफाई एंड व्हाटएवर, सो हाउ डज ऑल दिस कंस्टिट्यूट एक्सरसाइज। तो उन्होंने क्या किया, हर एक एक्टिविटी में कितनी कैलोरीज खर्च हो रही हैं, बॉडी किस तरह से एक्सरसाइज हो रही है, कौन सा मसल ग्रुप स्ट्रेंथन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप ए को दी और इस तरह के पोस्टर्स बना के, पैम्पलेट्स बना के उनके जहां उनका रेस्टिंग एरिया था वहां लगाए। ग्रुप बी को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट। अब 3 महीने के बाद दोनों ग्रुप्स को दोबारा फिटनेस पैरामीटर्स पे चेक किया गया। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, दोनों की प्रोग्रेस एक जैसी होनी चाहिए थी क्योंकि दोनों एक जैसा खाना खा रहे थे, कैलोरीज मैच करके, लेकिन ग्रुप ए जो है वो ज्यादा फिजिकली फिट पाया गया, उनका बॉडी मास इंडेक्स लोअर हो गया, उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़ गई। उन्होंने अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, वो सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम उनके अंदर डाला गया कि मैं जो रोज एक्टिविटीज कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी फिजिकली रिगरस है, वो मेरे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, वो मुझे एक्सरसाइज दे रहे हैं। Whereas the group B did not have any such belief system, and it resulted in measurable differences between 2 groups. Remarkable और measurable. यहाँ हमने सेल्फ रिपोर्ट नहीं पूछा, हमने इंडिविजुअल से नहीं पूछा कि अच्छा 3 महीने तुमने ये काम किया, आपने मेडिटेशन किया, अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने एक्चुअली फिजिकल पैरामीटर्स पे मेजर किया। दूसरी स्टडी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, द मिल्क शेक स्टडी। इसमें उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स को एनरोल किया और इनको सुबह सुबह लैब में बुलाया। जब ये लैब में पहुंचते थे तो इनको मिल्क शेक पीने के लिए मिलता था, एक बड़ा ग्लास भर के। ग्रुप ए के जो बच्चे थे उनको जो मिल्क शेक मिलता था उसके ऊपर लेबल लगा होता था इंडल्जेंस शेक, 620 कैलोरीज। और ग्रुप बी के जो बच्चे थे उनको जो मिल्क शेक मिलता था वो था 140 कैलोरी का, और उस पर लेबल लगा होता था सेंसी शेक 140 कैलोरीज। और
जब ये मिल्क शेक कंज्यूम करते थे, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हमें कितना खाना खाना है। खाना खाते खाते हमें पता चलता है ना कि अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें और नहीं खाना है। सो ये सिग्नल हमें हमारा ब्रेन देता है। और ब्रेन कैसे देता है? एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रेलिन। सो ग्रेलिन सिक्रीट जब होता है तो वो सिग्नल होता है फॉर अस टू स्टॉप ईटिंग। तो व्हेन दीज पीपल वेर हैविंग देयर मिल्क शेक्स, उनका ग्रेलिन का लेवल मेजर किया गया, दैट हाउ सून ग्रेलिन इज रिलीज्ड। जल्दी ग्रेलिन रिलीज होगा, इसका मतलब है जल्दी सेटिएशन आएगा, जल्दी पेट भरा महसूस होगा। सो व्हाट डू यू फील? कौन से ग्रुप ए जिसको 620 कैलोरी का शेक मिला था या जिसको 140 कैलोरी का शेक मिला था, कौन जल्दी सेटिएटेड फील करेगा, कौन जल्दी फुल फील करेगा? ग्रुप ए या ग्रुप बी? ग्रुप ए करना चाहिए, ग्रुप ए को करना चाहिए। ऑल ऑफ यू अग्री? 620 कैलोरी कंज्यूम करके जल्दी सेटिएशन आएगा? एब्सोल्युटली। और यही हुआ, स्टडी में भी यही हुआ। जिन स्टूडेंट्स को 620 कैलोरी का मिल्क शेक पीने के लिए मिला था, उनका जल्दी सेटिएशन आया, ग्रेलिन के लेवल जल्दी सैचुरेट हुए। तो इसमें क्या फाइंडिंग हुई? फाइंडिंग ये हुई कि दोनों ही मिल्क शेक बराबर थे। जिसमें 620 कैलोरीज लिखी थी उसमें 620 कैलोरीज नहीं थी, जिसमें 140 लिखा था उसमें 140 नहीं था। दोनों ही मिल्क शेक 240 कैलोरीज की एनर्जी दे रहे थे मेजर्ड। लेकिन जिसने ये बिलीव किया कि मैं तो 620 कैलोरी का मिल्क शेक पी रहा हूं, उसके ब्रेन ने उसको सिग्नल दिया कि काफी खा चुके, बस करो। वेयरएज जिसने बिलीव किया कि ओ ये तो सेंसेबल शेक है, ये तो डाइट वाला है, इसमें कोई ज्यादा कैलोरीज नहीं है, उसके ब्रेन ने सेटिएशन का सिग्नल देर से दिया। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम। सो द इफेक्ट यू एक्सपेक्ट इज द इफेक्ट यू गेट। दैट डज नॉट मीन दैट वी कैन चेंज फिजिकल रियलिटीज। हम ये सोचें कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि सोफे पर बैठकर टीवी देखना एक्सरसाइज है तो मेरी बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फिजिकल रियलिटीज चेंज नहीं होंगी, बट इफ आई एम एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी विद अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, माय बॉडी विल बेनिफिट मोर as compared to if I have a negative mindset towards the same situation. Right, sir? Now let us reflect back upon how you fared in those two questions. कि आपने कितना स्ट्रेस महसूस किया? तो ये लोकेंद्र कुमार क्या करता था, ये मुझे आपने कितना स्ट्रेस महसूस किया और उस स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट हुआ? नाउ यू कैन गो बैक टू हाउ यू स्कोर्ड योरसेल्फ एंड डिसाइड if you want to change your belief system about stress. क्योंकि हम स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन मैम ये बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव कैसे बनेगा? जी बिल्कुल। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 400 कैलोरी से हमारा काम चल जाए, तो इसको हम कैसे डेवलप करें? जबकि से काम चल जाए, इसके लिए तो सर ये फिजियोलॉजिकल एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस है। ग्रेजुअली आपको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ बिलीफ चेंज करने से यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन बिलीफ यहाँ चेंज कर सकते हैं आप कि अनहेल्दी फूड को रिप्लेस करने के लिए हेल्दी फूड लाए, यहाँ बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, तो अपने आप आपके कैलोरीज रिड्यूस होंगे। अरे मतलब थोड़ा सा अपने आप को मतलब ले रहे हैं हम 600 वाला, और हम बिलीव बना लें कि हम तो जो 2200 कैलोरी ले रहे हैं जी, इंटेक कर रहे हैं 600 वाला, तो जी ये कैसे मतलब कहीं पे जो है मतलब कुछ टैग मैग लगा करके करने से बिलीफ सिस्टम बन जाएगा क्या वैसा? सर अगर कोई और टैग लगा रहा है, हाँ, आप अवेयर नहीं है, है ना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को नहीं पता था, हाँ, टैग तो किसी और ने लगाया था। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि कोई और टैग कर दे, आपको पता ना चले, तो ठीक है। ये तो धोखाधड़ी है ना। इजियर तरीका ये है। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप प्रमोशन में आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन सुना ही होगा। जब कंपटीशन से जैसे डे नजदीक होते रहते हैं तो वो अपने आप शरीर में जो है वाटर जो है कम देते हैं, और लास्ट डे जिस दिन कंपटीशन होता है उस दिन वो
50 ml या 100 ml ही बिफोर कंपटीशन पानी पीते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, इसका 10-12 दिन का एक प्रोसेस है। 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से डिक्रीजिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, वो जो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होता है वो कम हो जाता है और बॉडी धीरे धीरे माइंड जो है उसको पकड़ने लगता है कि इसको इतना ही वाटर की जरूरत है। तो एक दिन में कम नहीं करते हैं। तो यही चीज है, खुद को धोखा देना भी ये एक मतलब तरीका ही हो सकता है और ये प्रैक्टिकल होता भी है। मैं यही कह रही थी सर कि ये एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस है, ग्रेजुअली हो सकता है, धीरे धीरे हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, किसी चीज का इम्पैक्ट एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर हमें अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक्चुअली अपने अंदर से बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कैलोरी इनटेक शायद थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं लाइफ में जिसमें हम बिलीफ सिस्टम चेंज करके अपने रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, which are beyond our control, which we have to accept. So the sooner we change our belief system that this is beyond my control and I have to learn to live within this framework, easier it is to adapt. तो ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तन्वी आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So we were talking about how to change the belief system. तो यहाँ we are talking about 3 things and you have a choice. First you have to believe. सिस्टम को एक समझो, मैं थोड़ा सा जी 1 minute only. जी सर। मैम, बिलीफ सिस्टम से your mind helps you out in achieving something, right? There is no alternative of physiological thing or physical thing you have to do. Exactly. Just first thing, the lecture is crisis management. Right. Use of psychology in crisis management. Right. When situation is there. So I find it very practical, which is happening to me whenever I was in a critical situation. Any kind of critical situation, that's a professional and personal both. What helps me out to come out from that critical situation or getting the solution of that critical situation is or was, I had the belief that I will succeed in that, what may come. Yes. Understand that in every critical situation where I was exposed to during my 26 years of life, एक belief system उसको address करने से पहले ये रहता था कि I will be succeeding. I will see myself that I will be overcoming this crisis effectively. Whatever resources will be at my disposal, whatever effort I have to put, but I will be succeeding this. एक दिन ऐसा आएगा जब से आगे जाना है. बिल्कुल. Is it something working like that, which you want to explain over here? Exactly the same thing that you are saying. Working and believing both go together. So as I said that if I keep sitting on the sofa watching TV and change my belief system that sitting is an exercise and I'll get fit, I will not. I will need to work out for getting fit. At the same time, have a mindset that this workout is actually helping me get fit. If I work out and I keep cribbing all the time, it is not going to benefit me as much. So as you said, when you approached a difficult situation, you always believed that you'll come out successful. That belief component, everybody doesn't have that, sir. You have it. Many people do not have it. I do not have it. That has to be cultivated. It is exactly the same thing I'm talking about. And again, I have tried to break it down into 3 components where I remain committed to the task. Difficulty increases, I stay committed. मैं काम छोड़ नहीं दूं. I make a commitment. However the situation is, जब तक solution नहीं मिलेगा, I will not leave it. I accept it as a challenge. It is not that somebody has put this difficulty into my path. Okay, there is a difficulty. I will deal with it as a challenge and I'll overcome it. And third component is, I believe that I can do it. I am in control.
ऐसा नहीं है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा. Rather than having that mindset, I believe I will succeed if I make effort. So these are the basic 3 C's of commitment, challenge, and control, which lead to a change of mindset from vulnerability to resilience. ये feel करना कि I am at the receiving end of everything, wrong things are happening और मुझे harm हो रहा है, or I am a person who is in control. I can change the situation. I can control the situation. This is the shift that is required. Next example देता हूँ मैम, इसी में control roles में. I had been to many trekking expeditions also. The trekking for 7 days or 8 days. Right. Generally do that, and the water is a scarcity in that. Right. You have to be lower on load, so you just carry a liter of water bottle. Right. And we used to follow one practice in that. Whenever you feel thirsty, you don't drink whole of the water. Yeah. You just take a sip of water from your bottle, keep it in your mouth for a while. Don't drink it like that. No. Just put that water in your mouth. When your mouth will be drenched, and say, okay, this much water is required to get me hydrated for next 50 minutes or 30 minutes. Right. And this way, that whole, we used to survive for whole of the day on 1 liter of water with all physical exertions. So that is cheating of the body. Mind is cheating the body, or it is that something which mind does with the actual thing. So it is, we can call it cheating, but if it is helping you in a positive manner cope up with the challenge, then why not? Because mind is such a tool which we can use to build ourselves up or to destroy ourselves. Mind is just a tool. We can, it is in our hands to use it whichever way we want. So this is happening. This is really happened with me. Yes. I just want to share it. होता है sir, it happens, and the more you practice it, more you get better at it. Whatever we lifelong, we are in the habit of believing that we are at the receiving end. Our culture also teaches us this acceptance. जो हो रहा है ठीक है, चलने दो. So this is somewhere ingrained within us. But the moment we make the shift, and the more we practice the new mindset, it strengthens. We can write better with our dominant hand. अपना left hand से अगर आपका dominant hand नहीं है left hand से you try writing your name and try writing with your right hand. किससे आप ज्यादा बेहतर लिख पाते हैं? आप dominant hand से ही better लिख पाएंगे. Exactly. Why is it so? Because you have practiced it. अब आने वाले 20 दिन तक आप non-dominant hand से लिखने की practice कीजिए. Gradually it will improve. Those muscles will get strengthened when you started going to the gym, या आप जब BSF में भर्ती हुए थे, जब rigorous physical exercise probably नहीं करते थे, और gradually your body got attuned to the physical rigor. So it's a gradual process. वैसे ही mindset change भी doesn't happen in one day. It takes time. नए neural pathways बनते हैं sir. Actually, when you change your thinking, new set of neurons in the brain fire. New connections are built which facilitate positive thought, which facilitate resilient thought. So more you practice it, more you talk about it to other people, more you discuss about it, more it gets strengthened. The actual जो हमारे न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, ब्रेन इज अ न्यूरोकेमिकल मशीन. सो जितना हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे वो पाथवे उतना स्ट्रांग होता जाएगा और इलेक्ट्रिकल करंट उतना जल्दी फ्लो करेगा. दूसरे चैनल्स, नेगेटिविटी के चैनल्स बंद होते जाएंगे. इसीलिए जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हो, ये काम करती हैं क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस पे एम्फोसिस करते हैं. Meditate at the same time, even if you are meditating just for 10 minutes. Mandir ya masjid ya gurudwara ya church, wherever you are going, go on this day at this time, practice this
what they are doing, they're strengthening those channels हमारे brain के. तो जब वो positive channels strengthen हो जाते हैं, वो आपका natural behavior बन जाते हैं. So that is how gradual shift happens. Can we have the next slide, please, Tanvi? So here the same thing I'm talking about, commitment, control and challenge. It is a choice. आप प्रॉब्लम की तरह देखें लाइफ को या चैलेंज की तरह देखें. आप पैसिव रहें और सोचे कि ठीक है यार, ये तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलेगा. या आप सोचें मैं जितनी भी देर के लिए यहाँ हूँ, लेट मी ब्रिंग इन सम चेंज, लेट मी मोल्ड थिंग्स इन अ डिजायरेबल मैनर. एंड अगेन इट इज अ चैलेंज वेदर यू गिव अप और यू रिमेन कमिटेड. और ये चॉइस हमेशा हमारे पास है. वी टेंड टू फॉरगेट, we tend to remain passive because remaining passive is easier. When we accept the challenges, it becomes a little difficult in the beginning, but when we make the gradual shift, we feel satisfied. Let's have the next slide, please. Next. Yeah, next. So finally, as we were talking, how do you make the shift and how do you practice it? The first and foremost thing is you need to acknowledge. सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की या डिफिकल्टीज की, तो हमें पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि स्ट्रेस है. बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं स्ट्रेस, कहाँ स्ट्रेस है, मेरे यूनिट में कोई स्ट्रेस नहीं है. क्यों बहादुर सिंह, कोई स्ट्रेस है तुमको? नहीं साहब, कोई स्ट्रेस नहीं. That's it. That's the end of it. So we need to come out and acknowledge that stress is a normal human response. उसमें stressed feel करने में कुछ भी गलत नहीं है. All humans, for that matter, all living beings, even animals feel the stress. The difference is how we deal with it. So acknowledge कीजिए बॉडीली आपकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में, एंड देन वेलकम इट. हाउ डू यू वेलकम स्ट्रेस? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट कि जब हम थ्रेटेंड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, देयर इज समथिंग वैल्यूएबल व्हिच इज एट स्टेक. वो वैल्यूएबल क्या है? वो आपके लिए क्यों वैल्यूएबल है? आपको क्यों लग रहा है कि दैट वैल्यूएबल थिंग इज बीइंग थ्रेटेंड? And what you can do to save it. So this is the energy which stress has given you, and you have to channelize it towards that valuable goal. These are the 3 basic steps of bringing in a positive mindset, making the mind shift from believing that I cannot do anything, I am at the passive end, और stress is harmful. बहुत stress है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, stress की वजह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है. ये belief system को replace करके ये belief system बनाना कि stress is a reality. Stress हमेशा रहेगा. आज मैं BSF में हूँ तो stress feel कर रहा हूँ, मैं किसी और organization में रहूंगा, वहां पर भी stress होगा, different kind of stress होगा. Right? So the kind of stress, the type of stress will change, but stress will always be there. Right? Little more. Point 2, how to welcome the stress. Yeah. So when we say welcoming the stress, by welcoming, I mean, normally when we feel stressed, we see it as something undesirable happening to us. जैसे कि कोई बीमारी आ गई, जैसे कि मुझे कोविड हो गया, अब मुझे घर में कन्फाइंड रहना पड़ेगा, समथिंग अनडिजायरेबल, नहीं होना था, इन्फेक्शन पर हो गया. Rather than believing that, if we feel I am feeling stressed, मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करूं, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं काम एंड क्वाइट होके, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके, और मैं इस बारे में सोचूं कि what is being threatened, why am I feeling stressed, अंडरलाइन कॉज क्या है, किस चीज को खतरा है जो मुझे परेशानी लग रही है. मेरी रेपुटेशन को खतरा है? एज ए कमांडर एम आई बीइंग क्वेश्चनड ऑन माय एफिशिएंसी? क्या जो आउटकम मैं चाह रहा हूं मेरे ट्रूप्स वैसा आउटकम नहीं दे रहे हैं? मेरी रेपुटेशन खतरे में है, मेरा प्रमोशन खतरे में है. अगर हम फैमिली मैटर्स की बात करें तो क्या मेरा रिलेशनशिप इज बीइंग क्वेश्चन? एम आई बीइंग क्वेश्चनड एज ए गुड फादर?
that my son is not listening to me or my daughter is not listening to me? Is it threatening my identity as a father? I believe that I am a very good mother. This is my self-concept. I have done everything for my son. I've been such a loving mother. I've provided for everything. Still, my son is not listening to me. So what is being threatened? My self-concept as a good mother. Question कहाँ आ गया? Problem कहाँ है? Problem ये है कि मुझे लग रहा है कि I have failed as a mother. So have I really failed? I am stressed. So this energy, stress is giving me this energy. Okay, I need to work. अब work मैं कैसे कर सकती हूँ? रो के मैं उस energy को channelize कर सकती हूँ. I can crib about it. That see, I have done so much for my family. Nobody values me. This is how they are. They are all thankless. They do not recognize me. Or I can introspect and see where I have missed out, how I can change my ways, how what all things I can change so that the outcome becomes different. So this is what I am saying. Unless I welcome the stress, अगर मैं stress को deny कर दूं, मुझे तो stress होता ही नहीं जी. तो वो जो सिग्नल मिल रहा था मुझे कि कोई चीज है जो खतरे में है, वो सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा. जब मुझे कोई बीमारी ही नहीं है तो मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं है. हम जब फिजिकली बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज लेते हैं. जो वो हमें रिकमेंड करता है वो हम प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन जब हमें स्ट्रेस होता है, हमें परेशानी महसूस होती है, तो हम बोलते हैं ना जी हमें तो कोई स्ट्रेस होता ही नहीं, वो तो सब ऐसे ही है. जब हमने कहा ऐसे ही है तो हमने स्ट्रेस को बोला तुम बाहर रहो, हम वेलकम नहीं कर रहे हैं तुमको. We are not accepting you. You're not welcome. So unless you accept and you welcome the stress, you will not be able to introspect and find the true reason behind the discomfort that you are feeling. I hope थोड़ा सा clarity आए. Yeah, ma'am. Yeah. Welcome the stress means मतलब you are just accepting that you have to accept कि yes, there is a stress. That means there is a cause, something which has to be addressed. Yes. Up to that. Up to that. And then you have to think at the cognitive level. आपके thought level पे आपको सोचना है कि अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है जिसका मैं सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ. सपोज कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेट्स अज्यूम दैट. ओके, सो देन you are feeling stressed. कैसे होगा, ये कहाँ से आएंगे रिसोर्सेज, ये पैसा. एंड देन यू ग्रेजुअली फाइंड आउट, ओके ये यहाँ से ये मेरा ये आ सकता है, ये मेरा वापस ये मुझे मनी बैक मिलने वाला है, ये मेरा मेच्योर होने वाला है. एंड देन यू फाइंड दैट ओके नाउ आई एम कंफर्टेबल. सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव यूज्ड दैट डिस्कम्फर्ट जो आपको फील हो रहा था वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, उसको आपने चैनलाइज किया, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, सोचा और आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया. दिस इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोपिंग. अब हर डिफिकल्ट सिचुएशन जो आती है उसका सॉल्यूशन नहीं होता. बहुत सारी सिचुएशन स्ट्रेसफुल इसीलिए होती है कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है. तो उस सिचुएशन में हमें जो एनर्जी स्ट्रेस की वजह से एक्टिवेशन जो आया है उसको चैनलाइज करना है अपने इमोशंस को कोप अप करने में. कि अगर मैं हाइपर इमोशनैलिटी में चला जाता हूँ, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम सैडनेस, इज इट हेल्पफुल फॉर मी? If I become very angry, I am not able to manage the situation and I have become very angry, is it really helpful? Or would it be more helpful if I keep my anger at a manageable level and communicate with people what needs to be done? So when you are able to do this, that is about welcoming the stress. Here your stress has become your strength. स्ट्रेस तो हुआ, लेकिन स्ट्रेस ने ही आपको हेल्प की अपने इमोशंस को मैनेज करने में और सिचुएशन को भी मैनेजेबल लेवल तक लाने में. दिस इज द टू pronged strategy, right sir? So this is the 3 steps of practicing the new mindset. Let's go to the next slide, Tanvi. And finally, the 3 steps that you need to remember, we have already talked about it. You learn the new point of view, new perspective, new belief system, that stress is a strength, not a weakness. Doing an exercise that encourages you to adapt and apply the new mindset. अगली बार जब भी कोई difficulty आए या कोई hypothetical situation लेके सोच के देखिए कि मैं किस तरह से बेहतर तरीके से एक positive way में stress को accept करके चल सकता हूँ. And share this with others.
जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे कि आज आपने क्या डिस्कस किया, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, चाहे आप क्रिटिसाइज ही करें इसको, फिर भी वो पाथवे स्ट्रेंथन होगा। चाहे आप इसके बारे में यही बात करें कि बड़ा इनक्रेडिबल है, ऐसे थोड़ी होता है, बात करने से थोड़ी सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, फिर भी ये पाथवे स्ट्रेंथन होगा, बिकॉज दिस विल फॉर्म अ मेमोरी ट्रेस in your brain, in the neurochemical system of the brain. So practicing the new mindset, sharing it with others will strengthen it all the more. Can we have the next slide, please? That I suppose is the last one. Tanvi, please. So these are some principles of crisis leadership based on what we have discussed. I will not elaborate upon these. These are something that you already know and practice. You already know these and you have been practicing these. Let's not elaborate upon this. Just try to read these in the context of what we have discussed about changing mindsets from looking at life as full of hindrances as compared to looking at life as full of challenges that you have the capability to overcome. It is an adventure. If you approach it with a belief system that you can do it, then you can do it. If you approach it with a belief system that you cannot do it, then of course you cannot do it. So it is said that the man who believes he can and the man who believes he cannot, both are correct. Isn't it so? So choose what you want to believe, whether you want to believe you can or you want to believe you cannot. Both are true, whatever you believe for yourself. Right? So this is from my side, sir. We can have a quick discussion or questions. I suppose I have taken all my time and we have had ample discussions. Still, if there are any questions, I'll be happy to take those. मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी स्ट्रेस आता है उसको हम अपने पार्ट ऑफ लाइफ को क्यों नहीं मान के चलें कि ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है और ये आएगी और कोई परमानेंट तरीके से तो रहेगी नहीं हमारे साथ, ये रहेगी कुछ क्षण के लिए और फिर उसके फिर चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यही हमें मान के चलना है। लेकिन ज्यादातर समय हम स्ट्रगल करते हैं। जब हमारी लाइफ में इजी टाइम आता है, खुशी का टाइम आता है, तब तो हम ये नहीं कहते कि ये कब जाएगा, ये क्यों आ गया। लेकिन जैसे ही डिफिकल्टी आती है हम परेशान हो जाते हैं। सो डिफिकल्टीज आर हियर टू स्टे। स्ट्रेस हमेशा ही महसूस होगा, ये एक नॉर्मल बॉडीली रिस्पॉन्स है। This is not a disease. This is not something to be fought back. Exactly, absolutely what you're saying, that's absolutely right. Thank you. Yeah. मैम, रौतेला सर ने एक क्वेश्चन, एक इंसिडेंट शेयर किया था। एक उनका कांस्टेबल है जो केरलाइट है और जो उसमें फैमिली इशू आ रहे हैं उसमें, तो उसी में मैं ये आगे उस डिस्कशन को आगे थोड़ा चाह रहा था खींचना कि जो जैसे उसको उन्होंने 7 दिन का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व भी किया। साइमल्टेनियसली उसमें जो उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि हाँ, he wanted to address that problem also. अब क्या है कि जो ये अल्कोहलिज्म या ये लीकर वाले इंस्टांसेस हैं, अगर आप ये सब में प्रोविजंस हैं, आप सजा देना चाहें तो आप डिसमिसल तक भी जा सकते हैं। एक तरफ से एक वो हायरार्की में डिसिप्लिन करने के लिए, बाकियों को मैसेज देने के लिए, एक मेरे ऊपर ये स्ट्रेस है कि हाँ मैं इसको स्ट्रिक्टली डील करूं ताकि बाकियों को मैसेज दूं। दिस इज अ स्ट्रेस ऑन मी, राइट, कि हाँ आई शुड डील देम विद स्ट्रिक्ट हैंड। और साइमल्टेनियसली एक सिंपैथेटिक हैंड भी मेरे को एज ए हेड ऑफ दिस यूनिट और बटालियन रखना है कि हाँ उसकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं समझूं और रिजॉल्व भी करूं। दिस balance I need to make. How do I address this? What is your take on it? I would like to hear. Right. सर मुझे ना एग्जैक्टली तो वो याद नहीं आ रही हैं लाइंस, बट हम स्कूल में को किसी का रहीम का या कबीर का दोहा था कि गुरु वो होता है जो बाहर से चोट करता है और अंदर से सपोर्ट देता है। जिस तरह कुम्हार जो मटका घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाता है,
तो वो बाहर से चोट करता है बनाने के टाइम पे और अंदर से सपोर्ट देता है। सो एक लीडर का रोल भी उस तरह का ही है, एंड इट इज योर कॉल, नोबडी बेटर देन यू knows where to draw the line, and this line might differ for different people. So first line, when you are interacting for the first time with this individual who is facing difficulties in coping up, alcohol or no alcohol, whichever way, आपका जो प्राइमरी अप्रेजल है उसका, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर होगा, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में प्लेस कर पाएंगे। तो अगर वो सपोज लेट्स अज्यूम कि अल्कोहल इज द इशू, सो व्हाई इज ही ड्रिंकिंग, व्हाट आर हिज सोर्सेज, उसको अगर आपने कट डाउन कर दिया है अल्कोहल, उसको मिल कहाँ से रहा है, उनको भी आप कट डाउन कर रहे हैं। फैमिली में व्हाट आर द स्ट्रेसर्स दैट दिस पर्सन इज फेसिंग, एंड आर दोज स्ट्रेसर्स मैनेजेबल, क्या आप कोई इंटरवेंशन दे सकते हैं, क्या आप कोई काउंसलिंग दे सकते हैं। देन आफ्टर यू हैव टेकन ऑल दीज मेजर्स, if he is on the path of correction, then maybe the strict disciplinary action would not be required. If not, then disciplinary action should come as the last resort. Now, where to draw this line? It is up to you. You are the judge. This no psychologist can suggest you. Right. But this has to be a stepwise process. Right, sir? एक क्वेश्चन है मेरा मैडम, क्वेश्चन ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड एज ए साइकोलॉजिस्ट। जब ये सुसाइड केस और ये काफी होने लगे थे, तो मैंने एक बार जस्ट फॉर माय ओन सेक, जब ये उन्होंने बोला कि कमांडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल और ये सो आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आई जस्ट स्पोक टू सम साइकोलॉजिस्ट से मैंने बात की। मैंने कहा मैं आपके सामने एक आदमी लाता हूँ, यू स्पीक टू हिम फॉर 1 2 3 4 आवर जितना आप चाहते हो, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन क्या आप मुझे बता सकते हो कि सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा, किसी को मारेगा कि नहीं मारेगा। तो उसने कैटेगरिकली बोला कि यार मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ आपको कि ये मारेगा कि नहीं मारेगा, सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आप बता देते हो कि 10% भी चांस है तो मैं उसको हथियार दूंगा ही नहीं। तो कहता नहीं मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि सुसाइड और फेटिसाइड जो केसेस हैं दे आर स्पॉन्टेनियस, वो सिचुएशन डेवलप होती है और उसके बाद में वो एक्शन कर देता है। हो सकता है अगर उस मोमेंट में रुक जाता तो रुक जाता, सब्सिक्वेंट स्टेज में नहीं करता, बट देयर आर केसेस जो हो सकता है कि उनकी टेंडेंसी हो सुसाइडल, मतलब जो सिचुएशन अगर एडवर्स आती है तो अचानक उनको लगता है मैं खत्म कर दूं और मामला शांत हो जाए। तो मेरा ये सोचना था कि जब वो एक आदमी को 1-to-1 डिस्कशन में 2-3 घंटे के सेशन के बाद में भी ही इज ए कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट है, वो एसेस करके नहीं बता पा रहा है मैं 1200 आदमियों को कौन से किस पैरामीटर से मैं डिसाइड करूं कि इसके अंदर ये इंडिकेटर है। क्योंकि इंडिकेटर की बात आपने भी की कि वो नर्वस है, बात नहीं कर रहा है। आज की डेट में मोबाइल होता है, कोई भी आदमी किसी से बात नहीं कर रहा है। अब नर्वसनेस और ये जो पैरामीटर्स हैं इसको डिटेक्ट करना, मेरा कहने का मतलब यही है कि साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पा रहा था एज ए लीडर, मैं एसेस कैसे कर पाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सिर्फ हमेशा लीडरशिप का हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम जो सुजीत ने शुरू में बोली थी कि हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब रिसर्च होगी, सपोज आपको डीआरडीओ को बोला जाए कि बीएसएफ में ऐसा केस हुआ था और वहां पे सुसाइड के केस हो रहे हैं, फेटिसाइड हो रहे हैं, कि आप एक रिसर्च करिए, तो मैं 100% बोलता हूं जो क्वेश्चनर बनेगा उसमें पहला क्वेश्चन होगा जो इंडिविजुअल से पूछा जाएगा रिसर्च में, आप छुट्टी कब गए थे, आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। मतलब वी हैव गॉट ए फिक्स्ड पैरामीटर्स पहले डिसाइडेड है कि इसी के बेसिस पे देखने हैं। बाकी हम जो एक्चुअल जो है वो उसको कैसे निकाला जाए, मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो अपने एक्सपीरियंस इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर अपने रिसर्च के अंदर ही, तो हमारे रिसर्च ही फॉल्टी हो गए क्योंकि हमारा बेस वाज फॉल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कैसे निकाला जाए कि एक्चुअल परेशानी क्या है, क्योंकि मुझे जो लगता है इट इज मोर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग 10 महीने एक साल के अंदर 10 महीने हम परिवार से अलग रहते हैं। बिल्कुल सर, जितना मेरे नॉलेज में है कुछ साल पहले करीब 10 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे, बीएसएफ ने एक बार ये इनिशिएटिव लिया था और बीएसएफ ने डीआईपीआर को अप्रोच भी किया था कि हम एक ये ब्रॉड बेस्ड स्टडी करें जिसमें हम ना सिर्फ सुसाइड तो एक सिंगुलर
क्या बोलना चाहिए, टर्मिनल पॉइंट है, एक्सट्रीम इवेंट है। उसके नीचे के भी कई सारे पॉइंट्स हैं एक कंटिन्यूम पर जो मैलअडैप्टिव बिहेवियर के हैं। तो बीएसएफ ने हमें अप्रोच किया था, पर फाइनली कुछ उसमें मटेरियलाइज हुआ नहीं, वो स्टडी हमारे पास आई नहीं। जो आप कह रहे हैं वो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि हमको अपना जो रिसर्च का फ्रेमवर्क है उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा। ज्यादातर समय सिंस ऑर्गेनाइजेशन ही रिसर्च को स्पॉन्सर करता है तो रिसर्च का आउटकम ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के फैक्टर्स को, पॉलिसी फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल को ब्लेम करते हैं, तो नेगेटिव इंसिडेंट्स को रोकना पॉसिबल नहीं है। नाउ अगेन कमिंग टू द इंडिविजुअल लेवल, देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो हमेशा ही वल्नरेबल रहेंगे। आप कितना ही सपोर्ट प्रोवाइड कर लीजिए, ह्यूमन पॉपुलेशन का सर्टेन परसेंटेज है जिनके अंदर ये एस्टैब्लिश्ड है कि सुइसाइडल टेंडेंसीज होती ही हैं। And when I speak about suicidal tendencies, that does not mean actual committed suicide only. There is a continuum of behavior. और जब हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या असेस करके सुइसाइड प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। No psychologist in the world so far with the available techniques can predict suicide, but we can tell you that these individuals are vulnerable. इनके अंदर probability है, और वो probability कितनी है, 95% श्योरिटी के साथ या 99% श्योरिटी के साथ हम आपको बता सकते हैं कि ये vulnerable individuals हैं। अब हो भी सकता है उनमें से कोई एक्सट्रीम एक्ट कमिट करे या ना भी करे। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक। ऑल बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन। मैं वल्नरेबल हूं, लेकिन मैं कभी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ी ही नहीं, मेरी लाइफ हमेशा स्मूथ चलती रही, तो मैंने कभी कोई मैलअडैप्टिव बिहेवियर दिखाया ही नहीं। लेकिन जिस मोमेंट डिफिकल्टी आई, उस मोमेंट मेरा ब्रेकडाउन हो गया। तो उस डायनामिक सिचुएशन को, उस डायनामिक बिहेवियर को असेस करना किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल नहीं है। हम साइकोलॉजिस्ट जब असेस करते हैं बिहेवियर को, हम उसी सैंपल को असेस कर रहे हैं जो उसने हमारे सामने डिस्प्ले किया, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो, चाहे वो क्वेश्चनेयर भरने में हो, चाहे वो बातचीत करने में हो। उसके बेस पे आने वाली जिंदगी के 40-50 साल का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी से बताया जा सकता है। ये फिजिकल साइंस नहीं है जिसमें हम हाँ या ना में आंसर दे पाए, इसलिए साइकोलॉजिस्ट हमेशा कॉशियस रहते हैं। नेक्स्ट, जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। आपने इम्पल्सिविटी की बात की, इम्पल्सिव सुइसाइड इज वन काइंड ऑफ सुइसाइड, जिसमें गुस्से में आके या परेशान होके इम्पल्सिवली किसी ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। लेकिन ज्यादातर सुइसाइड वेल थॉट आउट होते हैं, प्लान करके होते हैं, वेरियस स्टेजेस से गुजरता है इंसान। फाइनली जब वो सारी उम्मीद खो देता है, होपलेसनेस में चला जाता है, हेल्प सीख कर चुका है, वो मदद मांग चुका है और उसने देखा कोई मदद नहीं मिल रही कहीं से, अब कोई उम्मीद नहीं बची। जब वो होपलेस हो गया, जब वो कॉर्नर्ड हो गया, उसके बाद वो सुइसाइड के बारे में सोचता है, प्लान करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इट इज अ यूजुअली अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, कुछ दिन या हफ्ते लगते हैं, फिर वो हिम्मत जुटाता है, रिसोर्सेज ढूंढता है। तो इम्पल्सिव सुइसाइड इज जस्ट वन काइंड ऑफ सुइसाइड। दिस इज प्रीमीडिएटेड सुइसाइड, जहां उसने अच्छे से सोच के किया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुइसाइड्स आर देयर, फिर सिचुएशंस आर डिफरेंट। अब उसने प्लान आउट किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसको इंटरवेंशन मिल गया, सपोर्ट सिस्टम मिल गया, उसके बॉडी ने उसके इंडिकेटर्स पकड़ लिए कि अरे ये तो चिट्ठी विट्ठी लिख के रख रहा है, ये तो बात कर रहा है कि मरने के बाद ये होगा वो होगा। उसने रिपोर्ट किया या उसने उससे बात की, मीडिएट हो गया, उसका वो फेज निकल गया, उसने नहीं किया। सो इन सारी चीजों को कभी भी 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। You as a leader, we as psychologists can only reduce the probability by changing the environment. Organizational environment को ज्यादा conducive बना सकते हैं, उसके लिए स्टिग्मा हटा सकते हैं कि जहां अगर वो हेल्प सीख कर रहा है, अगर वो जाके कमांडर को बोल रहा है कि मुझे परेशानी लग रही है,
मुझे डिप्रेशन लग रहा है, तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए, उसको कमजोर ना बोला जाए, रादर उसके लिए सपोर्ट सिस्टम हो, और डे टू डे बेसिस पे उसके पास एक बडी हो या सपोर्ट सिस्टम हो जिसमें वो कन्फाइड कर सके, उसका कमांडर ऐसा हो जहां इन चीजों की समझ हो। ये हम इंश्योर कर सकते हैं। 100% कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, राइट सर? Ma'am, जी जी। as you said, DRDO has been approached by the BSF to do the study of suicide cases and all. इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज करना चाहता हूँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी। That kind of study was done by BSF very extensively by some other management group or and a detailed report of that with what has to done and what has not to done, and how to identify those kind of peoples was shared to all the battalions 2 months back, ma'am. It's a very comprehensive document which is available in each and every battalion. Just 2 months back it was circulated and the study has been done. That is wonderful, sir. Has not done that. That is wonderful, sir. We were approached long back, about 10 years ago, when we had done a study for the army. That time BSF had approached us, but this is wonderful that somebody has done that study, and I hope the organization takes note of that. And if I can give this suggestion कि रिपोर्ट बटालियंस में भेजने के साथ साथ अगर किसी तरह का सेम ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अप्रोच्ड फॉर गिविंग सम काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई द बिहेवियरल इंडिकेटर्स, द मार्कर्स, if that can be identified, that would be wonderful. That's all there, ma'am. I want to come with something. That's wonderful then, sir. That's wonderful. That's Good wonderful. afternoon, Yes, sir. Good afternoon, ma'am. I'm myself Gurinder, ma'am. Sir. Ma'am, what I feel, I would in a minute or two, I would narrate 2 incidents. One I was officiating, which I faced. The another one I had done a court of inquiry in a suicide by an officer. And another one of my Jawan, he survived. He attempted suicide, but he survived. Right. So as per I was very curious to ask him that what were your feelings when you were about to shoot yourself? That was my first question. When he recovered from that ordeal after that, I took a lot of initiative in saving him, evacuated in a helicopter through Air Force, and luckily he survived. So my first question and the answer which he told me, like he was on a phone call at early morning, 5 a.m. in the morning. He was on duty, he was on a call. So, he told her, I didn't even knew that I'm going to do it. Sir, मैंने cock किया और मैंने मारा. And the bullet didn't touch any of his vitals. It passed through his abdomen. He hit near his navel point and didn't touch luckily any of the vital organs inside. So मतलब वो मेरे को I asked him totally जब recover हो गया when he came back from the hospital after around 2 months of surgery, he had some surgeries to be done. तो वो उसका reply था. और दूसरा जो मैं कोट करना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा मैं रिप्लाई चाहूंगा आपसे. और दूसरा जो ऑफिसर, he went for a morning walk along with his inspector at border, came back, weapon cleaning was going on, attended that parade, asked his help, जो उसका security assistant था, to bring a cup of tea. It was 6 in the morning, in summers थे. And by the time and it was windy, lot of gusty winds were blowing, means heavy wind was going on. So by the time he came back, he fired a burst through his under his chin, and he died. He shot himself. So no sign of any stress, nothing, didn't talk with anyone, normal. That inspector with whom he had gone, they were now laughing. And then no stress from home side, kids were well settled, nothing like that. He used to participate in games also. Every day we have a games in the company, he used to participate in that. He used to go for his routine duty. Right. Nothing came out, he wasn't on call, his family and kids were well settled, no issue at all. So I did that inquiry, but couldn't come out. We tried to find through his calls also, but no unusual call
unusual calls were there. Right. So, So, one more thing, one small thing. But I feel, ma'am, as you have indicated in your session since morning, I feel in the forces, the indicators are there. But being at a command level, we at some level, we are not with the boys all the time. Because so indicators I have felt are always there. If we on personal level, people won't come up in inquiry, but on personal level, if we check, indicators are there. There is something going on, something cooking in case of fratricide and suicide. And this boy is always narrating something to someone. Right. But people, I don't think why at the troop level, at the Jawan level, they don't come out with this thing initially. कि ऐसा सर हो सकता है सर ये वो देर अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 5% मैं बोलूंगा कि लोग अब बताने लगे हैं कि सर ये लड़का थोड़ा अलूफ रह रहा है खाना कम खा पीपल आर कमिंग विद मी आई एम एक्सपीरियंसिंग इट बट क्या कारण हो सकता है कि बॉयज नहीं आते आगे चीजों को बताने के लिए पहली चीज और ये जो ऐसे 2 नरेट किए मैंने इंसिडेंट में तो ये भी boys do not come out and report these. First, they themselves do not understand what is happening. They do not care. ये एक रीजन हो सकता है वर्ड मैं जरूर मानूंगा सर ध्यान नहीं देते दूसरे पे इतना आजकल सब अपने में एनग्रॉस्ड है उतना दूसरे के लिए अवेयर नहीं है इंडिकेटर्स को पहचानते नहीं है और जब पहचानते भी हैं तो माहौल इतना ओपन नहीं है कि वो जाके इस चीज को रिपोर्ट कर सकें चैनल्स एस्टैब्लिश नहीं है सेफ चैनल्स नहीं चैनल्स तो एस्टैब्लिश है फोर्स में चैनल्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड ये हो सकते हैं नाउ यू हैव टू सी व्हाट इज द रीजन इन योर केस यूजुअली क्या होता है मैं कब नहीं बोलूंगा जब मुझे लगता है मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं चुप रह जाता हूँ या मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं क्योंकि मैं तो अपने मोबाइल में बिजी था तो मुझे पता ही नहीं मेरा बगल वाला क्या कर रहा है आजकल फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है ना फैमिली मेंबर्स आपस में अब सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं तो हो सकता है उसने देखा ही ना हो या उसको बताना सेफ ना लगता हो या उसने देखा तो हो लेकिन इस चीज को उसने किसी सीरियस चीज से लिंक नहीं कर पाया ये कोई भी रीजन हो सकता है सर मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकती कि पर्टिकुलर केस में क्या रीजन था आपने जो आपने ऑफिसर्स की बात नरेट की जो इंसिडेंट्स आपने नरेट किया मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस वंस द इंडिविजुअल हैज मेड द डिसीजन दैट ओके दैट्स इट नाउ आई एम गिविंग अप this person will appear very normal because the conflict, the distress is already over. Suicide is actually a cry, desperate cry for help. I am crying, I want somebody to help. I might not be crying from my eyes, but I am desperate for help. And finally, when there is no help, I decide to take the final step कि अच्छा अब तो नोटिस करोगे कि मैं कितना परेशानी में था right and this pain is so much to handle so much to bear इससे मर जाना ज्यादा आसान है so I am in a painful situation I decide there is no help coming there is no rescue I have taken the decision okay ending it is the thing now I am happy मैंने डिसाइड कर लिया ये मेरा लास्ट डे है या मेरे लास्ट 4 दिन है जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं I'll take my life so let me eat let me enjoy my activities because the problem that I am facing is going to be over soon so usually people who have made the decision the final decision to die they will appear very calm they will appear very happy and satisfied because उनका decision conflict वाला phase over हो गया. So this is how it goes and that is why I was saying that suicide is a complex thing. It cannot really be predicted क्योंकि बहुत सारे elements हैं जो add on करते हैं. एक individual उन्हीं सारे elements को लेके suicide ज्यादातर लोग उन्हीं elements को लेके suicide नहीं करते. But 100 में से एक होता है जो उन्हीं परेशानियों को लेकर succumb कर जाता है. तो ये क्यों हो जाता है कैसे हो जाता है इसका कोई एक सिंगुलर आंसर नहीं हो सकता आपने जो किया जिससे बात की डिटेल में just sorry for interrupting you ma'am but about my force after putting in so many years of service I would like to say ma'am we have a very well established system that if I am not looking into something or my company commander is not looking so the channel is very open ma'am and the numbers are circulated they have been displayed on the
walls and every notice boards and everywhere. That is wonderful, sir. And even there is a system that you can directly approach the top boss at Delhi. So वो तो ma'am system is very much in place. People are there, means if I'm not listening immediately, they can give a call or a WhatsApp numbers are circulated, and that those are mandatory to be displayed on the notice board or wherever in the barrack area, in the offices. That is there, ma'am. But even then, ma'am, means like that is very right that conflict stage is over and he's relaxed now that he's going to take a final decision. मगर don't ma'am, the forces के अंदर I don't feel my seniors and my colleagues, they may agree कि there are not professional issues which exactly makes a man to take this. I agree with you. There are certain, ma'am, because if somebody is not, leave is not an issue in BSF anymore. Very not that much an issue, not an issue at all, ma'am. But जो है ये, there may be personal issues which are not looked into. और जो है वो मैम हो सकता है। बिल्कुल सर। सर I need to close the conversation now because there's it's okay ma'am, it's okay. One input I want to give to Amity also and to BSF also. If we are talking so much about suicide and fratricide, you can organize for a training of selected leaders, even junior leaders, for gatekeeper training. There's something called gatekeeper training. Gatekeepers कौन है? Gatekeepers वो हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है इन इंडिकेटर्स को पहचानने में। WHO का पूरा प्रोटोकॉल है कि गेटकीपर्स की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, किस लेवल के लोग होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये गेटकीपर्स वो हैं जो सेंसिटाइज्ड होते हैं नेगेटिव बिहेवियर, सेल्फ हार्म बिहेवियर, सुइसाइडल बिहेवियर, फ्रैट्रिसाइडल बिहेवियर के अर्ली इंडिकेटर्स को पहचानने में। So I just wanted to give this input from my side. If you can think about organizing any such gatekeeper training for identified group of troops within BSF, that would be greatly helpful. Well noted. Thank you, ma'am. Yeah. Lecture. I think we have overwhelmed you with so many questions and serious discussions. On this note, ma'am, I'd like to first, extend our gratitude from AITD and our commandants on behalf of commandants. Thank you so much for that insightful session. Thank you for your wonderful words and wisdom. Thank you so much. It was a wonderful interaction. And I hope I have not offended any of you with whatever I was trying to explain. No offense meant, sir. I was speaking out of my experience, not undermining your domain knowledge and your domain experience. Because whatever we are trying to bring in, we as psychologists can be implemented only by the leaders. We cannot go to the troops and bring in this change. This comes through you. So thank you very much, sir. Thank you, Soumyadev. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you. It's a very nicely narrated, deliberated subject today. Thank you. So nice. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you. Oh, sirs, welcome back. Soumyadev ji. Yes, Ramesh sir. अभी मैम ने जो अभी क्लास लिया था, तो लास्ट में एक उन्होंने सेंटेंस बोला था रिगार्डिंग जो है सुसाइड एंड फ्रैट्रिसाइड केस के रिगार्डिंग कि इसमें अगर इफ यू वांट टू हैव एनी, अभी लंच टाइम हो गया है, तो इसमें जो है अगर कोई लेक्चर है इसके रिगार्डिंग या कुछ है आपके पास कोई मटेरियल है तो जस्ट यू शेयर इन दिस ग्रुप। आई विल एबल टू कोई मूवी टाइप का हो या कुछ इस तरह से हो, सो दैट वी कैन एबल टू टेल और ट्रूप्स और मोटिवेट कि नहीं इस तरह की चीजें नहीं हो, इस तरह के कुछ है मटेरियल तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। मैं इन एडिशन टू मिस्टर रमेश राम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज के पाठ्यक्रम था उनको थोड़ा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, तो सो दैट वी वुड बी बेनिफिटेड। The presentation I'm not sure if I can share, but I will ask Dr. Swati to share some, जैसे आप लोग ने मांगा है, if there are certain tips and documents that is there, that readings or perhaps material that could help, I'll definitely liaison with Dr. Swati. We have her mail ID as well.
and number. So I'll definitely liaison with ma'am and Yeah, we'll that come up presentation also quite educative. Sure, I'll ask if it can be shared. अभी तो मैं आपको full 100% नहीं बता सकता हूँ, because Selvamoorthy sir का ऐसा presentation was specially for for you, for your knowledge and to be shared. I will ask Dr. Swati that मैं कितना share कर पाऊँगा. Dr. Supriya sir, no worries on that. I think बहुत ही बहुत grim and very serious discussions have been happening, and it was very insightful. But for on that note, I think प्रमोद सर बहुत खुश हो जाएंगे ये सुन के कि आप लोग का थोड़ा लंच टाइम आज ज्यादा देंगे. I will, I think I see a lot of smiles on the faces. That's good to see that. So we will, in fact, today resume at 3:15. And once you come back, please, of course, it's great to see you in uniform. You come back, have a hearty lunch, and we will have a small reflection exercise before we move forward with practicing mindfulness. That is our next session. So hoping to see you back at 3:15, sirs. Please have a great lunch. Good afternoon, Good afternoon, Mahendra sir. Good afternoon, Nagendra sir, Antaryami sir, Vipin sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Manish sir. Pramod sir, good afternoon. आज पहली बार कैमरा में आज दिख रहे हो. आए नहीं सुबह से सर. सुबह से आपको देख ही नहीं रहा था सर. हाँ प्रमोद सर बीजी लगा दी, समझो ऐसा मत करो यार. नहीं प्रमोद साहब क्राइसिस हैंडल कर रहे थे. मूर्ति मेरी तो सर. यार इसने सोमदेव ने जो है एब्सेंट लगा दी. नहीं सर, ऐसा नहीं है. हमारा ऑफिशियल सेशन स्टार्ट होगा 3:30 से, बट आज we are starting a little early. We don't want to. I want to take this next 15 minutes कि हम थोड़ा relax करें. बहुत पढ़ाई हो गया है. We'll again go forward with practicing mindfulness again at 3:30. But before that, I want us to have a very relaxing exercise, and I want everyone to participate in this. यूजुअली फैकल्टी लोगों को नहीं पता होता है, बट कोर्स कोऑर्डिनेटर को पता होता है कि कौन कौन कैमरा पे नहीं आता, चुपचाप रहते. सो देयर विल बी कॉल आउट्स, सो प्लीज पार्टिसिपेट आज हम डेफिनेटली. कैमरे पे वैसे कम रहे हैं, ये बात आपकी ऑब्जर्वेशन तो है, सही है, कम रहे हैं. नो वरीज ऑन दैट सर. बट पर मेरे को पता है यूजुअली कौन कौन चुपचाप रहते. तो आज फॉर दिस एक्टिविटी, इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी. वी विल ट्राई टू स्टे एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज ये बहुत अच्छा होगा इन द सेंस दैट वील गेट टू नो वेरी क्रिएटिव आइडियाज, एंड वी विल गेट टू नो ईच अदर अ बिट ऑल्सो. बिकॉज ये जो एक्टिविटी है, ये मैं आइस ब्रेकर भी नहीं बोलूंगा, बट ऐसा भी है कि वील गेट टू नो थिंग्स दैट यूजुअली वोंट डिस्कस, फन स्टफ. So I'll share something first. Let me share my screen. And this is what I want everyone to. Okay, first, can you see on the screen now? Is my screen visible? Pramod sir, Murthy sir, visible? Yes. Let's visible. relax, reflect, and think. If I could turn back time, then I would learn. I would unlearn. Unlearn, yes. Mahendra sir, आपको क्या लगता है? What is this unlearn part? Unlearn means we have to speak. Right. Deliberations, brainstorming session. Yes, that is correct. You're right, sir. Or unlearning is a process like if it's something that if they have learned something, to learn something new also, we need to unlearn a lot of things. कि हमको जो पता है वो भी अगर हम if we are fixed, then we won't get to learn something new also. तो unlearn वो भी process है कि अगर कुछ हमको पता है already, then perhaps go back, reflect, and then yes. Correct. So ignition of all the dormant items in your mind. Absolutely. But I want to add here, I think unlearn means also discard the bad habits. Yes, correct. Also. Correct. Yes, exactly. And that is Antaryami sir, इसी point पे 1 minute, 2 minutes rather, I would give to all you commandants sirs and think about it. If you could turn back time, am I audible? Now you are audible. Okay, my screen. Okay. So sorry, there is a lot of net issues also going around because it's raining very much in Noida. So 1 second, I'll share my screen again so that it is there for your reference. There you go. Take 2 minutes. हम 2 मिनट लेंगे and we will share.
if you could turn back time, I would learn this, I would unlearn this. It could be any learning. It could be a skill. It could be an instrument. It could be a particular, I don't know, competency that you want. So I will share first because, you know, there's an exercise that I have done. It's a deep reflection, lagta hai, 2 minutes. I'll share. For example, if I could roll back time, I would learn how to play the piano. Because as I grew, you know, just with age, I learned to appreciate Western classical music a lot, and I found the piano to be a very fantastic instrument that is very dynamic. And now I hear a lot of piano compositions. So sometimes I feel I could roll back time when I was in class 10 and 11 and 12. We were all, you know, in the rat race. I wish I could go back and learn the piano then. And about unlearning, sometimes I wish I could unlearn how I converse with people, my conversation skills, because at times I speak very fast, which has been pointed out as a bad habit because I don't take into consideration that I'm speaking to a lot of people with different capacities and capabilities, and they might not be able to clearly hear me. So I speak fast. So one, I would learn this and unlearn a skill. So I would learn an instrument and unlearn a skill that I have. I mean, a skill that you know, bad habit, in fact, जैसे अंतर्यामी sir ने बोला. So 2 minutes of your time, and then I would please request responses. Take your time, reflect, and think. I think Sujit sir, Neeraj sir has also joined. Sujit sir, Neeraj sir, we are having a very welcome back, first of all. हमारा भी बहुत एक simple reflection activity है. And as you can see on the screen, it is there on the screen, कि if you could turn back time, what would you learn and what would you unlearn? It could be a skill, it could be a bad habit, it could be something that, you know, is neither of these two. Then we are taking some time and we'll share. 1 more minute and we'll start sharing. हाँ हुआ हाँ हेलो Seconds. Okay, so I'll now stop sharing and we'll have this discussion. मैं थोड़ा call out करने वाला हूँ. Manish sir. Manish sir, good afternoon. Are you here? सब कैमरा के ऑफ कर दिए the moment. सुजीत सर आप बताइए. Let's start with you. Sir, if you could turn back time, what is the one thing that you would learn and what is the one thing that you would unlearn? Sujeet sir. You're on mute. You're on mute, sir. Know how to Yes, yes, but your voice is echoing a bit. video is also disturbed. Oh, no worries, no worries, sir. No worries, no worries. We'll come back to you. Maheshwar sir, please do share.
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो सीखने के लिए मैं होशियारी सीखना चाहूंगा। सब कुछ सीखा, हमने ना सीखी होशियारी। तो होशियारी, अरे वाह। होशियारी सीख नहीं पाया। अगर कहीं बैक होगा तो होशियारी सीखूंगा। ओके। और अगर अनलर्न करना चाहें तो अपराइटनेस जो है वो नहीं रहता तो ज्यादा ठीक था। ओके उसको ओके, अनलर्न करना चाहूंगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। होशियारी बहुत वेरी यूनिक पॉइंट। व्हाई होशियारी सर? सडनली व्हाई डिड दैट कम टू यू? साइकोफेंसी अगर सीखता तो थोड़ा काम होता ज्यादा। ओके ओके, that is the reason why. Fantastic, man. Thank you so much. Rotella sir, all are just relaxing now. थोड़ा some discussion. रमेश सर आप बताइए। Still Pramod sir? Any like things that you have thought of, something that you learn and something that you unlearn? इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए अब. If you think too much, then you'll get into a huge analysis. I want to say. Can I add here? Mansingh, which is saying is very correct. बहुत जरूरी है। हम भी जो है मानसिंह के पार्टी के हैं। सभी को जो है थोड़ा बहुत चाहिए है। हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल रुके सूखे हैं इस मामले में यार। Mansingh sir, you want to learn Bhangra dance? Yes. Dance, especially Bhangra dance, because I am Punjabi and right. और मुझे नाच नहीं आता है बिल्कुल। I always stands outside of the company. अच्छा, so you feel socially excluded in parties and all. Most of the times. और over possessiveness जो है मेरा एक बड़ा weakness है। Can I like to add, sir? मुझे वीपी सिंह से क्लासेस लेनी पड़ेगी अभी। And over possessiveness. Over possessiveness, हर चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है मेरा लोगों से। Right. That बाद में sometimes it hurts. Right. Of course. Because there are certain. Yes. ऐसे पॉइंट हैं ये तो वास्तव में दिमाग में आते हैं कि यार ये कर लेते वो कर लेते तो ये हो जाता फलाना। Right. ना, यदि बीएसएफ में आना था तो जस्ट बीएससी के बाद में आना चाहिए था शुरू में। ओके राइट। कई हमारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमने नहीं किए हैं, कई कोर्सेज हैं। Because why do you say that? Because you joined the BSF and never got the time? हाँ, फुल माइंड से आना चाहिए था। Right. तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो छोड़ दिए हैं, उसका जो है खामियाजा पूरे कैरियर में जो है झेलना पड़ रहा है। झेला हुआ है तो झेल चुके हैं। सोमदेव जी बताइए सर। आई एम ऑडिबल? यस सर, यू ऑडिबल रमेश सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी शायद मेरे पास। हाँ यस सर, बताइए। तो आप समय की जो बात कर रहे हैं कि थोड़ा अगर पीछे होते तो क्या कर सकते हैं हम? यस सर, एकदम नॉर्मल डिस्कशन, या प्लीज। हाँ, नॉर्मल डिस्कशन। तो एक कितना समय पीछे जाऊं? मतलब बीएसएफ ज्वाइन करने से पहले की बात कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स एनी टाइम। पूर्व जन्म में मत चले जाना सर। नहीं जाने दो, पूर्व जन्म में भी जाने दो। देखिए, अगर इसमें आदिकाल में मत चले जाना भाई। सोचिए, शेयर एक। यस प्लीज। अगर इसमें अगर बीएसएफ से पहले की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मैं बीएसएफ के बजाय जो मेरी चॉइस थी उसमें जाता, रादर रेलवे में जाता। और उसमें व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम कि जो हमारी ख्वाहिश थी कि रेलवे में बहुत सारी चीजें ऐसी जो थी कि एक्सीडेंट वगैरह से लेकर के बाकी चीज थी, तो जो वैकेंसी वगैरह निकलते थे उस समय, तो वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर पहले निकला करती थी। राइट। और भी बन सकते थे। हाँ, तो रादर उसमें हो भी गया था मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉल लेटर कुछ गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से नहीं हो पाया। ये तो मेरे सेकंड प्रायोरिटी हुई थी, तो ये आ गया तो मैं आ गया, इसमें वो बात अलग है। बट नाउ
अब इसको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें एक प्राइड है, एक सम्मान है, एक गौरव है, और दूसरी चीज है कि इसका एक वैल्यू भी है अपना, कि जहाँ भी आप जाओ तो उसका एक रिस्पेक्ट है। यस सर। बेशक हम वहां पर पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज है वो चीज वहां पर नहीं है। राइट। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो है बीएसएफ में जब आ गए तो हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि अगर बीएसएफ में नहीं आए होते तो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा कई होता है कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में गए होते, या हम एज ए स्पोर्ट्समैन जैसे कि धोनी है और जो उस तरह की चीजें होते, बट सभी का अपना अपना एक व्यू है। राइट राइट, तो ऑफ कोर्स। मेरा तो यही मानना था कि मैं उसमें जाता, बट नहीं हो पाया, और फ्यूचर के लिए बात अलग है। नहीं, कोई नहीं रमेश सर, I mean I definitely get up, and thank you for sharing. And it's a very learning unlearn process. Yes, Mohan sir, please do share. At the age of 50, there is many things to unlearn and little to learn. Right. Learn to invest early. I should have learned to invest early. Fantastic. Right. Unlearn procrastination. That's part of my life. Right. Success is opposite of failure. I should have learned. Problem is bad. I should have unlearned it. Right. To replace bad habits with good ones. Thank you. To learn and unlearn. Okay. Yeah. Okay, Murthy sir. Right. No regret you have as No such. regret. कुछ भी ऐसा सर आपको नहीं लगता अगर same thing. No. 20 years ago if I had learned this instrument or maybe I had learned this skill? No. You're very satisfied, very content. Still time is there. We can live up to it. Yes, of course you can. You always have the time. Yes, I agree 100%. No regret. Actually, I'm somebody, I don't look back. I live in a present time, you know. Right. पीछे देखेंगे तो दुख होगा, तो ज्यादा देखना नहीं है. I'm looking forward. Whatever regret, if you feel, then you have enough time now. You can still develop. Sure. And sir, more than I think ये regret का भी बात नहीं, कभी कभार आ जाता है, but regret से भी ज़्यादा sometimes we wish that ये सीख पाते थे, but we don't regret also कि ठीक है हो नहीं पाया तो क्या हुआ. वही that was the मोहन सर, I can assure you, thank you first for sharing. आपने जो बोला invest early करने का, tomorrow in fact हमारे personal finance management का session है. I hope you get a lot of takeaways. A lot of people have ended up making mistakes often, because they don't invest early, and now the world is so financially aware. आज 15-16 साल के बच्चे बैठ के they became financial influencers and they give financial advice because they have cracked that system and how I can get money beyond that also. But tomorrow I hope the personal finance management ke session say you do get insights. You will be given certain ways that you can still invest and get best out of it till your retirement, post retirement also. So but thank you for sharing. And I'm sure you'll have opportunities further also for that. Sujit sir, anything to share? मैं शेयर करूं? हाँ अरुण सर प्लीज. स्वामी देव जी, मैं बचपन से जो है ना हारमोनियम सीखना चाहता था. वो See, I knew one musical instrument is a very common answer. हारमोनियम सीखना चाहते थे सर. Why हारमोनियम? चूंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो जो हारमोनियम बजाते थे लोग बड़ा फैसिनेट होते थे उसके प्रति लोग. अरे कितना बढ़िया बजा रहा है, कितना अच्छा बजा रहा है. तो मुझे लगता था कि यार ये हारमोनियम बड़ा अच्छा चीज है, उसको सीखना जरूरी है. एक बार सीखेंगे जरूर कभी. और पान खाने का भी अभी भी सीख सकते हो. You can still learn it. जब भी समय मिलेगा मैं तो कोशिश करूंगा, एक सीखूंगा जरूर. लेकिन प्लीज डू करूंगा. और अनलर्न में जो है मैं एक्चुअली अपना जो टेम्परामेंट जो लूज कर जाता ना, उसको अनलर्न करना चाहूंगा कि ये हट जाए, मेरे कैरेक्टर से खत्म हो जाए. हालांकि मैंने बहुत कोशिश किया है, इसमें मेरा कंट्रोल है काफी, लेकिन समटाइम्स जो है कुछ चीजें ऐसी आ जाती है सामने, तो टेम्परामेंट लूज हो जाती है. वो चाहते हैं कि यार वो अनलर्न हो जाए, मतलब किसी तरह चले जाए, हमारे स्वभाव से निकल जाए. Sure. And that you're identifying as a personal obstacle also, I guess. Yes. You've realized. Right. Thank you so much. I think Nikita madam is here, but before that I've asked Sujit sir. Sujit sir, one last response from you. Please. very difficult question to answer. It is. क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने आज तक सीखा उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मैं अनलर्न करना चाहूँ.
मुझे लगता है जो भी है वही मुझे सुजीत कुमार बना रहा है, वही मेरी आइडेंटिटी है, वही मेरी पहचान है। जो मैंने सीखा है आज तक वो तो मेरी थापी है एक तरह से। जहां तक नया कुछ सीखने का सवाल है तो मेरे लिए हर एक दिन नया सीखने के लिए ओपन है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में कुछ डिजाइनिंग होती है। I started very late, but now I have started learning it day by day. Fantastic, fantastic. All the best with that, sir. ताकि कभी भी मेरे लिए कोई दिन ऐसा है जबकि मैं चाहूँ कि आज सीखूंगा और नहीं सीख पाऊंगा। Every day is new day. Sure, sure. To begin with. Right. और sure. चीज जो मैंने सीखा है वो आज तक उसमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं भूलना चाहूंगा, उसको पीछे छोड़ना चाहूंगा। पर्सनल ट्रेट्स तो आप मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, ट्रेड्स को छोड़ना पीछे, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ डू अवे विथ लर्निंग। Maybe unlearning something about yourself might, sir, help you know a bit more depth on that personal trait. That is what, maybe, you know, when you learn something more about yourself also, then you will get the space to unlearn. So traits, you're right, it is very difficult to change, but you can get more clarity on it. So perhaps, if not change eventually, maybe you can modify it. That is one way to look at it, or make certain, you know, not entirety any changes, but make, you know, certain interventions accordingly over time. So definitely, but it's a very beautiful. Yes, sir. Yes, sir. जहाँ तक नया सीखने का सवाल है, नया तो आप रोज सीख सकते हैं, रोज। Sure, sure. Learning is a lifelong अपने continuous आप को process. कॉर्नर में पुश करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, पर्सनल कंफर्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू कैन लर्न एवरी डे। Sure, sure. Of course, of course. मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, Ashok sir. कि जो चीज प्रकृति ने हमें दी है उसको क्यों छोड़ना? अगर हमारे नेचर में बाय बर्थ जो चीज मेरे नेचर में है, चाहे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, चाहे कूल माइंडेड हूँ, उसको क्यों चेंज करना? Sir, some things I guess you are not born with. Certain things are behaviors which are learned. You learn, and it is by factors which are beyond your control. For example, I don't think anyone is born. ये मेरा खुद का मुद्दा है. Anyone is born short-tempered. I think with the external behavior, with observations, with seeing other people around also, you develop that habit. But you are born with certain traits, and it can become worse or it can become better. That is what I mean. आपने बिल्कुल सही किया, कहा कि वो चीज हो, लेकिन वो चीज कब कैसे डेवलप हुई है वो मुझे पता ही नहीं चला। Yes, it is. Yes, it is true. तो उसको मैं It क्यों that छोड़ना? requires a lot of self-reflection. Actually, that is why हमारे जो गुरु साधु लोग थे जो self-reflection करते थे, it was a very elongated process because it took time to discover. मेरा तो खुद का मानना है कि एक वास्तविकता में जियो और हर क्षण को एंजॉय करो। बाकी जो है फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो पीछे छूट गया है उससे कुछ सबक ले सकते हैं, लीजिए, नहीं तो बस एंजॉय कीजिए लाइफ में, और क्या है। सर ये मेरे लिए कोई रिग्रेट नहीं है। एके सर, गुड आफ्टरनून। सर आ गया भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर हियर। Yes, Gurinder sir. माय पॉइंट इज कि आई फील कि समटाइम वी आर बाइस्ड और वी आर सिलेक्टिव। अभी जैसे टेम्पर की बात हो रही थी, क्या चुप करना है? आप ऐसे इशारा कर रहे हैं। नहीं, कौन बोल रहा है आपको चुप करने के लिए? प्लीज गो अहेड। आप ऐसे कर रहे हैं। No, that is me. No, please. माय पॉइंट इज कि जो हम बात करते हैं, मैं कभी कभी आई थिंक अपॉन इट कि जो हम कहते हैं लूज टेम्पर, डू वी लूज टेम्पर एट होम? डू वी लूज आवर टेम्पर इन फ्रंट ऑफ आवर सीनियर्स? डू वी, इजंट इट कि we lose temper on our juniors only? Right. Do we lose temper on our children? Is it equal that the amount of temper we lose in our workplace and at home or to our seniors? तो ये मुझे लगता है सिलेक्टिव है। जहां पे हमें लगता है कि ये चल जाएगा, we lose temper. जहां पे नहीं चलेगा, we never lose temper. Right. At home, we cannot lose temper the way we lose our temper at workplace on our junior. तो इसमें biasness है, ये बिहेवियर नहीं है, ये सिलेक्टिव है। ये इसी बात पे इसमें बहुत करता हूँ, मतलब हम कमजोर के ऊपर लूज टेम्पर कर जाएंगे, जो हमसे ऊपर बड़ा है उसके ऊपर हम नहीं, we cannot afford it, we can't afford losing temper daily on our children or at home with our wife.
या विद रिलेटिव्स, मतलब मैं मतलब इसको ऐसे समझता हूँ। गुरिंदर सर तो सही है। हाँ, इसी गुरिंदर सर इसी बात पे two things. One, I have taken up Dr. Nikita's time and she is not happy with it. I'm sure we will start off with our session. But Gurinder sir, of course, our upcoming session practicing mindfulness, I hope you have some takeaways. And we will tomorrow also we have a session anger management as well. And this will, I hope this specifically addresses your concerns as well. And if at least kuch insights mil jaye, if we can channelize our anger, how it in some positive way, hopefully you'll have some takeaways on that as well, Gurinder sir. We'll continue our fantastic discussion. I'm sorry I have to cut short. AK was telling na, AK was telling, that's why I said. No, please. Every ये बात ही मुद्दा. We started off with this just a general discussion because we are studying so much. Again, we'll go off with a new session. Yes, Pramod sir. अनलर्न के ऊपर वैसे कोई जो है रिसर्च होना चाहिए या कई रिसर्च इसके ऊपर हुई होगी, right? ठीक है ना? I will definitely guide you to that. करके इसको कैसे ठीक किया जाए? Sure. To modify our behaviors. Sir, इसका अच्छा answer will be given by the next person who is coming with our facilitator, Dr. Nikita. If you are here, she is the person with the expertise. I am so sorry to hijack some of your time. It's okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मशीन बनाओ यार, वो टाइम मशीन टाइप की. Good afternoon, ma'am. I'll hand over the proceeding. I hope you were hearing some of the fantastic discussions that was happening. Yeah, and I was listening to all our commandants and they were having so wide opinions and, great views on that. So it's wonderful to talk to each of them. So first of all, I like to, extend my heartiest gratitude to all the BSF commandants for being at the borders, and sacrificing so many things of theirs, and safeguarding all of us from that. So, Jai Hind. So I'll just share my screen for that matter. 1 second. Soumyadev, is it visible? Yes, it is visible, ma'am. Just put it on full screen. I think then it would be better. Yes, it is now. Okay. So I would like to start my session, as all of you know that the session is going to be on a topic called practicing mindfulness. So before starting my session, I would like to start up with a small quote which I dedicate to all my BSF commandants. अपनी नींदों को त्याग करके हमें चैन की नींद सुलाने वाले, अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमारी रक्षा करने वाले वीरों को हम शत शत नमन करते हैं। जब जब भी हमारी धरती पर संकट के बादल छाए हैं, इन वीर शहीदों ने जाबाजी से दुश्मनों से लड़कर बड़ी कुशलता से सामना किया और हमारी धरती माँ की रक्षा की है। So Jai Hind to our commandants. So today we are going to have a session on practicing mindfulness. Sorry to interject, ma'am. Inderpal Singh ji, please. मैम एक तो प्लीज जरा पिछली स्लाइड पर चले जाइए आप जी। एक तो जो आपने अशोक का जो ये लगाया हुआ है मैम, इसके नीचे सत्यमेव जयते होना चाहिए जी। ये आपने पुराना लिया हुआ है बेसिकली, अभी हमारा जो है सब कुछ ये चेंज यहाँ पर होगा सत्यमेव जयते और नीचे जीवन पर्यंत कर्तव्य ड्यूटी टू डेथ की जगह प्लीज चेंज इट फॉर द नेक्स्ट। आपका सत्यमेव जयते लिखा है सर नीचे? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा हुआ है इसमें। नहीं यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ये कर्सर चल रहा है। BSF के ऊपर, BSF और अशोक एम्बलम के बीच में यहाँ लिखना है। ओके सर। और ये ड्यूटी टू डेथ की जगह जीवन पर्यंत कर्तव्य लिखना है। हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में। नोटेड सर। बहुत अच्छा, आप में जितना साहस और वाणी की ताकत है, आप तो पूरा हिला देंगी सब पूरा देश को। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। So we'll start our session today on practicing mindfulness. So basically I like to briefly just mention about the agenda of today's session. So we are going to discuss about certain concepts of mindfulness. We are going to revisit the whole concept of mindfulness. जैसे कि हम देखते हैं our fathers, grandfathers, great grandfathers, the concept of mindfulness has come from a very Vedic concept. जैसे आपने सुना होगा, our ancestors used to say कि ध्यान से करो ये काम, ध्यान. So basically ध्यान was something in the earlier times
which we used to call mindfulness. So now we are going to revisit the concept, modern concept plus the traditional concept of mindfulness again. Then we're going to discuss here about the certain concepts of mindfulness foundations, that what actually makes mindfulness, what is mindfulness, how it is originated, how can we inculcate it, what kinds of attitudes we can develop and inculcate in our own self to develop more mindful attitude thinking. Then we are going to do a complete body scan. जैसे आप सुबह की session में Dr. Neha Jain used to, give you a good mindful meditation session in the morning at 9. So we are going to go again a concept of mindfulness meditation, and we're going to practice all of us over here. So we're going to go a complete body scan from top to bottom and relax our mind, relax our muscles and everything. So we will have a practical sessions also. Then there are going to be certain tips that I'll be telling you from a perspective of a counseling psychologist, because I'm a psychologist which is practicing. So I'll give you certain tips and strategies in that how can you inculcate mindfulness. So, sir, it would be a very interactive session because I would really like to learn from you as well from a mindset of a commandant. So we are going to start from the fact that what is mindfulness. तो अगर मैं आपसे पूछूं what do you think, what is mindfulness as per you, sir? Anyone can come up and give their deliberations on the same. Being fully aware of what you are thinking, what you are doing, what you are practicing. All right. In mind, in your body, in both the aspects. Okay, very good. Thank you so much, sir, for your deliberation. Anyone else would like to tell about that? What is mindfulness as per them? Taking care of all aspects while executing any task. Okay, that's perfect, Virendra sir. Thank you so much. You know yourselves more. Sorry, sir. Can you come again? No, knowing yourself more. Okay, fine. That is mindfulness as per you. Perfect, sir. Perfect. Mindfulness may be giving focus intensely aware of what one is sensing and feeling at that moment. So Supriya sir has actually come to a very, very closer thought of actually what is mindfulness in psychology. Thank you so much for sharing, sir. Anyone else would like to give their deliberation that what can mindfulness be as per your perspective? Because all of our perspective can be very different. Mindfulness means the Yes. positive action, positive steps to in the interest of the public or the troops. Okay, so maybe And action must be very justifiable. Self-consciousness. Okay, self-possessiveness, all right. Consciousness, not possessive. Okay, conscious. It is basically awareness. Aware about your surroundings. That is mindfulness. Right. Sir is also coming closer to the concept. Sanjay sir, very well said. For me, it's basically using your wisdom in doing anything by being aware of yourself, your environment, and others. Perfect. That is mindfulness for me. Ashwani sir ne bilkul ekdam definition exact, sir, you have mentioned. It's perfect, sir. It's perfect. इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, घर से बाहर निकलते ही माँ बोलती है ध्यान से जाना। जी बिल्कुल ध्यान से जाना। पिताजी किसी को पेपर देने से पहले बोलते बेटा पढ़ तो तूने सारा कुछ लिया है, ठीक है, पेपर को ध्यान से करना जी ठीक है नहीं। So that is called mindfulness. Right. You can have knowledge, you can have skill, you can attitude, but all these comprise when you use your brain in using that with the wisdom. Right. By awareing, making your aware self by yourself कि आपके क्या-क्या अच्छे points हैं, दूसरों के क्या-क्या अच्छे points हैं, and आपके surroundings में क्या हो रहा है. जी. It's the mindfulness. इसमें मैडम जी सर, इंटेलिजेंस भी जुड़ गया इसमें, जी केयरफुलनेस भी जुड़ गया, डेडिकेशन भी जुड़ गया इसमें, और जोश टेम्परामेंट भी जुड़ गया इसमें. राइट. मतलब पूरा पैकेज यही है. बिल्कुल सर, फुल पैकेज डील है पूरी.
where, as Ashwini sir also mentioned, it is not about our own self, you know, it is about our environment also, that how conscious are we about ourself as well as the environment. Sab kuch promote, sir, it's a big package and holistic thing. मैडम प्लीज जी सर, प्लीज। माइंडफुलनेस मीन्स कि जब हमारी सारी इंद्रियां जब एक साथ मिल करके कोई भी काम को करने के लिए तैयार रहती है, दैट कॉल्ड माइंडफुलनेस विथ फुल सचेतन। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, एब्सोल्युटली वेल सेड। जब हमारी सारी इंद्रियां किसी चीज को करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहती हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वेल सेड सर। परफेक्ट अजय सर, परफेक्ट। Okay. Anyone else would like to give their thought about that? मैम, ये जो स्क्रीन आपने लगा रखा है, इसके बैकग्राउंड में ये जो 4 पत्थर रखे हैं, ये क्या शो कर रहा है? सर अशोक सर, चलिए आप बताइए कि आपके इंटरप्रिटेशन में ये 4 पत्थर क्या शो कर रहे होंगे? मेरे हिसाब से तो ये है कि हमेशा दिमाग पे कुछ न कुछ दबाव रहता है। अच्छा। कोई न कोई चीज दिमाग में चलती रहती है, और जब एक काम आप करते हैं तो दूसरे काम के लिए दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। बिल्कुल सर, आपने हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग। सर आपने, अशोक सर, आपने एकदम सही बात पकड़ी। बिकॉज व्हाट माइंडफुलनेस, बिकॉज आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आपने जो अपना परसेप्शन बताया इन 4 पत्थरों का वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। सो यही आप जो बोल रहे हो कि जैसे हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, यू नो, वी आर ऑलवेज ओवर ऑक्यूपाइड विद सर्टेन थिंग्स गोइंग इन आवर हेड. So that is the only concept that if we start practicing mindfulness, which I'll explain in a more scientific way, जो ये 4 पत्थर एक के ऊपर एक हैं, probably it will be more systematic and it won't bother us and we'll be able to efficiently do our work. आप समझ रहे? because काम तो सर खत्म ही नहीं होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, not professionally even personally भी। आप लोग तो borders पे रहते हैं, तो आप पे तो उसका भी है, plus your family, you know, you're staying away from your family, घर के 100 चीजें होती हैं, so the pressure is never ending, right? So that is why ये 4 पत्थर ये बता रहे हैं कि आप पे प्रेशर तो हमेशा रहेगा, पर इसी में से निकल करके आना है, हमें आगे निकलना है। जी सर जी, माइंडफुली हमें आगे निकल के आना है। थैंक यू। थैंक यू शोक सर। ओके, एनीवन एल्स? ऑलराइट, सो परफेक्ट। जैसे कि आप सबने बताया, so probably I'll give an amalgamation of everything as a psychologist in a more scientific way. Mindfulness is basically awareness of the present moment, right? It is using your own senses, which 5 senses we have, and fully engaging with a conscious mind to attend whatever we are doing. Most of the time what happens is we are doing so many things, but we are not engaging completely in that activity. जैसे कि हम ये सेशन ले ले, लॉगिन सबने किया है, शायद कैमरा भी सबके ऑन है, but I don't know how many of you are completely engaged in this conversation. You're getting my point? इसका मतलब अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को completely engage करके रखना with your conscious mind. हमारे 3 होते हैं, conscious, subconscious and unconscious mind, 3 levels, right? So basically engaging with a conscious mind and using all our senses to attend whatever we are doing. Because जैसे अशोक सर ने बोला that, you know, we keep on having so many things over occupied, we are always over occupied. So that is what mindfulness teaches us, that whether we are over occupied also, we should completely engage ourselves in one particular thing at a time. ये नहीं कि 100 चीजें एक साथ ले ली, आप समझ रहे हैं? Conscious mind is something which we have to attend one thing at a time. Now it is taking time to notice with curiosity your feelings, your thoughts and your responses and completely fully experience the present moment. कई बार क्या होता है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी हम, you know, when we either you are at the borders or you are at your house, you have so many things going back in your head. इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, you know, then you have so many battalions to handle. So a lot of things are in your head, one after the other. So mindfulness says that you take out time to feel your thoughts, your responses, and actually experience them completely. अब इससे होगा क्या? जैसे सर ने हमें बताया, it will help us to connect to the world and to our own self. ना कि सिर्फ हम अपने आप को या अपने अंदर के कॉन्शियस माइंड को अवेयर कर पाएंगे, बल्कि अपने आसपास भी विल बी मोर अवेयर एंड विल एक्सपीरियंस इट. आप
आप भरोसा नहीं करेंगे सर, I've been practicing this for a very long time and it gives so good results if you start practicing mindfulness on that basis. So now I'll show you a small video on the same, which is going to explain that what mindfulness is in terms of handling our conscious mind. Just as exercise helps us take care of our bodies, mindfulness is a skill that keeps our minds healthy. Mindfulness helps us perform at our best and better navigate the inevitable ups and downs of life. Mindfulness is noticing and being curious about what's happening right now. It's the opposite of being on autopilot, when our bodies are doing one thing and our minds are somewhere else, often thinking about the past or worrying about the future. When we're mindful, we engage our senses deliberately and we really take in the things that we can see, smell, hear, taste, and touch. Just as we can build our muscles by going to the gym, we can build our mindfulness muscle through regular practice, known as meditation. All it takes is a few minutes a day to see the benefits. So find the time. Your mind will thank you for it. So, you know, as it is saying that our mind is always on the autopilot mode. So what is an autopilot mode is where our mind is doing one thing and our bodies are doing something else, or vice versa. So mindfulness is basically coming out of that autopilot mode where our mind and body are synced, right? ये नहीं हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. We are completely engaging in the right kind of things that is happening at the moment. So as it was mentioned that autopilot mode, that sometimes our bodies are doing one thing and our mind is doing something else. So generally when we are on autopilot mode, it is completely without awareness. कई बार हमें पता ही नहीं होता that what actually is happening, right? We are thinking something else and doing something else. So we are not consciously aware of what we are doing. दिमाग में चल रहा होगा that next time I have to take a meeting of so many people, and then you know, at the other side we are thinking about our families, बच्चों की पढ़ाई, wife से झगड़ा या जो भी है, so many things going in our head, right? So autopilot mode generally comes without awareness. आपको पता भी नहीं चलता. Second thing is it is unintentional. You are not doing it intentionally कि मैं सोचूंगा कुछ करूंगा कुछ नहीं. It is a completely unintentional process. Your body is responding to it on its own, right? Then it is unconscious. आपको पता भी नहीं होता that you are on autopilot mode. Why? Because we are not introspecting. We are not thinking about what we are actually feeling, what we are sensing. We are not using our senses. We are engaged like a machine all the time. Then autopilot mode is very reactionary. So there is a difference between reaction and response. What is reaction is? Reaction is that we are thinking about the positive and the negative outcomes. But response is we are actually doing the pros and cons and doing in a positive manner. And autopilot mode is completely effortless. हम कोई effort नहीं लगाते हैं that our bodies are doing something, our mind is somewhere else. It is a very effortless process, right? But important thing to understand is it is without awareness. हमें पता ही नहीं होता that actually our mind is somewhere else and our bodies are not responding in sync to it. Now, the foundations of mindfulness. Being in the present moment, what should we do to being in the present moment and being conscious about it? सबसे पहला तो we have to start being non-judging. How can we practice mindfulness? First is non-judgmental. कई बार intentionally or unintentionally we have an attitude, we start judging the other person, whether it's a family member or whether it's a colleague or whether it's a superior boss also. We say that अरे यार ये तो ऐसे ही हमेशा करता है, इसका तो यही तरीका है, you know. Then it is not practicing mindfulness. You are having a judgmental approach. Second foundation is patience. You know, if we want to practice mindfulness, it is not going to come in a day. आपको मैं बताऊं, एक दिन में हम नहीं सीख पाएंगे. So it requires a very patient attitude. You know, it comes with time. Third is beginner's mind. आप हमेशा ये सोचिए कि we are going to start with something new. जैसे कि क्लीन स्लेट एक छोटा बच्चा होता है, उसका माइंड एकदम क्लीन स्लेट होता है. Nothing is written in that, right? So basically it's a beginner's mind, you know. You need to start doing fresh. Then third foundation of mindfulness is trust. You need to start building trust on yourself as well as the other person and your environment.
जब तक हम अपने आप पे या दूसरे पे भरोसा करना नहीं सीखेंगे, देन इट कैन नॉट हैपन. देन नॉन स्ट्राइविंग, इट्स अ कंप्लीटली नॉन स्ट्राइविंग अप्रोच. हम कुछ स्ट्राइव नहीं करना चाह रहे. इट इज नॉट समथिंग दैट ये टारगेट है, ये अचीव करना है हमें, नहीं. इट इज अ प्रोसेस. वी हैव टू जस्ट फ्लो विद द प्रोसेस. प्रैक्टिस करते जाना है उसको. जैसे आपको मैं अगर बताऊं, मैं 15 सालों से अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 6 साल बाद कहा कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ो माइंडफुलनेस. नहीं, आपको ओरिएंटेशन नहीं, रिजल्ट चाहिए. इट इज फ्री फ्लोइंग. और आपको अपने खुद के बिहेवियर में यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर reactions, your responses. Then start accepting other people more. हम कई बार क्या करते हैं, we start having so much expectations that हमारी acceptance ही नहीं रहती है. हमें लगता है हमने तो ये किया ही नहीं है, we can't do anything wrong. उसकी गलती है, उसने ये किया होगा. So that is not a mindful attitude. It is not at all. Then let go. Most of the things we keep on taking to ourselves. हम पकड़ के बैठे रहते हैं. ये कैसे हो गया, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर लिया, मैं इतना परेशान था, पीछे फैमिली का भी इतना प्रेशर है, ऐसे. you have to let go that negative emotions. And it only happens with the breathing exercises. Inhalation, exhalation. Mind को relax रखना है और चीजों को जाने देना है. The more you will keep the negative emotions with you, it is actually going to affect your mental health. Then a very important concept, if you want to say something in the middle, you can please interrupt and say, because I want to keep it interactive. Is there any question or anything? You are most welcome to please talk about it. So mindful eating. अब mindfulness सिर्फ practice करने से तो नहीं होती, जैसे हम meditate करते हैं, उसके करने के बहुत और तरीके भी हैं. क्योंकि when you are at the borders, you can't practice meditation all the time. So now mindfulness eating is using your senses to practice meditation. तो mindful eating क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, it is also practicing mindfulness. You enjoy the taste of the food. खाना खाते हुए भी हम खाना कुछ खा रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, नहीं. खाना खाना मतलब just enjoy the food. What is the taste. अगर हम दाल भी खा रहे हैं तो दाल का स्वाद कैसा है, इसमें कौन कौन से मसालों का स्वाद आ रहा है, that is mindful eating. Then eat when hungry and stop when full. ऐसा नहीं है, mindful eating का मतलब ये होता है कि when you're hungry then eat and when you are done stop it. ये नहीं है कि you're emotionally eating कि हम बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में, we'll keep on eating and eating. No, when you are hungry eat, when you are not stop that. Then learn how food affects your mood and energy. आप जो भी खाते हैं, आप जैसा भी nutrients खाने से लेते हैं, it completely has a direct relation with your mood and your energy, right? So learn how food affects your mood and energy. Then notice the emotional choices. आपकी जो भी emotional choices हैं, you just notice it that this probable situation makes me more anxious or this situation makes me more nervous. So आप उसको टाइम दीजिए नोटिस करने का. ये नहीं है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, छोड़ो यार, मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना. नहीं. If you have any negative emotion, pay attention to it. Think about it and find out that what is the reason behind it, not to avoid it. Then control the cravings. जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, we generally become emotional eaters. We eat a lot or we don't eat, right? So we have to control that cravings when we are eating mindfully. Then खाने के साथ एक बहुत अच्छा relationship होता है. It's a very positive relationship that we have. So try to take healthier choices while you're eating. Try to eat less of unhealthy food because our mind is eventually going to take all those things that we are eating only, right? So जैसे बोलते हैं ना सात्विक भोजन, सात्विक खाना, तो वो क्यों बोलते हैं? मतलब I like to ask you, any one of you, that some people says that you should eat healthy. Why do you say that for your mind? Is there any relation between eating healthy और सात्विक खाना और हमारे mind में कोई relation है as per you? What do you think? हम खाने से और आपके व्यवहार से डायरेक्ट रिलेशन है मैम. जी सर. हमारे बहुत पहले से कहते आए हैं, सात्विक व्यवहार सात्विक खाने से आएगा और तामसिक व्यवहार तामसिक खाने से आएगा. ठीक है नहीं से. एंड सात्विक खाना आप आप नोटिस करेंगे, जो नॉर्मली जनरली वेजिटेरियंस होते हैं वो बड़े नॉर्मल से रहते हैं. एंड जनरली जो लड़ाके और एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, नॉन वेज फूड एंड दैट काइंड ऑफ थिंग.
तो ये खाने का डायरेक्ट रिलेशन है मैम, और खाना किस प्रोसेस से बन रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैम. Absolutely. Ashwini sir, you are a vegetarian or a non-vegetarian? I can take anything. Okay. So I like to ask you, matlab, as you eat both, because I am a vegan, I'm a, even not a vegetarian, I'm a vegan. So I don't know कि जब आप vegetarian खाना ज्यादा खाते हो या non-veg खाना ज्यादा खाते हो, what kind of temperament do you have in your head? मतलब जब आप सब्जी रोटी खा रहे हो, जब आप मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ मैम. जी सर. When you take a vegetarian food, it is easy to digestible. Right. ज्यादा मसाले वाले खाने से आपको पेट में बड़ी शांति सी आती है जिस दिन आपने वैसे खाया खाना, एंड आप बड़े नॉर्मल से कूल, ऐसा लगता है पेट में बड़ी ठंडक सी पड़ी हुई है और दिमाग भी बड़ा शांत सा रहता है. एंड व्हेन आई टेक 1-2 पेग ऑफ माय रम एंड हैव वेरी गुड चिकन टाइप ऑफ थिंग, पेट में भी गड़बड़ करता है और एनर्जी भी ज्यादा होती है. यस मैम. सो इसमें एक टेक है मेरा, जो एक तो इसमें लिखा माइंडफुल ऑफ ईटिंग, यू स्टॉप व्हेन फुल, लेकिन इन केस इट्स टेस्टी, यू आर रिलिशिंग, यू आर एंजॉयिंग द फूड, एंड देन यू कीप ऑन ईटिंग इवन व्हेन योर स्टमक इज फुल because it's so tasty. Right. So will it be counted as mindful eating? No sir, because then if you're not hungry and you'll keep on eating, it is called emotional eating. Why? Because you're not eating. Enjoying that food also, na? Enjoying is fine, but your stomach will say it na कि भाई बस अब पेट भर गया, अब now the indigestion will start. So enjoying के बाद sir another process will continue. So it is not mindful eating, it is emotional eating. Even it is overeating. Ma'am, it is overeating. But you are emotional with the taste of the food because it's so tasty. You love that. That's an emotion which makes you eat more, sir. Sir, मैं ये कहूँगी, it depends upon your digestion system also. If your digestive system is strong, then even if you're eating a little bit more, it gets digest. But madam, sometimes it also increase happiness also due to it is also proven fact that that chemicals like serotonin and dopamine, like those chemicals that give happiness. So that doesn't mean that good food are not give happiness. So it is also good that sometimes person should enjoy good food and company. Absolutely. Not sometimes, all the time you should enjoy the food, whether you're eating veg or non-veg. I would say that it is important to enjoy the food. अगर आप स्वाद लेके खाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं स्वाद लेके खा रहे हैं इंसान, then it actually affects your nervous system as well as your, you know, as you mentioned, our happy hormones like serotonin, dopamine. It releases more oxytocin in your body, which is directly a happy hormone. हमें अच्छा लगने लगता है, बोलते हैं ना good factor, feel good factor. That happens. But I have a question for all of you, because you know food is directly related to ki you are always posted in an extreme temperature, either it's too cold or it's too hot. So how do you manage that thing as a commandant? Is it difficult for you? Madam, just I will narrate one past incident. Please. Just I was in high altitude and being deputy commandant, though deputy commandant, I was told by the commandant to go and take the charge as that IG Kashmir and next to him PSO Kashmir will visit, because as that place being taken over from Baramulla frontier. And they landed at my post. That was Pyar. That name was Pyar. And it was really a Pyara place. And as Nilam Valley means Kishan Ganga, when entering to Pakistan, it is, they are called it is Nilam. So Nilam Valley was totally visible from that locations, and one lake at our hinterland, that is Nilam Lake, and that lake was a beautiful blue lake that is also visible from that place. And the pilot came to us with passengers, and once he see me, once pilot seen me, he just told me that he was the saver of our helicopter at our Niru locations for 4 days during when they could not take off due to heavy snowfalls. And then next to him, just that PSO next to IG, he told me he was. I also worked with him. So 2 persons among that crew, or total 4 persons was there, know me. And then we prepared
pakoda, then all type of pakoda, many dishes, kala jamun, then all type of sweet dishes. The time allotted was only 15 minutes, and the total visitors, all visitors, they happily spent in our location for 1 hour 35 minutes. So food is also a source of inspiration. During there, a lot of discussion also going on at that place. That was also a plus point that they could stay our post and spend a valuable time with us. So it is sometimes we also innovative way we prepare many type of dishes, and where foods are simple person or normal person or not, those who are not in uniform service, they could not imagine. So that was that is our diversity. I feel, Supriya sir, it is your perception that you take it with so good spirit and enjoy with everybody. So that is very important when you're eating, even in an extreme conditions. Enjoying food and relishing is very important. Even if you're eating pakoras or anything or healthy food, it's important that you eat it with full happiness and smile on your face. That's perfect, sir. मैम मैं इससे भी ये जो टेस्ट है इनसे भी अलग कोई चीज बताना चाह रहा हूँ जी। ये 2013 की बात है, बांदीपुर की जी। हाई एल्टीट्यूड पे एक पोस्ट पे 7 जवान थे, उनमें से एक की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बर्फ पड़ा हुआ है, जनवरी फरवरी का महीना है और उसको नीचे पहाड़ी से उतार नहीं सकते। डीआईजी थे बांदीपुर के मिस्टर भाटी, उनके पास जो है पंथा चौक श्रीनगर का भी चार्ज था। मैं वहाँ ट्वाइस ऑफ था पंथा चौक में, तो हेप्टर गया उनको डेड बॉडी को लेने के लिए। डेड बॉडी ने अभी वो जिंदा ही है एक किस्म से, लेकिन मर चुका है। जब तक डॉक्टर उसको डिक्लेयर ना कर दे भाई इसकी डेथ हो चुकी है, जब तक उसको जिंदा ही माना जाएगा। लेकिन जवानों ने बोला ये मर चुका है। उसके डॉक्टर ने सेट के द्वारा बताया कि इसके पाँव बांध दो, हाथ बांध दो ताकि बॉडी ना फैले, और बर्फ में चारपाई के नीचे रख के रखा। एक दिन जवानों ने खाना नहीं खाया, दूसरे दिन थोड़ा सा खाना पड़ा, किसी ने समझाया खाना तो खाना पड़ेगा। तीसरे दिन फिर हफ्ता गया एयरफोर्स का, वेदर की वजह से जो है आफ्टर लैंड नहीं हो पाया, फिर वापस आ गया। इधर डीआईजी साहब परेशान, आईजी मिस्टर पीएस संधू आईपीएस थे, वो भी परेशान, सब परेशान, क्योंकि वो बेचारा डेड बॉडी कह लो या एक जवान नीचे नहीं आ पा रहा। तो इस दौरान में उन जो जवान थे उनका खाना में ना तो कोई टेस्ट है, सिर्फ जीने के लिए आप ये सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई ये टेस्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। उस पोजीशन में सिर्फ उन्होंने पेट भरने के लिए खाना खाया और 6 दिन के बाद वो जवान नीचे आया। नेचुरली वो मरा हुआ था, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। जब उनको घर वालों को फोन किया, उससे पहले बोलते रहे बीमार हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि वो डेथ हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में जो सब चीजें लिखी हुई हैं भाई ये भूख लगने पे खाना चाहिए, भूख लगता है तो इतनी एनर्जी आएगी, दूसरी रोटी खाओगे तो कम एनर्जी आएगी, तो ये सब इस समय जो है सब फेल हो जाता है जी, सिर्फ पेट भर के खाना पड़ता है। बिल्कुल, तो एक ये भी पहलू है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing, because you can better understand your situation में, when somebody is declared diseased or anything, it is very difficult to even eat food, जैसे आप कह रहे हैं बस जीने के लिए खाना है, which is very understood, sir, as from a commandant perspective. Absolutely right. There is another dimension, ma'am. New locations expose us to new cuisines, new recipes, new food, new fruits, everything. So in that term, from that angle, that is very refreshing for us. कि जहाँ हम नई जगह जाते हैं वहाँ के हम कुजीन से वहाँ इंट्रोड्यूस्ड होते हैं और हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमें देश के डिफरेंट लोकेशंस में हमें जो है पोस्टिंग ट्रांसफर हमारा होते रहता है, इवन पूरी बटालियन जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फूड कल्चर से वाकिफ होने का।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको सारी cuisines जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, the battalion goes along, so you try you have so many exposure to eat a lot of different cuisines. Yes, even if the battalion doesn't go, even if the individual posting comes, Right. so in that way also he is exposed to new cuisines. बिल्कुल सर, absolutely right sir. So that is something which we have shared an experience of eating mindfully, and when you are at such a position where you can't even think of eating mindfully, जैसे sir ने share किया, you are just eating for the sake, which happens, as I can understand from a perspective. So that is absolutely right. Now there are certain kinds of helpful attitudes also to practice mindfulness. अब हम बोलते हैं that mindfulness can be practiced by healthy eating and all that, but there are certain kinds of attitudes that we need to engrave and imbibe in our personality. हम जब इन attitudes को अपने साथ practice करना शुरू कर देंगे, it is also step 1 to practicing mindfulness. जैसे मैंने बोला, letting go of expectations, right? When we keep on heading on to the things that we keep into ourselves and not let it go, that is also not a mindful attitude. Then relaxing effort, because I understand that your job requires a lot of physical effort, a lot of this thing that you have to handle the battalion and everything, but you need to take out time for yourself and do things that actually make you relaxing, whether it's listening to music or whether it's doing anything. You have to take that relaxing effort for yourself, not for anybody, but for your mind and for your body. वो बहुत जरूरी है, बहुत. तीसरी बात, taking time. I can understand that you have such a difficult job to handle at the borders and leading it every way, but you need to take out time for your own self. आप अपने पूरे दिन में एक समय बांध लीजिए, या अपने शेड्यूल के हिसाब से you start taking that ये time मैं अपने लिए निकालूंगा, this is me time, nobody else, right? I understand there are certain unprecedented moments, आपको नहीं पता होता, you cannot manage the time, but start taking out for yourself. Then practice accepting what arises. Who can understand better than a commandant that we have to accept what arises, because you are at the borders and you're handling everything. So accepting what arises is important for us. Self-compassion. अगर हम अपने लिए compassionate नहीं होंगे, that we have to do it this thing for us. We have to practice meditation for at least 15 minutes. Then nothing can happen to, nobody can do anything for us. So अपने लिए self compassion दिखाना बहुत जरूरी है. Then just noticing. अब noticing से क्या मतलब है मेरा? It basically means that you need to take out time to notice the natural beauty. जैसे आप इतने different experiences देखते हो, इतने different location पे posted होते हो. So start taking out time to notice the natural beauty around you also. It is also one helpful attitude to practice mindfulness. Now I'll do this body scan with all of you. We'll do at the end of the session. Body scan में हम ये करेंगे that actually how can we meditate sitting in our chair also. Now I'll tell you certain benefits of it. When you are sitting and meditating, which we will do in next 10-15 minutes, I'll practice with you. It helps us to improve the concentration levels. हम ज्यादा concentrate कर सकते हैं अपनी surroundings में और अपने खुद के ऊपर. If we'll do this meditation every day, आप 10 मिनट के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. It helps to cultivate awareness. हमें पता चलता है that what are certain things. आपने कभी ऐसा feel करा है that inside you there is a lot of turmoil going inside you. आपको बहुत कुछ चीज परेशान करी जा रही है continuously, पर आपको समझ में नहीं आ रहा that what is the root cause of it. Anytime it happened to you, कुछ अंदर बॉदर कर रहा है, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका रूट कॉज क्या है या वो क्यों चीज बॉदर कर रही है. एनी टाइम इट हैपन टू यू, आपको या आपके किसी बटालियन में किसी को या आपकी फैमिली में आपको किसी ने शेयर किया हो आपसे ऐसा? एनीबडी? और इट डजंट हैपन? ओके, सो आई एम टेकिंग दिस साइलेंस एज ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है, विच इज वेरी गुड. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप से अवेयर हैं. You are introspecting inside you and you're aware of your emotions. आपको पता है that what is the reason behind this kind of thought. Which नहीं मैडम, ऐसा होता है कभी कभी. जी महेंद्र सर. जैसे एक बार मैंने क्रिकेट खेला जी, क्रिकेट खेल लिया, कुछ नहीं, फिर 1-2 दिन के बाद जो है ना मुझे इतना दर्द हुआ
जी ये बैक में, तो बड़ी परेशानी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था हुआ क्या है। मैं फिर कई बार उसको फिर रिकॉल किया, तब मैं पहुंचा माइनस करते करते कि अच्छा ये इसकी वजह से हुआ है। तो महेंद्र सर, आपने कैसे, व्हाट वाज द प्रोसेस दैट यू फॉलोड टू रिकवर टू तो फिर वही आपने जो बोला ना कि रेस्ट करते करते आप जब थॉट प्रोसेस में जाते हैं, माइनस करते 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 करते, तब फिर पहुंचा मैं वहां की ये इसकी वजह से है। सर आप ओवर थिंक तो नहीं करने लगे उस प्रोसेस में? कई बार ना हम एक जगह से दूसरी जगह एकदम जंप कर जाते हैं, एक थॉट से नहीं, दूसरी थॉट में। मैं ओवर थिंक नहीं करता, मैं अपने अपने लिमिट में रहता हूँ। वेरी गुड सर। और जो प्लान है या जो थिंकिंग है, हम उसी पर ज्यादा वो रहते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक जैसे यू। महेंद्र सर ने शेयर किया, थैंक यू सो मच सर, that you know when you started introspecting, it helps you to heal more, right? It helps you to find out the reason, that what is the reason behind this problem, and it will only happen when you scan your thoughts, when you scan your body, right? Now it also helps you to understand that how stress affects your body. कई बार हम बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं घर की बात को लेके, या हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, या हमारे बटालियन में कुछ हो गया, तो हमें उस चीज से भी बहुत अच्छा, you know, it gives a good channel to understand that why are we stressed. So आप सिर्फ थोड़े टाइम तक आराम से बैठ के रिलैक्स मोड में अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, it also helps you to reduce your levels of stress. It actually happens that you feel a little relaxed, you feel less stressful. Then it helps a greater capacity to listen to your wisdom. We all have a certain amounts of wisdom, right? पर हमें ऐसा लगता है कि हम उस समय situational wisdom use नहीं कर पाते हैं. But when we start practicing meditation and mindfulness, we create more wisdom and more capacity to understand. So body scan is very, very, very important. We'll do it here and now. Okay, so पहले हम body scan कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये concepts लेते हैं, because I want you to practice it. हाँ यही है. Okay, so I want all of you to sit straight. Your back should be straight. You can sit on your chair, you know, or you want to, I would suggest you to sit, not stand, because आप relax नहीं कर पाओगे, तो आप आराम से बैठ जाइए अपनी chair पे, या relax position में जैसे आपको ठीक लगे. Okay, so now keep your hands on the armrest or your thighs to relax your arms. तो अपने हाथों को नीचे रखिए. Now rub both your palms. Rub your palms, make them warm. Press it up to your eyes and close your eyes. Now close your eyes, put your hands back to your armrest or your thighs, and inhale from your nose. Take a deep breath and exhale from your mouth. Once again, inhale from your nose and exhale from your mouth. Now focus on your forehead. Bring all your attention to your forehead. Think of all the pain, all the tensions in your forehead. Squeeze the muscles of your forehead. अपनी forehead muscles को squeeze कीजिए. Hold it for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Once again, breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Now from the forehead, think about all the pain, all the tensions going down to your cheek muscles. Feel the flow of the tensions going down from your forehead to the cheek muscles.
Stretch your cheek muscles like we do while we brush our teeth. E. Hold it for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in from your nose. Take a deep breath. Breathe out from your mouth. Once again, breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Now from your cheek muscles, think all the pain, all the tension going down to your shoulders. Feel the tension going down to your shoulder muscles. Now bring your shoulders to your ear level and hold it for 5 seconds like this. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Once again, breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Now from your shoulders, think all the pains, all the tensions going down to your stomach muscles. Feel the pain going down to your stomach. Squeeze your stomach inside for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Once again, take a deep breath. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Now from your stomach muscles, feel all the pain, all the tensions going down to your arms. Feel the pain and the tension in your fist and in your arms. Make a fist. Clench your fist. Hold it for 5 seconds. Feel all the pain, all the tensions in your fist. Now slowly release your fist and breathe in from your nose, breathe out from your mouth. Take a deep breath once again. Breathe in from your nose, breathe out from your mouth. Now from your wrist, feel all the pain, all the tension going down to your thigh muscles. Feel the flow of the pain going to your thigh muscles. Stretch your thigh muscles. Hold it for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Once again, breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Relax. Your body feels very, very relaxed. Now from your thigh muscles, feel all the pain, all the tensions going down to your feet. Feel the pain going down to your foot. Squeeze the fingers of your feet. Hold it for 5 seconds. 5, 4. Once again, breathe in from your nose. Breathe out from your mouth.
relax. Your body feels very, very light and relaxed. There's no pain, no tension. Just relax. Now, slowly again, make your hands warm, press your hands, rub it, then put it to your eyes and press it against your eyes and slowly open your eyes. How do you feel? Pramod sir, you want to say something? Your hand is raised. बहुत रिलैक्स कर दिया मैम आपने। हाँ, मुझे तो नींद भी आने लगी थी। अच्छी बात है ना सर, रिलैक्स होके आप आराम से सो सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। आपने रिलैक्स कर दिया। सर आप रोज ऐसे कीजिए कि आप प्रॉमिस कीजिए आज के सेशन में कि आप रोज अपने लिए समय निकाल के ये एक्टिविटी ऑफिस में कर लिया करेंगे। ऑफिस में आपने अच्छा बता दिया। जी सर, थैंक यू। ये तो मतलब जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो कितना गैप होना चाहिए उसमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए? कम से कम आधे घंटे का। कम से कम जी, बिकॉज खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, फिर आपको रिलैक्स हो जाए। और कोशिश कीजिए इसको या तो सुबह उठ के कीजिए या रात को सोते समय, सोने से पहले मतलब। ठीक है। so that your body is relaxed and you sleep like a baby. आराम से मतलब नीचे बैठ करके किया जा सकता है। जी जी सर, आप चौकड़ी मार के कर सकते हैं, अपनी सीट पे बैठ के कर सकते हैं, कैसे भी। लड़की आसन में नहीं कर सकते हैं इसको? इसमें सर आसन में किया जाए इसको? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, लेट के भी आराम से कर सकते हैं। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू प्रमोद। Anybody else, how did you feel during the scan? जब आपने पूरा किया, जब आप कोई फील कर पा रहा था अपने थॉट्स को, अपनी पेन टेंशन्स को नीचे जाते हुए? Were you able to feel them going down? It was a very soothing effect on the entire mind and body, very calming effect, and it felt very, very nice, pleasant, good. Thank you, sir. All of us should start practicing this body scan on daily basis. आपको इतना relax feel होगा, you actually feel more energetic also. Anyone else would like to give their deliberations on how did they feel? मैम जो आप सिखा रहे थे, हम तो अब अपने प्रभु को याद करने लगे उसमें। बहुत अच्छी बात है सर, हमने प्रभु को याद किया, तो कभी तो याद करा हमने। मैडम हमारा प्रभु इसी में ही कर रहे हैं, अंतर्जामी जी नाम है उनका, तो हमारे लिए वही प्रभु है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रभु तो खुद ही उस काम में लीन थे। जब भी हमें मौका मिले, चाहे हम जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में एक्चुअली बहुत या तो रिलैक्सिंग फीलिंग होती है, इधर वी गो इनटू अ स्पिरिचुअल जोन। जैसे सर ने कहा ना, हम प्रभु को याद कर रहे थे, एक्चुअली इट हैपेंस, a visualization happens in our mind, it usually happens. इसका मतलब है सर बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर रहे थे। शाबाश सर, बढ़िया। This is not like some yogasan. Yes sir, you have something to say? Is it not like some yogasan? Sorry sir? It is not like some yogasan. It is not like yogasan, you're saying? Yeah. Yes sir. Basically it is something which is going to relax your mind muscles and your body both, and you can do it anytime in the day or you can do it anywhere. It's actually a yogic asana kind of a thing which scans your whole body, so purifies your soul basically. It is like that. So okay, anybody else would like to say anything? Okay, we did the body scan. Pramod sir, you have something to say, or you can just if you can unraise your hand if you want to. Dr. Nikita? Yes. Sorry, ma'am, to interject. Okay, I think we can have a short 10-minute break, tea break, Yeah, for you sure, and for sure. our commandants.
बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. And then we can resume. Sure, Again, sure. then I think Commandants, sirs, we will resume back at 4:45. Ma'am, that's okay? Yeah, Yeah, absolutely sure. fine. Okay. So we resume back at 4:45. Thank you. Thanks. He is ये सर क्या बात है? coordinator. He is Can we resume the session? Yeah, sure. Yeah. Thank you. Okay. Yes, so we are back. We are back with the after body scan and after discussing about it. So now I want to discuss a very important topic and bring your attention back to the session about mindfulness triangle. So now we have to first we understood what is mindfulness, then we understood that why practicing mindfulness is important, what are the mindful attitudes that we can develop in our own self. Then we did a body scan. Now it is very important to understand the mindfulness triangle. That means there are three faculties in mindfulness, which is intention, attention, and reflection. Now, when I say about the faculties, how do I define about the mindfulness faculty, right? So basically, mindfulness faculty is simply a mental faculty. That means a normal power or function, right? A normal function of the mind and the ability to perceive and distinguish between sensory stimuli. So now it is very important to understand कि mindfulness को हम कैसे practice कर सकते हैं to function in a better way. So सबसे पहले is the fact of attention. Attention का मतलब क्या है? Nobody can understand better attention than our commandants, obviously, but simply attention is defined as noticing in psychology. That means आप सिर्फ notice कर रहे हैं या फिर आप interest दिखा रहे हैं या फिर आप aware हैं. That means you're attentive, you're listening or you're watching something. So if you want to practice mindfulness, पहली important चीज है attention. That means to notice things around you. Not because of the fact कि हम चीजों को अपने आसपास नोटिस करेंगे ताकि हम उससे अवेयर हों, बल्कि उस चीज को फील कर पाए. एंड हाउ टू प्रैक्टिस इन अ डे टू डे एक्टिविटीज इज इम्पोर्टेंट. सो अटेंशन मतलब नोटिस करना और ब्रिंग टू आवर मेन अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस. फर्स्ट इज अटेंशन. सेकेंड इज इंटेंशन. इंटेंशन मतलब what is the aim or the purpose that we are directed towards doing an activity. If we are practicing mindfulness, or if we are eating our food, or if we are working, or if we are talking, whatever activity we are doing, what is the purpose or the aim behind that activity? It is very much important to understand that why are we doing that, what is our intention, right? वो समझना बहुत जरूरी है to practice mindfulness. तीसरी चीज is reflection. जैसे कि हम बॉडी स्कैन में क्या कर रहे थे, वी वर रिफ्लेक्टिंग आवर ओन सेल्फ, राइट? वी वर गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इनसाइड अस. अपना फ्लो देख रहे थे when it is going from our forehead, going through the cheeks, going through the shoulders. So we were reflecting ourselves. So जितना ज्यादा हम mindfulness practice करेंगे, actually we'll get reflection of our own mind, of our own thoughts, right? That majorly occurs during meditation time. मेडिटेशन के दौरान ही आप ये समझ पाते हैं अपने अंदर को रिफ्लेक्ट करना, अपने अंदर की पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस को बाहर लेके आना, राइट? सो दीज मेडिटेशन. ऑल राइट. सो फाइन. बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है मैम. सर, आर यू एबल टू हियर मी? टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है. माइट बी बिकॉज ऑफ द वेदर सर. यहाँ पे ना नोएडा में काफी बारिश हुई है. नहीं, यहाँ माइट बी. हो रहा है. जी माइट बी. अब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, लेकिन बीच में कट जाती है, बीच में एकदम से जो है. I'm really sorry, Pramod sir. Sorry for that interruption, but we can't help on that network. So okay, coming back to the point. अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि माइंडफुलनेस बीएसएफ में कमांडेंट को कैसे हेल्प कर सकता है. So mindfulness training, the practice of training your brain, not your muscles, is staying in the present moment, right?
It offers many benefits. That means it helps to relax your blood pressure levels. It helps to better sleep. जैसे सर ने कहा कि हमें बॉडी स्कैन करते करते नींद ही आ गई थी, तो आपकी स्लीप भी बेटर हो सकती है. Then you become more focused and more alert, and you can tune in your body to perform better and improve your relationships also with your friends, with your family, with your children. That actually helps to increase your mood and make your relationships better. In military environment, mindfulness training can enhance your ability to perform at your best in garrison, during training, and in theater as well. It also helps to reduce pain and stress related post-deployment and post-traumatic stress disorder and improve your impulse control. Mindfulness not only helps in reducing your pain, suppose as sir was sharing his experience of playing cricket, his body was paining, then he introspected and got to the fact that why is it paining, right? Not only it reduces pain reduces pain in your body, but also helps in post-deployment and PTSD also, and your impulse control as well. And most important, you can teach the battalion also and your peers also about it. So, जैसे हमने डिस्कस किया, हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाते हैं. Then another thing is mindfulness can also tactfully dealt in during training time. In training time, mindfulness helps the war fighters stay safe for new skills and tactics, and also manages your mind and body through anxiety during various weapon. Fire a weapon accurately and consistently. It also helps you during that. Then mindfulness also helps in theater. That means your situational awareness is enhanced by mindfulness in a combat environment too. बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि 8 घंटे और 8 हफ्ते में, हमारी फोकस इंप्रूव करता है मिलिट्री सर्विस में, और हमारे कम लैप्सेस होते हैं हमारी परफॉर्मेंस में इफ आवर माइंड इज नॉट वॉन्डरिंग. अगर हमारा दिमाग इधर उधर भाग रहा है, then we are try to have more problems, we try to have more issues, right? So it helps in that as well. Then mindfulness helps during garrison time also, because if you try to do tactful breathing, then you do muscle relaxation, it helps to cope up with difficult emotions. Agar aap if you are going through a difficult emotional time with your family, with your friends, with your leader, with your boss, if you practice mindfulness, it helps you during that time also, which I'm sure कि कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हम बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं इमोशनली, राइट? चाहे हम कितने भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, but it is difficult for us to cope up at times. Like, can any one of you share your personal experiences about the fact that you were going through an emotional turmoil, and how did you came out of it all by yourself? किसी भी सेंस में, personally or professionally, anyways. Anyone would like to share any of their experiences where it was? Madam, if you allow, just I wanted to narrate one incident. It is when I was posted in high altitude, and it was the in the month of February, and somewhere in 2006. So what had happened in the daytime, we are wearing all those type of protective gears like goggles and other things, and after patrolling at outside, just we enter in our officer mess. And while after entering our officer mess, at that time, just I was seen one Bukhari, but I generally Bukhari is a thing which either by coal or by kerosene it operates, and it is used for heating the room only. So I when it is hot, it shows seen red hot. So, but however, I was put on goggles, but I could not see that redness on the Bukhari, and no one was available at the time to speak about it is hot or not hot. And intentionally, unintentionally, or it is I just first put on my hand palm on the Bukhari. I was wearing one gloves. Then I thought that due to gloves I could not sense any heat. Then I just removed my gloves
and put on my just palm on that Bukhari, and that just cover of Bukhari, and that got stick to my palm, and it was then I realized that it is not too hot, it is very, very hot. And there was all of a sudden I sensed that is a very dangerous thing, something very critical thing happened. Just beside Bukhari, there was one window was there, and just after opening the window, I put on my arm outside the window where fresh snowfall was there. So I put on, kept my arms for half an hour, and I used my power of mind. At that time, I was doing yoga, asana, and all those meditations on those days, because that was the only instrument by which one is to pass his time. And then for next half an hour, slowly and slowly and slowly and slowly, I just all pain vanishes. That was miracle happened in my life. And then I removed my palm from that snow, and then I found that not a single burn injury I could visible. That was really in my life. It was really a miracle for me. At least I can say. That's I can just share this with the audience. Yes, sir, it's very, it's such a, actually it's a miracle in on itself that, you were not able to feel that pain after that. So it is something which is great, you were able to cope up with that thing, through this meditation and yogic practices only. That is wonderful, sir. But I can completely understand that staying in so different terrains and climate actually is very difficult to cope up also. It leads to a lot of issues. Thank you so much, Supriya sir, for sharing your experience. Anyone else would like to share their experience about the fact of the extreme temperature they were posted, and they, had some difficult times and during that period of communication or personal self, and how did you cope up with that? Every one of us, rather even the troops, in their lifetime, many a times we have faced such situations. Right, sir. From extreme cold to extreme hot, or vice versa. Right. And everybody has gone through those stages. And these are lifetime experiences, which at times are to be cherished also. Right, sir. I understand that, because in a commandant's life, it is very difficult to say कि ऐसा नहीं हुआ होगा कभी. Even troops के साथ भी, because the whole battalion moves. Right. Many a times, and annual change over. So everybody has gone through such stages. Sir, आप troop को, अपनी battalion को कैसे motivate करते हो? If somebody comes and shares their personal experience or some personal grievance with you. देखिए, जहाँ तक सवाल है मोटिवेशन का, बिना मोटिवेशन के कुछ होता नहीं. जी. और कमांडेंट का ट्रूप्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रहता ही है. Whenever there is any move, then during Sainik Sammelans, which is a formal interaction, right, the battalion is told about the challenges which are going to come there. And it is not a one-day affair. Move is given in advance and preparations are done. Likewise, and then pre-induction training sort of things are also imparted before inducting in a particular area. Virendra sir, you mentioned about Sainik Sammelan. How often does it happen? Every month. Okay. But that is formal. Okay. Formal is once in a month, but we interact with troops daily. That is required. Communication gap should not be there. And do you have any kind of activities also during that program? No, it is formal, as I said. Okay. Only tea after that with the troops. Tea, pakoda, which are trademarks of Fauj. Right. That's perfect, sir. Perfect to know about this thing. I never knew about this kind of program called Sainik Sammelan, जैसे आपने बताया. Great insight information. So that's wonderful. ये तो formal हो गया, sir. Informal भी कुछ होता है ऐसा? मैंने बताया ना, हम तो डेली बात करते ही हैं. बॉर्डर पे जब भी जाते हैं 10, देखिए, एक कमांडेंट, one commandant is supposed to have 10 night halts at border minimum.
At times we have even more than 15, 20 also in a month. Right. When we are on border, we do interact with troops when they are performing duties. That is more fruitful than formal. Right. Well, ma'am, I just explained one example of a daily routine exercise, Yes, Ashwini sir, please. which we do, which every one of us do as a, which we call the zero parade. Okay. So any person who is going on leave and coming from leave, interviewed by commandant personally if he is there. Okay. Every one of us do that. And that is, and how you do it, that is very important. That 1 minute of time or 1 to 2 minutes of time, when we used to ask the question from that person, that is a personal time with commandant and that person. Sometimes it remains very formal, but it is the way you conduct that. Right. Actually, your triangle, we are using that triangle. The first and important thing is that when you are talking to some person, you pay full attention to him. There are very robotic kind of interviews also, in which a format is there. He has to say, सर मेरा नाम फलाना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतने दिन की छुट्टी जा रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मेरी ये आपने सुना और सुनने के बाद आप दूसरे के पास चले गए. That is very formal. But there are individual styles also. When you say अच्छा छुट्टी किस लिए जा रहा है, you just ask. It's in just example. You ask him कि छुट्टी किस लिए जा रहा है, कि साहब मेरी मदर की तबीयत खराब है. जी. आपने उससे पूछ लिया कि तेरी मदर को क्या हो गया है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 30 सेकंड्स ओनली. वो बोलते हैं साहब मेरी मदर को पेट में दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और पथरी बताई. नाउ थर्ड क्वेश्चन यू आस्क, अच्छा वो पथरी का साइज क्या है ये बताना जरा सर. यू अंडरस्टैंड दैट? राइट. थर्ड क्वेश्चन है पथरी का साइज बताना क्या है. अगर उसने रिपोर्ट पढ़ी होगी, अटेंटिव होगा, तो पथरी का साइज बताएगा. बिल्कुल. एंड फोर्थ क्वेश्चन, the buck doesn't stop here. The fourth question is, अच्छा डॉक्टर से बात करी, कौन से मेथड से वो ऑपरेशन करेगा, एंडोस्कोपिक से करेगा या वैसे करेगा. सर वो अभी डिसाइड करना है सर. अच्छा डॉक्टर कौन है, कहाँ पे करा रहा है. एंड द सेम पर्सन व्हेन फॉल्स बैक फ्रॉम द लीव, आप उससे पूछते हैं कि अच्छा कैसे ऑपरेशन कराया, बताए कैसी तबीयत है, ठीक है, उम्र कितनी है. ये पर्सनल क्वेश्चंस जब आप उससे पूछते हो ना, तो वो एक स्टीरियोटाइप से निकल के, और जो 2 मिनट का टाइम होता है उसको लगता है अरे साहब ने जो मेरे को छुट्टी भेजा था तब पूछा था कि मदर की तबीयत खराब है, और जब वापस आए हूँ तो मदर की तबीयत वापस पूछ रहे हैं. He remembers that, and हमें शायद नहीं लगता है कि वो हम क्या कर रहे हैं, but he remembers that because he belongs to those 1,200 person. One from that 1,200 person, he also understands how much CEO is busy. And mindful thinking and mindful process, जब आप इतनी सारी चीजों से अवेयर होते हो ना, तब आप उससे उस तरीके का क्वेश्चन पूछो, अरे सर को ये भी पता है. That is one of the example of informal interviews we do daily, and that builds the trust. Ashwini sir, it is a process which everyone follows, or specific battalion follows that? Everyone follows. All of us who are sitting over here, we all follows that. That's something which is very great to know. You know, you get to establish a personal bond also, and that stereotypical thought process gets broken up. Ours is a very structured way of functioning, and it is imbibed in our culture. Right. So everyone, not even a leave going or leave incoming, even anyone going on temporary duty, anyone going out of battalion or coming in, is interviewed. That's an organization culture. It's something which, right. That's how we build rapport with the troops. Some of the interaction we carry out, like what Ashwini has just said, ki it's a zero parade. Zero means zero, Z-E-R-O, zero parade. That means it is not counted. He has just come and his duty will start once this parade is over. Now at times, like he is asking, he asks personal questions. But at times it happens that he is not willing to speak something in front of others also, because everybody is standing on line.
Right. So Right. generally we say that anybody who wants to speak to me personally in my room, in my office, he can come alone. If he wants, he cannot disclose anybody's name. He has complained against somebody. His personal grievances are there. So he comes up, sit before me or stands, and then he narrates the story, whatever problem he is facing. Then we try to sort his problems out. It may be his domestic problem related to family, some issues related to his back home, some disturbances with his neighbors. So such things are looked after in this period only. Then second interaction, while we are going into border, we keep on moving from one place to another where he's performing his duties. Now we have a first-hand experience of what kind of duty he is doing, what problem he is facing, what challenges are there. We speak to him on ground itself, so that whatever he is saying, we relate with it and we can sort out any problem if he is having. Then when we night halt, we stay there for night. So during evening time, whenever somebody is playing, we just enter there. Basically, everywhere two games are being played. One is volleyball and badminton. Okay. So we take part in those activities also. So there he interact with us. He will make us, even if we are not a good player, but the moment we make a good service or good smash, they will all clap. They will enjoy that Susa has done very well. Wonderful. So these kind of interactions makes a very, very strong bonding between troops and the commandants or the officers who are visiting. So we have got ways and means over a period of time they have developed, and it's a routine for us. But number of things come out from this routine. Right. I feel Rotela sir. Yes, Ashwini sir, please go ahead. I just touched the one corner of your triangle. The reflections are very important. Right. Importance of that zero period is, say somebody has came up newly married. नई शादी करी और वापस आ गया. वापस आने के बाद आपको पता लगा कि तूने शादी कब की थी, छुट्टी कब गया था. साहब शादी से 15 दिन पहले छुट्टी गया था, उसके बाद शादी करी और अबे तुझे बीवी के साथ कितना टाइम मिला? हिसाब से 5 दिन ही मिल पाए. दोबारा छुट्टी जाना है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा. ओके, 15 दिन की सीएल भेजो इसको यहीं से. That's the immediate reflection which connects you immediately there. Right. ठीक है. किसी की माँ की तबीयत खराब, उसको टाइम नहीं मिला पूरा. ठीक है, उसने रिपोर्ट कर दिया वापस. And by your personal interaction, you come to know that he required more time to be at home. And on the spot, leave is sanctioned by the CO, and he will go immediately. Right. So these kind of reflections are there. If there is a problem, find out during that process of interview. The commandant can give, a commandant are used to give the immediate decisions over there. That's how the reflection completes. Okay. I feel, sir, at certain point of time, you are opening those channels of communication with them. You're building that rapport with them. Actually, that happens in a very, in a very organized way in your organization, I believe. Exactly, ma'am. And more importantly, that actually it makes the commandant, the whole battalion, the troops to be very mindful also. Because if you have no baggage in your head, you're all free and you've all shared, then you will be more mindfully doing your job, मैम मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा. जी सर. सभी कमांडेंट तो जानते ही हैं. जी. हमारे यहाँ एक फ्राइडे को ओपन डे इंटरव्यू होता है. फ्राइडे को किसी भी जवान की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये सभी जवान इस बात को जानते भी हैं. फ्राइडे को ओपन डे इंटरव्यू है. जिसकी भी किसी तरह की कोई समस्या है, वो अपनी समस्या आके बिना रुकावट के डायरेक्ट कमांडेंट से मिल सकता है. यानी कि हम जो बैठे हैं सभी कमांडेंट से मिल सकता है. नंबर 2, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, उसका प्रॉब्लम रजिस्टर में लिखा जाता है. लिखने के बाद उस पे एक्शन लिया जाता है. यानी कि हमने क्या कार्रवाई की, ऑफिस वालों ने क्या कार्रवाई की. उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो एक्शन लेने के बाद उसका फीडबैक उस जवान को बताया जाता है. मान लो कि उसकी फैमिली की प्रॉब्लम है, उसने क्वार्टर लेना है, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर की है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, हम उसका फीडबैक उस जवान को अगर हमारे पास है यहाँ हेडक्वार्टर में हम बता देते हैं.
नहीं तो कंपनी को बताते हैं। ये फीडबैक यानी कि ये हम इतनी हार्ड ड्यूटी करवा रहे हैं तो उसकी अगर थोड़ी सी भी समस्या है तो हम ये उसका फीडबैक जोड़ देते हैं उस जवान को, भाई आपकी ये प्रॉब्लम थी, उस पर ये कार्रवाई हुई है और इसका एक्शन ये हुआ। ये एक ओपन डे इंटरव्यू सभी कमांडेंट करते हैं। कमांडेंट सर तो जानते ही हैं सारे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि हम जवानों के लिए वेलफेयर के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। Wonderful, Gyansham. बहुत ही मतलब it is something which is really enlightening for us as civilian also. It's great. मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Please, Sanjay sir, please go अभी ahead. ये जैसे घनश्याम बता दिया, ये सब सारे टूल्स ऑफ बेसिकली हम जो मनोबल उसका जवानों को बढ़ाने के लिए है। जी। आप सपोज कीजिए कि आपको जो मूवी अच्छी लगती है, अगर आपको दिखाया जाए, एक दिन दिखाया जाए, आप कितने दिन तक लगातार देख पाएंगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वही मूवी। हमारे जवान सेम मूवी 3 महीने तक देखते हैं। आपको ये कहने का मतलब ये है कि जैसे उनको पता है कि अभी 6 घंटे की रात में ड्यूटी आनी है, 6 घंटे की दिन में ड्यूटी आनी है, तो एक तरह से मूवी ही चल रहा है उसके सामने। यही मूवी वो 2-3 महीने तक लगातार देखता है, तब छुट्टी जाता है हमें। तो ये मोटिवेशन जो हम करते हैं तभी हम ड्यूटी ले पाते हैं उससे। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। It keeps on going and you keep on, pushing it. So it's very great, sir. It's a great organization culture to understand. Wonderful. Thank you all of you for giving your This inputs. does not come when we become commandants. The day we joined service, we took command of company, and as a company commander, we lived with the troops there only in the field. We ate in the same mess where they were eating. We also performed the same duties which they were performing. Virendra sir, has it changed during the time now and earlier times? No, it cannot change. The responsibility of company commander or commandant will remain the same. Right. Because when task has not changed, how can this change? Absolutely right. It comes with the job. Correct. Now the responsibility more of the commandant shoulders. Yes, exactly. And the way of command and redressal system has very much strong because of the special attention of the commandants toward the troops as per direction of the higher headquarters or the government, and it's the responsibility of himself. So responsibility is more rather than earlier days. Right. That's what I was asking to sir. And openness of the command, transparency system, and so that the troops can meet with commandant at any place. That is some little bit improvement in the system. It is not because of just, it is because commandant is open for also many more problems. He can kill on the spot. Shoot out the problems. Right. Shooting the problems easy for commandant. That is the thing. Absolutely right, Minda sir. Thank you for sharing those inputs. So anyone else also has to share something with us? No, we can do it. बेसिकली कमांडेंट जो है ये कैसे ज्वाइंट फैमिली का मुखिया है जो केवल 1200 लोगों को ही कमांड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में 1200 फैमिलीज उसके साथ जुड़े हैं। और कोई भी समस्या अगर आ रही है या आएगी तो जवान या जो भी उस ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हैं वो एक ही तरफ देखते हैं, वो है कमांडेंट, और उसको रिस्पॉन्ड करना ही होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल. That's wonderful. It's a great modeling experience that you are doing something which is observational learning also. They learn from you because you're also doing those activities and duties. Yes, Narendra sir, you have something to say? मैडम आपने कहा कि by profession you are a counselor. Yes sir. मैडम मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हमें जो बड़ा रेगुलर बेसिस पे आ रही है, जैसे जब हमने ज्वाइन किया था फोर्सेस में, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जो हमारे जवान ट्रूप्स रहते हैं, ड्यूटी करते थे, देयर चिल्ड्रन, देयर किड्स वर लुक आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबॉडी, इट वाज बीन लुक्ड आफ्टर, और उनके लिए ज्यादा इशू नहीं रहता था कि छुट्टी मिला नहीं मिला। जब गए तो दे यूज्ड टू एंजॉय
मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे गो बैक वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी करते थे और अपना मैनुअल वर्क भी करते थे और वो यहाँ पे भी एक अच्छा भला काम करते थे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि विद न्यूक्लियर दिस फैमिलीज और सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है हमारे पास में बहुत सारे केस आते हैं डिस्प्यूट के